building, then the petition. He knows कि भाई gist of the order is. अच्छा. Item number 10, with connected case, Sri Uttam Maheshwari, MS Ritika Chauhan. So there were three cases which I had filed before this honorable court arising with the same award of the honorable CGIT, current CGIT. One of the matters, perhaps the client had approached the honorable Supreme Court, and this is one of the cases has already been transferred to the honorable Supreme Court. This the award is common man. Like this, सर पर हम कैसे ट्रांसफर करते हैं? I have to bring to the knowledge first. Sir, you are 110% correct. सुनिए. It is an नहीं, it is an interstate transfer. अरे आपका निवेदन तो मैं मान चुका ना. Is in light of this, I pray for withdrawal of these the remaining two petitions with liberty. क्या? To approach the competent authority at Chhattisgarh. Because the award of CGIT was common. For single award with club, we had filed 3 petitions. ठीक है sir. So funded because it is a matter relating to Sarguja. So we had also filed in Their Sarguja. petition was already pending. It's already stated the award of the tribunal. So you have also approached the Supreme Court at Chhattisgarh. Matter pertains So against the same award, it is already pending. in Yes. Chhattisgarh. territorial area mines are situated at Sarguja. 5089 of the 2017 and 5394 of the 2017. This petition under Article 227 of Constitution of India has been filed against the award dated 6/10/2016 passed by CGIT/LC/R/169/190 1993 passed by CGIT Jabalpur. It is submitted by counsel for the petitioners that 3 cases were decided by the CGIT Jabalpur. One WP number 55138 of the 2017 was filed by Vice President National Colliery Workers Federation and others. Transfer petition S civil number 1955 of the 23 has been filed by the Federation before the Supreme Court for transfer of the writ petition to High Court of Chhattisgarh on the ground that the court Chhattisgarh and the further proceedings before this court in WP number 5138 of the 2017 have been stayed. However, it is submitted that admittedly Sarguja falls within the territorial jurisdiction. Sarguja is a part of state of Chhattisgarh, and therefore, prima facie, the CGIT Jabalpur did not have any jurisdiction to. CGIT has because it is common. अच्छा तो फिर क्यों आप? Therefore, it is submitted that although CGIT had Jabalpur had jurisdiction to decide to pass the award, but the petitioner may be permitted to withdraw this petition with liberty to approach the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur. With the aforesaid liberty, the petition is dismissed as withdrawn. Lovely. दोनों का सेपरेट ऑर्डर कर दीजिए. Shri Anup Nair with the MS Trivedi. Item number 11, Sri Ashish Agarwal, जी सर. जी. Lordship, this is with respect to the impugned order in which my writ petition against Vish Bharti was not Territorial accepted because of territorial jurisdiction. Lordship, I would like to submit in this regard that firstly, Vish Bharti is a central university. Sir, whatever it may be, Uh, my order may be erroneous. I am not saying that whether my order is correct or not. Lordship. But the scope of review is very limited. I cannot reopen my order under the garb of review. If you feel that my order is incorrect, you have other remedies. But I cannot exercise my power under Order 47.
You may continue to argue, otherwise, Lordship, I have already expressed my view. So Lordship. before starting your arguments on merits, please argue on the scope of Order 47. Lordship. No, Lordship, it was only on the grounds of jurisdiction, but not on the. Sir, please, you are in Lordship. review. You are in review. Lordship. What my personal perception is, I may be wrong. That's why I'm giving an opportunity to clarify that doubt. If you think that I am wrong, Lordship. that I cannot reopen my order on merits may be erroneous, but under the garb of review, I cannot reopen my entire order. Lordship. The scope of review is very limited. So first of all, please argue on the scope of review. No, Lordship. Then, sir, your remedy lies somewhere else. Lordship. Before the higher forum. Somewhere else means higher forum. Whether before the writ appellate court or before the Supreme Court. Lordship. जो भी होगा, Lordship. but at least I cannot reopen. Lordship. 726/2023, the applicant is present in person. This application under Order 47, Rule 1 CPC has been filed against the order dated 13th of June 2023, passed by this court in WP number 12267/2023, by which the petition filed by the petitioner has been dismissed on the ground of territorial jurisdiction. Full stop. While dismissing the petition, this court has held that the dispute arose in West Bengal, and this court does not have territorial jurisdiction to entertain the present petition. Full stop. If the petitioner is of a view that the order passed by this court is an erroneous order, then, even then, this court under the garb of Order 47, Rule 1 CPC cannot reopen its order on merits. And the petitioner has a remedy of assailing the order before higher forum. As no error apparent on face of record could be pointed out by the petitioner, accordingly, the application fails and is hereby dismissed. हमारा jurisdiction नहीं है आपके arguments को reconsider करने का. That is the difficult. Right. That is the difficult. Lordship. Thank you, sir. Item number 12, Sri Dr. Anwar Srivastav, Sri A.M. Sharma. Yes, sir. In this matter, the petitioner is duly appointed liquidator of the District Cooperative and Rural Development Banks of MP, my lord. He is challenging the authority of the Consumer Forum, District Consumer Forum, to entertain the disputes relating to the liquidated banks, my lord. The consumer forums have no jurisdiction to distribute the assets of the liquidated banks, my lord. The sole authority is given to the liquidator, my lord. The consumer forums, my lord, are passing awards like Annexure P3 in respect of the bank account holders for reimbursement of the amount of their FDs, my lord. We have challenged, my lord, by filing appeal, Annexure P4, raising particularly the jurisdiction of consumer forums to decide the disputes relating to the liquidated banks, my lord. जी सर. सर आपका जवाब आ गया? जी. सर कब फाइल किया जवाब आपका? देखो अच्छा हाँ है सॉरी है. जी सर. My lord. Then, my lord, without appreciating this ground of jurisdiction, my lord, the appeals are dismissed by order annexure P5. So, my lord, the sole point for determination is that, my lord, whether the consumer forums have jurisdiction to decide. एक वो कंज्यूमर फोरम एक्ट भी दे दीजिए ना, My lord. और कोऑपरेटिव एक्ट भी दे दो. So, my Sir. first submission is that, my lord, since the cooperative banks are liquidated, they are now, my lord, simple societies, they are not banks. Because section, my lord, 2O defines the services in which banking services are included. Section 2O. टू 2O. ओ ये है It ओ defines- तो जॉइंट रजिस्ट्रार है सर. My lord. 2O इज 2O of the consumer protection. Act, my lord. अच्छा एक सेकंड मुझे बता दो.
या कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्शन 69 देखें। सेक्शन 69 68। जी सर। This is winding up of societies. Under this provision, my lord, the banks are liquidated. Clause 1. The registrar, after an inquiry has been held under subsection 59 or on inspection has been made under section 60 or on receipt of application made by not less than 3/4 of the members of a society is of opinion that the society ought to be wound up, he may issue an order directing it to be wound up, my lord. 2. The registrar may of his own motion make an order determining the winding up of the society. And the clauses are there, my lord. Number 3, no order under subsection 1 or subsection 2 shall be passed unless the society concerned has been given a reasonable opportunity showing cause against the proposed order and representation, if any, made by it is considered. 4, the registrar may cancel an order for the winding up of the society at any time prior to the cancellation of its registration in any case where in the opinion of society would continue to exist. 5, notwithstanding anything contained in this section, no cooperative bank shall be wound up except with the previous sanction of writing of the Reserve Bank of India. So after completing, my lord, these all formalities, the cooperative banks, my lord, they have been liquidated, my lord. Now, my lord, kindly come to section 7. They are under liquidation or they have been liquidated? They have been liquidated, my lord. They have been liquidated. Liquidated. तो उसके फंड्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं क्या? They have to be distributed on pro rata basis, my lord, in proportion to the accounts of the holders, my lord. Now the problem is that, my lord, the consumer forum is directing reimbursement of the FD holders according to their, my lord, amount. That cannot be done, my lord, because the assets are to be distributed on pro rata basis, my lord. अब आप मुझे ये बताइए, My lord. whether the consanction of the Reserve Bank has been taken? Yes, my lord. Where is that? नहीं, ये हमने फाइल नहीं किया है। इसमें ये देख लें कि हमारा जो डॉक्यूमेंट, my lord, that is annexure. सर आप फाइल करो फिर। That is the minimum requirement. My lord, लेकिन इसमें कहीं डिस्प्यूट नहीं, my lord. सर होगा क्या नहीं होगा? I don't know, My lord. because as per section 69, My lord. the order of the registrar will not come into effect unless and until the sanction is given by the Reserve Bank. My lord. है ना? My lord. So grant, the moment I say that they are under liquidation or the bank is under liquidation, My lord. it presupposes that all the conditions of section 69 have been fulfilled. My lord. मुझे पहले उसका तो ऑर्डर करना पड़ेगा ना? हाँ, ये चाहे, my lord, तो 1 मिनट के लिए बस P1 देखिए। हाँ हाँ P1. It is at page 25. जी आदेश। हाँ हाँ मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत संस्था है, जिसका पंजीयन क्रमांक सो एंड सो है तथा जिसकी 38 जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकें सदस्य संस्थाएं हैं, जो पूर्ण रूप से अकार्यशील हो चुकी हैं। इस कार्यालय द्वारा बैंक को परिसीमन में लाए जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र सो एंड सो जारी किया जाकर सो एंड सो किया गया था। मीटिंग सो एंड सो किया। बैंक पर अधिरोपित आरोप निम्नानुसार है। इसके बाद इन्होंने आरोप बताए हुए हैं। नेक्स्ट पेज पर मैं। जी सर। पेज नंबर 17 में। जी सर। पैरा 12, राज्य बैंक द्वारा जिला बैंकों एवं अपनी शाखाओं के माध्यम से स्वयं की साख पर अवधि जमा के रूप में अमानतें प्राप्त की गई है। दिनांक 31/3/15 पर कुल निवेश जमा अमानत राशि ₹100 करोड़ के विरुद्ध राशि ₹100 करोड़ जिला बैंक द्वारा राज्य बैंक को पारसान किया गया है। अंतर की राशि ₹100 सावधि जमा जिला बैंकों द्वारा रोकी गई है, जो उनके द्वारा कुल जमा राशि की बता दो ना, रिजर्व बैंक की सैंक्शन बताओ ना आप, ये तो आप फैक्ट्स बता रहे हो। पेश कर देता हूँ मैं लॉर्ड, इसमें तो नहीं है। इसका अपॉइंटमेंट का है कि लिक्विडेशन हो गया लास्ट पैर। गलत हो गया ना फिर। हाँ, ठीक है। अगर सैंक्शन नहीं है, दैट इज द प्री कंडीशन। मैं पेश कर 10832/2020।
That's an application for deletion of the name of respondent number 3. Who is the respondent number 3? Union of India वाले. इसका क्या रोल है सर यूनियन ऑफ इंडिया का? इसके थे कि because my lord the consumer affairs are managed by the Department of Consumer Affairs. सर एक और प्रॉब्लम है, जिन लोगों के फेवर में ऑर्डर्स हुए उनको तो आपने पार्टी नहीं बनाया है। जिस ऑर्डर को चैलेंज उसमें my lord उसके लिए अल्टरनेट रेमेडी है। इसमें my lord ये जो है न्यूमरस है और ऑर्डर ऑलरेडी एक्सक्यूट हो सर चुके हैं। न्यूमरस में तो न्यूमरस पिटिशंस आएंगी, और मैं एक पिटिशन में आपने मल्टीपल ऑर्डर्स कैसे चैलेंज कर my दिए? lord हम उसको ऑर्डर्स को इस ग्राउंड पे चैलेंज कर रहे हैं that कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मैं कुछ, अरे भाई साहब मैं कुछ मना नहीं कर रहा हूँ। ठीक। सवाल इस बात का है कि जो ऑर्डर जिसके फेवर में है, ही शी दे हैव नॉट बीन मेड अ पार्टी। नहीं उनके फेवर में ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, वी आर चैलेंज। सो यू आर रेडी टू कंप्लाई दोस ऑर्डर्स, तो प्लीज डू इट। नहीं हम जो चैलेंज कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंसी चैलेंज। नहीं तो व्हाट, हु विल बी द सफरर ऑफ दैट ऑर्डर? सपोज इफ योर पिटिशन इज अलाउड my lord and if it is held that this consumer forum has no jurisdiction to entertain the application filed by so and so who is neither here nor there, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो होगा नहीं। the retrospective effect नहीं होगा। Are you making a statement that you are going to comply the order which have already been passed? They have already been complied with. We are questioning the competency. Are you making a statement that those orders will you will never seek the refund of the amount in case if the petition is allowed? नहीं ऐसी कैसे? तो पार्टी बनाई है। अब जब आप जाके उससे रिफंड भी क्लेम करेंगे, how can I pass an order behind their back? Either protect their interest. If you don't want to make them a party, I don't have any objection, provided their interest is protected. मैं पूछ लेता हूँ, मैं कंसल्ट कर दूँगा। नहीं वो सब सही है। अब आप ये बताइए, जिस आदमी के फेवर में ऑर्डर है उसको पार्टी नहीं बनाया, या तो आप उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कीजिए, अगर वो अमाउंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दीजिए, और एग्जीक्यूट हो गया है तो गिवन अंडरटेकिंग दैट यू विल नेवर आस्क फॉर एनी रिफंड इन केस इफ दिस पिटीशन इज अलाउड। पूछ लेते और या फिर थर्ड ऑप्शन ये है टू मेक देम अ पार्टी। पूछ लेते हैं पेमेंट हो गया होगा तो। फिर अभी कैसे बोल दिया था कि पेमेंट हो गया? नहीं मतलब मेरे हिसाब से जानकारी से तो हो गया है, लेकिन फिर क्या पूछना सर? बिकॉज माय लॉर्ड आपको किसने कहा? नहीं मुझे तो जो एंगेज की बताया, आई एम स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द कोऑपरेटिव बेंच। मैं वो कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं थोड़ा, आपको किसी ने बताया होगा ना पेमेंट हो गया, फिर आप क्या पूछना? बिकॉज अपील हैज ऑलरेडी बीन डिसमिस्ड। हमने अपील, अरे अब क्यों पूछना मेरे भाई? आई एम रिकॉर्डिंग योर स्टेटमेंट कि दैट द अमाउंट हैज ऑलरेडी बीन पेड। एक बार पूछ लो, कल पे रख ले। अनुवाद, मैं इसी बात पे तो मुझे बहुत बड़ा सीरियस ऑब्जेक्शन है। अपने मन से स्टेटमेंट्स होते हैं, वो भी फैक्चुअल। श्रीवास्तव साहब, अगर ये आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दूं और वो गलत पाया गया और आपके पार्टी ने कह दिया कि इट वाज अ स्टेटमेंट मेड विदाउट आवर इंस्ट्रक्शंस, तो सर कंटेंट में कौन जाने वाला है? इसलिए मैं इंस्ट्रक्शन ले लेता नहीं, कंटेंट में कौन जाने वाला है? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपका मुझे बैकग्राउंड मालूम है, आपने जजशिप भी की है और आपने बच्चों को पढ़ाया भी है। पढ़ा भी रखते, अब पढ़ा है तभी तो पढ़ाया है, राइट? और यू आर द बेस्ट पर्सन to point out that if a statement, wrong statement is made by a counsel, factual statement, not binding on the party, then whether the counsel is liable to be prosecuted for contempt of court or not for making a false statement before the court, that is the question. contempt, How can you? अच्छा तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ कैसे नहीं कंटेंट बनता। my submission is that आप कह रहे हैं नहीं बनता ना, contest that contention sir। नहीं स्टेटमेंट दे ही नहीं रहा। अभी तो आपने बोला, नहीं आई विथड्रॉ दैट स्टेटमेंट। आपके ऊपर इतना विश्वास करके कि जिस आदमी ने जजशिप भी की हो, जिस आदमी ने बच्चों को पढ़ाया भी हो, वो सही स्टेटमेंट देगा, वो भी अगर वो डाइसी दे रहा है तो देन नाउ इट इज नेसेसरी फॉर मी टू डिसाइड दैट एस्पेक्ट, दैट वेदर आई एम मेकिंग ऑफ अ फॉल्स स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट बाय द लॉयर विदाउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द लिटिगेंट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और नॉट। दिस क्वेश्चन आई विल फ्रेम। आर्ग्यू कीजिएगा उसके ऊपर कि दैट यू आर फ्री टू मेक एनी स्टेटमेंट। कल पे रख ले 1083/2023 Shri Srivastava, Shri Sharma. By this writ petition, the petitioner is challenging the competency of the consumer forum to pass the order of
of order for withdrawal for refund of the amount deposited in the FDR on the ground that the petitioner society is already under liquidation. Police system. Following lapses emerges from the writ petition. Number one, the persons in whose favor the orders have been passed by the consumer forum have not been implemented. Number two, as per section 69 of MP Cooperative Society Act, before effecting the order of winding up issued by the registrar, the previous sanction in writing of the Reserve Bank of India is required. There is no whisper in the writ petition that the previous sanction in writing of the Reserve Bank of India has been obtained. Next, according to the counsel for petitioner, seeks a day's time to verify as to whether the previous sanction in writing of the Reserve Bank of India has been obtained or not, and if not, then its effect on the winding up proceedings, and also to seek instruction as to whether the petitioner wants to implead the persons in whose favor the consumer forums have passed an order as per list tomorrow. सर कभी कभी व्यक्तिगत हितों से उठ के इंस्टीट्यूशन के हितों पे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये वो इंस्टीट्यूशन है जिससे हमको तनख्वाह मिलती है और आपको आपकी आजीविका मिलती है. हम उसके लिए ईमानदार नहीं हो रहे हैं, और हमने ये विश्वास था कि आप शायद यू विल राइज टू द ओकेजन, पर आप पुराना बैकग्राउंड सब भूल भाल के आपने जवाब दिया है. नहीं, विश्वास रहेगा. Item number 13, Sri Saurabh Kumar Sharma. Last date of hearing, my lord has directed to concern SP Balaghat file an affidavit before this honorable court for explaining the 5 points. Affidavit has been filed. क्या बोले वो? Voting aspect है ना. आप तो पहले एसपी साहब अपना बताएं कि उन्होंने मंथली क्राइम कंट्रोल मीटिंग, उसके वो कहाँ मिनट्स ला दे दीजिए सब. एक्चुअली वो एक्टिव केस में आए नहीं हैं? टीआई थे वहां के, एक्टिव केस में उसको रखा ही नहीं. एक्टिव केस में रखा है. अच्छी, आपका वो सारा रिकॉर्ड दीजिए कि जो जरायम रजिस्टर होता है, दो तरीके के रजिस्टर होते हैं मेरे ख्याल से, एक पेंडिंग वाला और एक डिस्पोजल वाला. खोल के दो भाई. सर आपका एक ऑफिसर है, इसी केस में है किसी और केस में है? अच्छा, मैं उनसे थोड़ी मदद लेना चाहता हूँ. Not with regard to the facts of this case, with regard to the different registers which are maintained at the police station. ये पुलिस स्टेशन में एक तो जरायम रजिस्टर होता है, वो उसमें क्या रहता है सर? सर जो अपराध पंजीबद्ध होते हैं सर, उनका स्टेटस इस स्टेज पे सर और प्रोग्रेस रिकॉर्ड करते हैं, और जो केसेस डिस्पोज ऑफ हो चुके होते हैं उसका कोई सेपरेट रजिस्टर होता है कि उसी में रहता है? जरायम की एंट्री हो जाती है सर, उसी में एक ही रजिस्टर रहता है कंटेनिंग बोथ द इंफॉर्मेशंस. ये पेंडिंग है कि डिसाइड हो गया है? रिकॉर्ड हो जाता है सर. फिर उसके बाद जो मंथली स्टेटमेंट्स जाते हैं सर उसमें वो अलग अलग इंडेक्सेस में दिखाते हैं सर. जैसे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. इसका जरायम रजिस्टर लाए हैं आप? आपके एसपी के स्टेटमेंट को हम कहां से चेक करें? सर शो कॉज किया सर, इसका जवाब नहीं,
मैं आपसे मैंने इसीलिए बुलाया कि आपको मैं इस केस से संबंधित कुछ नहीं पूछूंगा, आपसे पुलिस स्टेशन से संबंधित पूछने वाला हूं कि पुलिस स्टेशन में क्या चलता है। अब आपका जो एसडीओपी होता है, who is in charge of multiple police stations, is it not expected to carry out the inspection? Whether periodical inspections are conducted by the senior officers also? Yes. Right. Including SP? Yes. Are they not supposed to look into the JARAM register? Yes. आपके एसडीओपी ने कब बोला कि साहब जरायम, देखिए जरायम रजिस्टर में लिखा होगा क्लोजर रिपोर्ट रिजेक्टेड या एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड लिख नहीं सकते क्योंकि 2 बयान दर्ज हुए हैं, राइट? What your SDOP was doing when it was being reflected as pending in the JARAM register. You are the SDOP. Yes, sir, I'm present. अच्छा, फिर आपने क्या किया, अब आप ही बता दो सर। Now this is a personal question to you. You have invited trouble for yourself without any invitation from the court. What you were doing when the matter is pending, even according to the JARAM register, because the statements of 2 persons were recorded sometimes in 2021. Therefore, it is not a case that after the rejection of the closure report by mistake, it was mentioned in JARAM register that the closure report has been accepted. Therefore, under misconception or under misquoting, nothing was done. Everybody knew that this investigation is pending. What you were doing? थाने से जो रिकॉर्ड आते हैं सर, उसमें आप थाने जाते हैं कि थाने से रिकॉर्ड आते हैं? स्टेटमेंट्स आ रहे थे, हम भी देखते हैं सर, पर आप थानों का इंस्पेक्शन करते हैं कि सिर्फ चाय पीने जाते हैं? inspection करते हैं। इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन में क्या क्या देखते हैं? पेंडिंग केसेस होते हैं सर, कि पेंडिंग केसेस जब आप देखते हैं तो उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं अपना एग्जांपल देता हूं, किसी के ऊपर क्यों बोल रहे हैं। हमको कहा जाता है कि आप कॉजलेस सेक्शन का इंस्पेक्शन करें, तो मैं जाके क्या 4 फाइलें उठा के कह दूंगा कि आप, मैं उनका स्टेटमेंट चेक करूंगा, और स्टेटमेंट चेक करने के बाद अगर मुझे कुछ लगेगा तो मैं फिर उसके बाद उनके स्टेटमेंट के बेसिस को भी चेक करूं। What is expected from me? Whether the statement which has been prepared contains the correct figures or not. जब आप थाने गए और आपने जरायम रजिस्टर देखा, तो जब 2021 में वो पेंडिंग था, तो why you did not point it out to the SHO? When your SP conducted the investigation of the police station, ये लेडीज क्यों खड़ी हैं? Sir, is in this case, इसमें सर पक्षकार है, सर accused है सर। सर इनसे कहें बैठे, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, अननेसेसरली वो दिख रही होंगे, है ना? होगा सर, मुझे उसका मतलब नहीं है। दे आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय यू ना सर। हाँ, तो फिर उसमें क्या है, वो लाइव टेलीकास्ट भी चल रहा है, उसमें अननेसेसरली हम क्यों करें? ऑल्दो वी आर नॉट सपोज टू हाइड देयर आइडेंटिटी, वो वॉलंटरली अपीयर हो रहे हैं, बट स्टिल। बताइए सर, आपके सीएसपी साहब या एसडीओपी साहब जो भी है, जिस डेजिग्नेशन से भी काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे सर? मैं एक मिनट बताना चाह रहा हूँ। बताइए सर। क्या हुआ सर, इस केस में कि जो 2017 में जब ये चीज सर मेरा सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जब 2021 में आपके एसएचओ ने 2 बयान दर्ज किए, इसका मतलब है उसको मालूम था कि इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है और क्लोजर रिपोर्ट रिजेक्ट हो चुकी है, राइट?
उसके बाद आपके सीनियर ऑफिसर्स क्या कर रहे थे? सर अब चूंकि वो जराइम रजिस्टर में और वो एक्टिव केस शो नहीं कर रहा था, इसलिए जो इनकी मंथली जो रिव्यू की आप सर जराइम रजिस्टर बुला लीजिए, मैं कर ले रहा हूं। (5058/2024). Shri Saurabh Sharma, counsel for petitioner. Shri Swapnil Ganguly, counsel for the state. Shri so and so for respondents number. आपको एक्यूज बनाया है क्या? सर इसको लेकिन हमें नोटिस अभी तक इशू नहीं किया। कोई बात नहीं सर, मैंने कौन सा कह रहा हूं कि आप क्लोजर रिपोर्ट नहीं फाइल करो और फाइनल रिपोर्ट आप चार्जशीट फाइल करो। हैं? हमें नहीं मालूम है। 629 बेसिक ग्रीवेंस और 629 police system. It is submitted by counsel for the respondent that Superintendent of Police Balaghat has filed his affidavit and has tendered an unconditional apology for not concluding the inquiry after the in time after the rejection of the closure report by the Chief Judicial Magistrate Balaghat. In fact, after showing the status of the case in Jaraim Register as closure report has been filed, the concerning SHO did not re-register the case under active investigation / pending case, and due to which the monitoring at higher level could not be done. It is submitted that accordingly SHO Kotwali District Balaghat has been placed under suspension. Is being placed under suspension? तो क्या मतलब? Has been placed under suspension by order dated 16/3/2024. However, it is fairly considered by Shri Swapnil Ganguly that Jaraim register is not available. Accordingly, the State Council is directed to produce the Jaraim register in order to verify the contents of the affidavit of Superintendent of Police Balaghat. List on culpable. The copy supply the इस बात के लिए यहाँ पे आप कैसे कह सकते हो? मैं पूरी दिलवा देता हूँ, चिंता मत कीजिएगा। सर मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई है कि चार्जशीट फाइल हुई है, इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना है। It is within the exclusive jurisdiction of the magistrate. पुलिस वालों ने जो 8-9 साल आराम से सोए हैं, मैंने इनसे जवाब मांगना है। आपको अगर पुलिस वालों को बचाना है तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, और एक स्टैट्यूटरी वार्निंग मैं पहले दे रहा हूँ। मैं पहले आपको स्टैट्यूटरी वार्निंग दे रहा हूँ, कहीं इस चक्कर में फैक्ट्स के ऊपर ना आप आ जाना, और नहीं तो आपका इनका क्लोजर रिपोर्ट मैं यहीं से रिजेक्ट कर दूंगा अगर ये पाया कि ये लोग ने बेईमानी की है। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। Merely because you have been engaged, that is not advisable that every time you should speak out. Try to understand the scope of this writ petition. The only controversy involved in this writ petition is that after the rejection of the closure report, whether the police authorities can sit over the investigation. And the moment it is found that they were doing it with malafide intentions, and you are also here, and you are trying to interfere in the proceedings by making submissions because you are also a party, then you will be running the risk of touching the merits of the case. This is the statutory warning which I want to give to you. मैं लिखूंगा, इन लोगों को बता दिया गया था कि साहब ये आपके लेने देने में नहीं है. This is a matter between the court or between the complainant and the police personnel. You unnecessarily jumped into the merits of the case. आप क्या बताएंगे कि साहब पुलिस वाले क्यों सो रहे थे? आप बताओगे कि क्या आपने सुलाया था? जिस दिन पता चल गया कि आपने सुलाया था, भगवान भी आपको नहीं बचा पाएगा सर. तो बी वेरी कॉशियस, ये मैं आपको साफ साफ पहले से बता दे रहा हूं.
Unnecessarily, you are trying to jump into the controversy. When I am saying that once the closure report has been filed, it is within the exclusive jurisdiction of the magistrate to find out as to whether the closure report should be accepted or not. And I will not touch that aspect. And if you want to interfere by making submissions on the merits of the case, then you are running the risk of cancellation of closure report, not by the magistrate, but by this court only. If it is found that the entire investigation was tentative, with malified intentions, they were trying to protect the accused, what will be the consequences? Just tell me, sir. पक्षकार ने एंगेज किया है अपने हितों के लिए, सिर्फ बोलने के लिए और अपने हितों पे कुठाराघात करने के लिए किया है, तो बिल्कुल करोगे ये सर. But since I know the limitations of this court, and if you compel me to cross that limit, I will put the entire blame on you. बाद में मत कहिएगा सर ये क्या हो गया. पुलिस सो रही थी, आप बताओगे कि क्यों सो रही थी? और अगर आपने मुंह खोला और ये समझ में आया कि आपने सुलाया था इनको, कौन बचा रहा है आपकी क्लोजर रिपोर्ट को? बताइए ना मेरे को सर. आप, मैं उन सब चीजों में जाना नहीं चाहता हूं. उसके बाद भी इट इज योर प्रेरोगेटिव. आप बिल्कुल आर्ग्यू कीजिएगा, बट since you will be compelling me to cross my limit, my jurisdiction, then I will not take the responsibility of that. I'm not going on beyond that. Sir, whether they were. Yes. चलिए बताइए sir. When the closure report was rejected. नहीं sir. Again, you said that you will be touching the facts when the closure report was rejected, sir. उस point पे नहीं जाना चाहता. Actually, this. सर मैं इस अपराध पे घटित हुआ नहीं हुआ. झूठी रिपोर्ट है, सच्ची रिपोर्ट है. मुझे आप ये बताइए कि जब आपकी क्लोजर रिपोर्ट पेश हो गई है दोबारा, तो ये निर्णय लेने का अधिकार या कार्यक्षेत्र मेरा है कि मजिस्ट्रेट का है? मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं, कल नहीं पूछूंगा. मैं लिखा दूंगा कि साहब आपको 4 बार मैंने वार्निंग दी है, एंड स्टिल यू हैव इनवाइटेड योर ट्रबल बाय टेकिंग ऑब्जर्वेशंस ऑन दिस एस्पेक्ट. अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपने अपराध संबंधी किसी भी तथ्य के ऊपर बात की, क्या वो मेरे जुरिस्डिक्शन में है आज या कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में? आप ये तो बताओ. मेरे जुरिस्डिक्शन में क्लोजर रिपोर्ट सही तथ्यों पे पेश हुई है या गलत तथ्यों पे पेश हुई है, ये आज मैं डिसाइड करूंगा कि मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा. मैं तब डिसाइड करूंगा कि अगर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट में चाहे आप यहाँ आए चाहे ये यहाँ पे आए. अभी मेरे को डिसाइड नहीं करना है, मुझे वो डिसाइड करना भी नहीं है. परंतु आप मजबूर करेंगे तो मैं सारे जिम्मेदारियां आपके सर के ऊपर डाल दूंगा और फिर लिखूंगा कि सब इस कारणों से, चूंकि इन्वेस्टिगेशन सही था इसलिए क्लोजर रिपोर्ट मानी जा सकती है, और अगर इन्वेस्टिगेशन टेंटेड था, मैलाफाइड था, they were out and out to support the accused, तो आपको कौन बचाएगा सर? वही चीजें होंगी. या तो हम कहेंगे कि ये लापरवाह थे परंतु इनका कोई दुर्भावना नहीं थी. 2 चीजों में अंतर होता है सर, दुर्भावना पूर्वक काम करना और लापरवाही से काम करना. तो हमने कह दिया कि लापरवाह थे, दुर्भावना नहीं थी, तो आपको नुकसान नहीं होगा. हमने कह दिया बिल्कुल सही काम किया तो भी आपको नुकसान नहीं होगा. परंतु अगर कहीं मैलाफाइड एक्शन के कैटेगरी में आ गए फिर क्या होगा? तो आप तैयारी रखिएगा. आप शर्मा जी, आप इनको कॉपी दीजिए, आपने बनाया है. आप तैयारी रखिएगा, क्योंकि अगर कल ये समझ में आया कि दैट दे वर आउट एंड आउट टू सपोर्ट द अक्यूज्ड,
then your arguments may be required, right? और जब आज arguments हो ही नहीं रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है कि इस पिटीशन का स्कोप कहां तक रहने वाला है, और आप उसको अननेसेसरली आज ही एनलार्ज कर रहे हो, तो कर लीजिए। दूसरी बात, कल एक बहस और कर दीजिएगा, what are the rights of an accused at the stage of the closure of at the stage of filing of closure report, whether an accused is entitled for any hearing. क्या मजिस्ट्रेट के सामने आप जाके बहस कर पाएंगे on the merits? कंप्लेनेंट को राइट है, आपको नहीं है। तो कल इस बात पे भी आइएगा कि अगर ये कहीं ना खुदा ना खास्ता ये टेंटेड इन्वेस्टिगेशन की कैटेगरी में केस फंस गया, तो आपको किस एक्सटेंट तक राइट है टू इंटरफियर इन दिस प्रोसीडिंग्स, इस पे भी आर्ग्यू कीजिएगा, राइट? कॉपी दे दीजिए। Shri Saurabh Sharma is directed to supply a copy of the petition to counsel for respondents number 6 to 9. This tomorrow. The record of the minutes of the monthly crime control meeting presided by the present superintendent of police Balaghat were also produced in sealed cover, but since the matter is being adjourned for tomorrow, therefore the same is written back to Shri Swapnil Ganguly for production of the same on the next date of hearing. या इसको फाइल करने का ऑर्डर तो नहीं है? नंबर कौन सा है ये? 13 है। 13। इसको फाइल करने का तो ऑर्डर नहीं है, फाइल करो ना। तो आपको नहीं फाइल करना है, मत करो, हमें क्या, अभी तो सारा कुछ तो मेरे हाथ में है। ठीक है, स्टील कवर में रखिए, देखते हैं। Item number 14 with connected case, Sri Jaideep Sirpurkar, MS Sanjana Sahani. File detailed reply in WP 525 of 24. 5255. Yeah. You filed your reply? Yeah. Yes. Both the cases involve the same question of law, or the dispute is with regard to mutation. First case is mutation on the basis of will. Second case is that respondent number 5 claims to have been adopted, and then there was a family partition in which the property has fallen into his share. On that basis, mutation, and both the parties are before civil court. The difference. मैडम वो adoption date बताओ मेरे को पहले। 1983 judgment which my lords have also relied regarding adoption. आप मुझे adoption date तो दिखाओ। Adoption date, I will submit to that. But before my lord. Okay, madam, what is the evidence with regard to the adoption? Madam, let us come to section 11 of Hindu Adoption and Maintenance Act. I think that is the governing provision. Then मुझे दो। Before that, if I must submit, in WP 525 of 24, there is a joint application by the petitioner and respondent number 5 for mutation. That is the difference between the two petitions. आते हैं। And also there's an admission by the petition number 1 before the Tehsildar, where she's admitted to all the documents starting from settlement, the adoption, the will, and then the acknowledgement of partition. मैडम difference between आते हैं। तो पहले आप तो adoption का तो evidence देखें। Whether there is an evidence that the child was given in actual custody or it was handed over. But that is also one of the basic ingredients of a valid adoption, as I think so, subject to correction.
मैडम मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने सही बोला कि गलत बोला. I agree with that. I'm out of that. Actual handing over and taking over of the custody of a child is also one of the important ingredients of adoption. ऐसा मेरा सोचना था. मैंने कल भी इसे क्लियर किया था. While discussing from the board, we heavily rely on our memory. But while dictating, we also carry out the research to find out whether our memory is correct or not. So sometimes the observation from the board may not be correct. That's why I always share my doubts with the lawyers to find out whether the reliance on the memory, instantaneous reliance on memory is correct or not. अब आप ये देखिए कि आपके एकदम से स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में हम तो कोई कानून को तो दोबारा वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, जस्ट रिलाइंग ऑन आवर मेमोरी. So that's why I say कि भाई don't say think that I have said something. It is just on the basis of memory, may be right, may be wrong. In order to pass a correct order to the best of my knowledge, I always share my doubts with the lawyer so that if I am wrong, I can be corrected. And the party should not be compelled to go to the higher forum, which can be corrected by this court only. My appreciation of fact, something different. But application of law, if that can be corrected, then it should be corrected at this level only. Ji, madam. So what are the evidences with regard to the adoption? With respect to adoption, there's only a photograph which we've annexed. Apart from that, the document, which is the document executed between the respondents number 5 and petition number 1 and 2, and the admission made by petition number 1, that's on page number 32. पहले अपन adoption का वो देख तो लें. देखे तो सही कि वे रेवेन्यू अथॉरिटीज ने क्या किया है. जी मैडम, कौन सा डॉक्यूमेंट है या कौन सा Page number 81 of my reply may kindly be produced. Just a minute. Along with page number 58. These are the two material documents I'll be relying on. So first of all, I'm searching for 81. The last page. Okay. शपथ पूर्वक कथन श्रीमती, मैं जो कहूंगी मैं. This is by the petitioner number 1, Kusumbai. The family chart, Kusumbai is alleged to be the second wife of Ramanan Gupta. And I, respondent number 5, has been contended to be adopted by the first wife, Leela Bai, who's no more. That herein on 10th to 11th line, लीला बाई से एक ही पुत्री वंदना हुई थी जो फोर्थ मृत हो चुकी है. कोई पुत्र नहीं है. मुझे भी रामानंद से संसद से एक ही पुत्री चंद्रा हुई थी तथा वह भी शादी विवाह होकर अपने ससुराल को परगाम चली गई है. कुल भूमि 11 एकड़ थी और मकान तथा प्लॉट. फलस्वरूप मेरी पति वर्ष 1997 में फोर्थ मृत हो चुके हैं. इसके पश्चात मेरे पति रामानंद की पहली पत्नी लीलाबाई द्वारा आवेदक हरिनारायण को गोद लिया था. तब हम लोगों के बीच आपसी पारिवारिक बंटवारा हुआ था, जिसके अनुसार खजरी की पूरी 11 एकड़ जमीन आवेदक हरिनारायण को दी गई थी तथा छिंदवाड़ा में मेन रोड स्थित मकान एवं प्लाट मेरे हिस्से में मुझे प्राप्त हुआ था. This also forms part of our application, joint application with petitioner with respondent number 5. That's page number 58. जी मैडम. The applicants are Kusumbai and Harinarayan.
आवेदन अंतर्गत धारा 110 पैरा नंबर 3 यह कि आवेदिका ने अपनी सुविधा की दृष्टि से अपनी सौत स्वर्गीय श्रीमती लीलाबाई के पुत्र हरिनारायण से आपस में सहमति से छिंदवाड़ा नगर का वार्ड नंबर 34 स्थित एक मकान जो एक खुला प्लॉट लेकर खजरी की अपने हिस्से की जमीन हरिनारायण को सौंप दी है। दोनों पक्ष अपने अपने जायदाद व हिस्से पर शांतिपूर्वक मालिक काबिज हैं, कोई विवाद नहीं है। पूर्व में आवेदिका की सौत श्रीमती लीलाबाई ने भी अपनी कृषि भूमि का हिस्सा सो एंड सो का आधा भाग हरिनारायण को वसीयतनामा के जरिए दे दिया है। इस तरह हरिनारायण संपूर्ण रकबे पर काबिज है। And then the prayer is that name of her and her daughter Chanda be omitted and name of Harinarayan be mutated over the revenue records. This application was allowed by the Tehsildar, madam. जी मैडम। Against which a challenge was made before the SDO and the order was reversed. And thereafter challenging that order, we preferred an appeal before the commissioner. Whether filing of a joint application and making of a statement before the authority has been admitted by Srimati Kusum Gupta or it is a disputed fact? My written statement before the civil court, I have denied it. No. Madam has relied on two documents. Number one, a joint application filed by you and Harinarayan Gupta, and secondly, the statement given by you before the Tehsildar. I may clarify the factual metrics, madam. Taking the facts as have been stated, it was between Harinarayan and Kusum Gupta, the proceedings. The appeal was preferred by petitioner number 2, Renu, stating that her name was there in the revenue record as joint owner and she was not included as a party. Therefore, the SDO allowed this. Now, against that order, an appeal is preferred. During pendency of these proceedings, respondent number 5 alienates the part of property to respondent number 6. Before the commissioner, respondent number 6 files an application for implement under order rule 110, which is allowed, and mutation is directed in favor of the purchaser, respondent number 6, not in favor of Harinarayan. She did not move, the respondent number 6 never moved any application for under 110 before Tehsildar. That sale pertains to the year 2012. And these proceedings of mutation. But ऐसे में थोड़ा सा confused हो जाएगा. I will get confused because he is saying yes, you are saying no. तो The date of sale to respondent number 6. मुझे तो आप ये बताइए कि somebody says that he was adopted. उसके adoption का क्या evidence है?
मैडम अपने को बेसिकली सेक्शन 11 पे ही आना पड़ेगा. That governs the field. As per law, it does belong, but the certain admissions made of petition number 1, coupled with the acknowledgement of partition executed by petition number 1 and 2 and respondent number 5, wherein this fact But once the name of the other petitioners were also recorded in the revenue records, so being the legal heir of the owner, whether their interest can be jeopardized only because of the fact that two of the co-owners have consented. the consent is only by the petitioner on the fact of मैंने अभी देखा नहीं, Mr. Sirpurkar said that number two Is the daughter. is the daughter and her name was also recorded in the revenue records. But the fact that whether she was a legally wedded wife and what was the status in Ramanan Gupta's life is also under education in the civil suit, my lord, which is at the stage of यही तो मैं evidence. इतने दिनों से हल्ला मचा रहा हूँ. My lord. अब आप ये बताइए कि रेवेन्यू अथॉरिटीज ने ये तो देखा ही नहीं कि को-शेयरर्स भी तो हैं उसमें. देखा ही नहीं कि सेक्शन 11 भी कुछ होता है, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट. देखा ही नहीं कि whether the mother, proposed adoptive mother, was older than 21 years older than the boy who was being adopted. देखा ही नहीं कि that mother that had already lost her husband. Nobody knows whether the adoption was during the lifetime of her husband or not. If so, then whether his consent was obtained or not. कहाँ है ये सारी चीजें? देखा ही नहीं कि whether this function of actual handing and taking over of the child had ever taken place. That has not been taken into consideration. But That's in our why reply, we that is my grievance. All the aspects which goes to the root of rights of the party are not being taken care of by the authorities. How the right of a co-sharer can be jeopardized or can be taken away merely by mutating the name of the other co-sharer on the basis of a consenting application filed by some of the co-sharers. So locus of Kusum to again challenge. Fine, no problem. मैंने इसीलिए तो सरपोरकर साहब से पूछा था कि whether he has disputed the filing of application or making of statement or not. That was just with the intention to find out whether she has any locus or not. मैंने ये क्वेश्चन पूछा था ना कि once she had already admitted that Mr. So and so was adopted by her by the first wife of her husband. तो एस्टॉपल के प्रिंसिपल में तो मैं जा ही रहा था. मैं लोकस की बात नहीं करता, हो सकता मैं एस्टॉपल पे जाता कि भाई अब उसको चैलेंज नहीं कर सकते. पर यहाँ पे तो एक और भी है ना जो को-शेयरर है जिसका नाम है हाउ कुसुम कैन टेक अवे द राइट ऑफ द को-शेयरर हुज नेम इज आल्सो रिकॉर्डेड इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स. इवन दैट वाज विजिबल टू द अथॉरिटीज कि साहब यहाँ पे तो एक नाम और भी है. कहाँ है वो? The least which was expected from the authorities was to issue notice to Renu also. Whether such an application has been filed, what have you to say? Basic principles of natural justice के इतना वायलेट हो रहे हैं. अब आप मुझे ये बताइए कि how the right of the petitioner number 2 can be taken away by a joint application filed by Kusum and Hari Narayan. Also, she has not denied the execution of the acknowledgement. Madam, Right cannot. I'm not talking about the case from the point of view of petition number 1. From petition number 2 only, my lord, I'm submitting that she has been a party to that document in 1997. Which document, madam? That annexure R3 is the document. Page number 32. Page number 32. 23. 23 क्या 32? 32, my lord. Of my reply. ये क्या है सर? आपसी सहमति के आधार पर बंटवारे की याददाश्त. जी, इसमें क्या लिखा है मैडम?
The three parties are respondent number 5, petitioner number 1, petitioner number 2. Mm-hmm. She states herself to be 22 years in 97, means her year of birth is 75. Mm-hmm. स्वर्गीय रामानंद की अन्य पत्नी लीलाबाई का भी स्वर्गवास हो गया है और उन्हें संपत्ति में जो व्यवस्था पत्र के आधार पर अधिकार प्राप्त था उससे उन्होंने वसीयतनामा दिनांक 10/9/94 के द्वारा संपत्ति का उनका भाग हरि नारायण को प्रदान किया था। श्रीमती लीलाबाई का स्वर्गवास हो जाने मैडम क्या ये डॉक्यूमेंट एडमिटेड है that it was signed by Chanda Renu? but that's the contentions in the civil suit will have to be seen not test. Madam, why should I decide the revenue proceedings on the basis of the complaint? Denied. And this If that document was not formally proved, how can I rely on that document? this would presuppose a valid adoption. If validly adopted, then a member of family, then a valid partner. साहब सवाल एस्टॉपल पे मैं जा रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ऐसा नहीं है, मेरा ये है कि whether now you are stopped from challenging something which you had already acknowledged. Estoppel का मतलब क्या है? There can't be any estoppel against statute, this and that. There are certain exceptions, there is no difficulty. पर लेकिन अगर ये डॉक्यूमेंट एडमिटेड होगा तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि whether estoppel can be applied or not. अब हम आगे उसके डेप्थ पे जाएंगे. Madam, if this document has not been admitted by number 2, number 1 के लिए तो मैंने आप खुद देखिए मैंने इन्हीं से क्वेश्चन पूछा था कि whether you have ever disputed के that you never appeared before the Tehsildar, whether you never gave the statement, whether you never moved an application, unless and until that dispute is raised by number 1. Written statement before civil court, I have denied this. यार वो सब ठीक है, अलग बात। आप रेवेन्यू अथॉरिटीज की बात कीजिए तो मैं एस्टॉपल पे जाता. बट नाउ द क्वेश्चन इज विद रिगार्ड टू नंबर 2. We fairly concede that the civil suit is pending for my lord at the evidence stage. So my lord, till that time, the revenue records are persisted before the allowing of the application. That may be, my lord, restored. And after the decision of the civil suit, then whatever judgment is passed, then it will have a direct bearing on the revenue records. Right? Any objection? Pursuant to this. That whatever revenue records were there prior to filing of the application, that may be restored. Prior to passing of this impugned order. फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन Very original record, which was correct. आप देखिए ऐसा है कि जो भी है आपके ओरिजिनल रिकॉर्ड जैसे एप्लीकेशन मूव होती है ना, क्योंकि एप्लीकेशन इज द रूट कॉज ऑफ द डिस्प्यूट. हम एप्लीकेशन के कुछ पोर्शन को प्रोटेक्ट करके बाकी पोर्शन को हम मैरिट्स के ऊपर तो सेटिस्फाइड कर सकते हैं. यस 5255/2024 Shri Jaideep Sarpurkar, Counsel for Petitioner, Shri Ravish Agarwal, Senior Advocate, with Shrimati Sanjana Sani, Counsel for the respondent number 5 and 6, none for the state. निश्चिंत है, कोई फर्क नहीं पड़ता. This petition under Article 227 of Constitution 26 of Constitution of India has been filed against the order dated 20/2024, passed by a respondent passed by Additional Commissioner Jabalpur Division, Jabalpur, in case number 506/A-6/2012-13, by which the name of the respondent number 5 has been mutated on the basis of adoption. 6 is the purchaser from this part.
has been, by which the name of the respondent number 6 has been mutated on the basis of the sale deed executed by respondent number 5 who got the property by virtue of adoption. It is fairly considered by counsel for the parties that both the दोनों ने civil suit file किया हुआ है, that the respondent number 5 and 6 दोनों ने file किया, they have filed a civil suit for declaration of their title, which is pending, and accordingly, with the consent of the parties, accordingly, a joint statement was made by the counsel for the parties that the revenue record which was in existence prior to filing of the application for mutation may be restored, and the said mutation entry may be directed to be subject to final outcome of the civil litigation. Full stop. Since multiple complicated questions of title are involved, therefore, the submissions made by counsel for the petitioner as well as the respondents number 5 and 6 appears to be justified under the facts and circumstances of the case. Accordingly, the order dated 20th of February 2024 passed by Additional Commissioner Jabalpur Division, Jabalpur, and all the orders passed by different authorities on a joint application filed by petitioner on the question of mutation are hereby set aside. The mutation, the revenue record which was in existence prior to filing of the mutation application is hereby restored. It is made clear that the mutation entry shall be subject to the final outcome of the civil litigation. Until then, none of the parties shall create any third-party right interest. With the aforesaid observation, the petition is finally disposed of. और 5240/2024 इसमें भी सेम ऑर्डर जाएगा, केस नंबर अलग हो जाएगा, डेट वही है. Item number 15. स्वाति मैडम का लगा देना प्रेजेंस, साथ में लेट कमर और लिख देना. पता नहीं था जी. Restoration of 482. कौन सी खारिज हो गई सर? 482. कितनी बार नहीं आए थे? सर फाइनल हियरिंग में लगा हुआ था. अच्छी बात है सर. तो कौन सी किताब दे रहे थे आप बार को? बार को कौन सी किताब दे रहे हैं सर? आपको आइडिया नहीं है? मेरे यहाँ पे चाहे मैं डिसमिस एंड डिफॉल्ट करूं या मेरे यहाँ पे रेस्टोरेशन पे लगे, रेस्टोरेशन और डिसमिस एंड डिफॉल्ट एटलीस्ट फ्रॉम माय कोर्ट is not by way of punishment. It is just by way of verifying as to whether the person is really interested in prosecuting or not. The moment restoration application is filed, it is restored by way of right. But हमारा कहना ये है, आप लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार बार को कोई किताबें डोनेट करें, जिससे कि आपके उन साथियों की मदद हो जो किन्हीं कारणों से खरीदने की परिस्थिति में नहीं है. राइट. तो ये चीज मेरी वहां ग्वालियर में भी एक्सेप्ट की गई थी. यहाँ पर भी मैं बार बार पूछता हूँ कि अगर आप लोगों को इस व्यू से कोई ऑब्जेक्शन है तो बताइए. तो किताब के नाम पे किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, क्योंकि आपकी सामर्थ्य के अनुसार है. ऐसा हमारी कोई कंडीशन नहीं होती कि यही किताब आनी चाहिए या वही किताब आनी चाहिए. इट इज by the lawyers, for the benefit of the lawyers. Right? चलो, ऐसे मैडम ने एक लिस्ट बना रखी हुई है. चलो नेक्स्ट. Item number 16. Shri Bhupendra Kumar Shukla. My lord, by way of the instant petition, my lord, I am challenging the next A4 mile. By the lord, आप किसको अक्यूज बनाना चाहते थे सर? respondent number 2, my lord.
आपका वो, अच्छा पहले अपन रीजंस देख लेते हैं फिर आपका केस सुनते हैं। रीजंस क्या दिए ट्रायल कोर्ट ने? ये पवन राजपाली के खिलाफ क्या मटेरियल है सर? Prosecution witnesses has examined my lord. The father, present petitioner examined as the PW1, my lord. सरजू ने शिकायत घटना से पहले उन लोगों की पवन से जमीनी बुराई चल रही थी, उनके गांव में पवन के अलावा और किसी से बुराई नहीं चल रही थी। पेज नंबर 40 में है, पैरा नंबर 3 में सरजू पाल का जो स्टेटमेंट है। केस क्या था सर? ओरिजिनल केस क्या है वैसे? My lord, the murder intimation has been recorded by the police on the basis of the Dehati Nalsi, my lord. During the course of the investigation, two accused person is arrested by the police. One is the Rupa Banjara and second is the Bura Banjara, my lord. The police has recorded the statement under section 161, my lord, where the witness Lok Ram Pal, my lord. उसका बयान कहाँ है सर? 161 का बयान कहाँ है? 26 में है लोकराम पाल का मैल, पेज नंबर 26 में। इसमें मैं जो लास्ट पैरा में सब रिलेंट पढ़ता हूँ। मेरे भाई की हत्या रूपा, मैं उस पते पर रहता हूँ, मजदूरी करता हूँ। मेरे भाई पर प्रभु था, बहन गुड्डी है, दोनों हम दोनों भाई अपने परिवार के साथ गए थे। दिनांक 12/10/22 को मेरा भाई वापस आ गया था। दिनांक 14/10/22 को सुबह करीब 7:30 बजे मुझे मुकम्मल है कि प्रभु खत्म हो गई, उसकी लाश गाँव पड़ी है। फिर मैं आज सुबह 6 बजे पुराना खेड़ा आ गया हूँ। मुझे मेरे माँ पापा और सर्जन बताया प्रभु कल खेत में बखरने के लिए परसी बंजारा से ट्रैक्टर के लिए बात किया था तथा रूपा बंजारा से खेत में काम करने का था। प्रभु बता रहा था कि रूपा ने काम करने मना किया है, कहा कि वह लोटन राजपाली खेत में काम करेगा। इस बात को लेकर प्रभु ने रूपा बंजारा को गाली दे दी और यह बात प्रभु ने मुझे बताई थी। कल दिनांक को प्रभु अपनी जमीन की बखरने के लिए गांव के परसी बंजारा के ट्रैक्टर लेकर गया था। बखरने के बाद कल दिनांक 8 साढ़े 8 बजे ट्रैक्टर लेकर वापस आया। ट्रैक्टर परसी बंजारा के घर पर रखकर लड़का प्रभु गांव के रूपा बंजारा भूरा बंजारा के साथ कहीं चला गया, घर वापस नहीं आया। रूपा और भूरा के साथ जाने के बाद मुझे ही परसी बंजारा ने बताई थी। वह देखने आने के तलाश की प्रभु नहीं मिला। सुबह 7:30 बजे डली हुई पता चला। मेरे भाई की हत्या रूपा तथा भूरा बंजारा ने मिलकर की। उसकी हत्या मुझे संदेह है, पवन का भी हाथ है, पवन से भी पूछताछ की जाए। ये सस्पिशन था बस जी। सेम स्टेटमेंट जो है my lord वो हिम्मत का है। हिम्मत साहब, हिम्मत ने क्या बोला? 29 में वो क्या हाथ होने की, उसको हत्या के पीछे मुझे शक है कि प्रभु की हत्या में इससे हम कैसे किसी को वो करवा दें सर प्रोसिक्यूशन? हिम्मत और कौन विटनेस है सर? इसके अलावा my lord पेज नंबर 30 में मिट्ठू क्या बोले? उसने भी शंका जाहिर की, हत्या के पीछे मुझे शक है कि प्रभु की हत्या में का भी हाथ है। अच्छा, और क्या है? और जो डिपोजिशन हुए नहीं, और कौन सा गवाह, कोई और भी गवाह बचा क्या जिसका 161? नहीं, बाकी लोगों के बयान में नहीं आया। अच्छी बात है। अब इनका कोर्ट का एविडेंस देखें सर जी। अपन पहले लोकराम का देखते हैं। लोकराम का किस पेज पे है? मिट्ठू का हुआ पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 46 जी।
जी सर, ये क्या बोले हैं सर? भूरा कपड़ों पे खून लगा तो उसने कहा हम तीनों ने मारा है। ये आ गया आपका इम्प्रूवमेंट, राइट? ये चीज आपके 161 के बयान में नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, आपका कहना है ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, implicating the third person also, तो इसके बारे में पूछा होगा। PW1 का जो स्टेटमेंट है पैरा नंबर 3 में मालूम PW1 पेज आप पहले अपन मिट्ठू की बात करें ना, इसको खत्म करें, आगे बढ़ेंगे फिर। ये ओमिशन कॉन्ट्राडिक्शन भी कन्फ्रंट कराया गया आपको इस विटनेस को पैराग्राफ 8 और 9 में। जी हाँ, तो फिर क्या वैल्यू बचेगी इसकी सर? आप नंबर 1 की बात कर रहे हैं, आप PW1 नंबर 1। जी, ये क्या कहते हैं सरजू पाल जी? पैरा नंबर 3 में है, फिर तीनों लोग मेरे भतीजे ओंकार के पास गए तो ओंकार ने बताया कि पवन के पास भूरा एवं प्रभु बैठा था। फिर ओंकार ने पवन को फोन लगाकर पूछा कि प्रभु घर नहीं आया है, तो पवन ने घबराकर कहा कि मेरे पास प्रभु नहीं आया। 1 बजे तक मेरे लड़के को ढूंढा, उसके बाद तीनों घर आ गए। सुबह होने पर लगभग 6-7 बजे सरजू लोधी ने बताया कि तो तुम्हारे प्रभु की लाश मंदिर के पास पड़ी है। तो हम लोग मंदिर के पास पहुंचे तो फिर रमेश पाल ने पुलिस को फोन लगाया। फिर पुलिस आई, तब मैंने पुलिस को सारी बात बताई और रिपोर्ट लिखाई। पुलिस को मैंने अपनी रिपोर्ट में पवन पाल, भूरा बंजारा एवं रूपा बंजारा के नाम लिखाए थे और कहा था कि तीनों ने मिलकर मेरे लड़के का मर्डर किया। पुलिस ने रिपोर्ट में लिखी एवं मुझसे रिपोर्ट पर एवं अन्य कागजों पर अंगूठा लगवाते रहे। रिपोर्ट में किस किस के नाम लिखे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लड़के की 13वीं के बाद पुलिस ने हम लोगों को पुनः बयान लिए थे। ये सब बयान इसके बयानों में है क्या? 161 में सारा शक की बात पे चला रहे हैं तो। अच्छा, अब आप ये बताइए, हरदीप सिंह वाले जजमेंट में जो रेफरेंस के बाद लार्जर बेंच का है, किस नेचर का ऑफ एविडेंस होना चाहिए टू एक्सरसाइज पावर अंडर सेक्शन 319? समथिंग मोर देन फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, लेस देन द कन्विक्शन। फिर इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। 10915 of 2024, this application under section 452 of CRPC has been filed against the order dated 1/3/2024 passed by Second Additional Session Judge Hata, District Damoh in ST number 23 of 2023, by which the second application filed under section 319 of CRPC for summoning the respondent number 2 as an additional accused has been rejected. It appears that the dead body of the deceased, क्या नाम है सर? पवन राय, Prabhu was recovered. The witnesses in their statements recorded under section 161 of CRPC also expressed their suspicion towards the respondent number 2. However, the police did not file the charge sheet against the respondent number 2 on the ground that there is an enmity between the parties and the involvement of the respondent number 2 was not found. The evidence of the witnesses are being recorded, and
On the basis of the evidence recorded by the witnesses, an application under Section 319 of CRPC was filed, which has been rejected. Challenging the order passed by the court below, it is submitted by counsel for the applicant that there is sufficient material against the applicant, respondent number 2, to proceed under Section 319 of CRPC, and therefore the trial court should have summoned the respondent number 2 as an additional accused. Heard the learned counsel for the petitioner. Before considering the material available on record, this court would like to consider the law governing the field of exercise of power under Section 319 of CRPC. The Supreme Court in the case of Hardeep Singh versus State of Punjab reported in so and so has held as under. SCC कर लेंगे तो शायद पैराग्राफ 109 है, मैं देख के और बता दूं. Thus, for exercising power under Section 319 of CRPC, something which is more than what is required for framing issue and less than what is required for conviction is required. If the statements of the witnesses recorded under Section 161 of CRPC are considered, then it is clear that except mentioning that they have a suspicion that the respondent number 2 might also be involved in the commission of murder of Prabhu, nothing else was narrated against him. No other evidence was collected by the police, could be collected by the police. Even the police after, even the police gave a specific report that no evidence was found against the respondent number 2, and there is an anonymity between the parties. The question of anonymity has also been admitted by Sarju, PW1, in his cross-examination. Methu PW3 had stated that has stated in his examination in chief that किसने एडमिशन जुडिशियल एक्स्ट्राजुडिशियल किया है, that Bhura had made a extrajudicial confession that Prabhu has been killed by 3 persons, that is Bhura, Rupa and Pawan. However, in paragraph 8 and 9, he admitted that there is an anonymity with Pawan, and also admitted that, and also could not give any explanation with regard to the omission in his police statement with regard to the extrajudicial confession made by Bhura. The trial court has rejected the application filed under Section 319 of CRPC on the ground that there is no sufficient material to proceed against the respondent number 2 under Section 319 of CRPC. Even the counsel for the applicant could not point out the material against the applicant respondent number 2, warranting his trial as an additional accused. Since the trial court has rightly refused to exercise its power under Section 319 of CRPC in the light of law laid down by Supreme Court in the case of Hardeep Singh Supra, no case is made out warranting interference. The petition application fails and is thereby dismissed. 17, MS Vipra Kochar. Madam, this applicant, how he is related to the respondent number 1? He's the husband. Husband. Right. Which is the FIR, madam? That starts from that is by page number 40. Okay. Some judgments, I'll quote everything. Lords, this is an application under Section 482 of quashment of FIR. The FIR, may I read the FIR? Yeah, please, madam. Yeah. Page number 6. जी मैडम. थाना में सऊदी के पद पर पदस्थ प्रार्थिया प्रीति गुप्ता, उम्र 25 साल, I'll move to the relevant part, के पास जोतावर जिला की मांग कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर
गाली गलौज कर मारपीट संबंधित शिकायत की जा मामला परिवहन होने के आपसी समझौता हेतु परिवार परामर्श कमेटी के समक्ष रखा गया. Then my lords, I'll skip to the relevant part. मेरे माता पिता ने शादी में रुपए 20 लाख अधिक राशि का सामान एवं जेवरात नगद राशि उक्त विवाह में मेरे पति को प्रदान किए गए एवं लगभग 10 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि विवाह संबंधी अन्य कार्यक्रम में व्यय हुई. अपने सामर्थ्य के अनुसार एवं सहमति से विवाह किए जाने के उपरांत भी मेरे पति विवाह के पश्चात लगातार राशि कम दिए जाने के कारण मेरे पति के द्वारा नाराजगी जाहिर की जाती रही. विवाह दिनांक से मेरे साथ मेरे पति द्वारा दुर्व्यवहार एवं अपशब्दों का प्रयोग किया एवं गाली गलौज ताना देना प्रारंभ कर दिया. मेरे पति इंदौर में HR मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं. मैं शादी के कुछ दिन बाद अपने पति के पास गई. मेरे पति द्वारा लगातार गाली गलौज कर मुझे कमरे में बंद रखा जाता था एवं मुझे दैनिक आवश्यकताओं से वंचित रखा जाता था. मेरे पति द्वारा मेरे साथ अमानवीय व्यवहार कर मारपीट की जाती थी. मेरे पति अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं, मेरे साथ गाली गलौज एवं मारपीट करते हैं. मेरे परिवार के द्वारा बार बार लगातार समझाए जाने पर भी हर तरह से सहयोग किए जाने का प्रयास किए जाने पर भी पति के व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया एवं उनकी क्रूरता जारी रही एवं मुझे अत्यधिक प्रताड़ित कर परेशान किया जाता रहा. उसके पश्चात मैं जबलपुर वापस आ गई. उसके पश्चात भी मेरे पति द्वारा जबलपुर आकर भी मेरे साथ दुर्व्यवहार कर मेरे साथ मारपीट की गई एवं मुझसे एवं मेरे परिवार से अनावश्यक राशि की मांग लगातार जारी रही. मेरे द्वारा जिला जबलपुर में आने के उपरांत भी हर संभव प्रयास किया जाने के उपरांत भी मेरे पति द्वारा किसी भी प्रकार का अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता. जी मैडम. This is the FIR, my lords. Now, Fine. first thing I would like, there are few things dates I would like to quote. The date of marriage is 25/22, my lords. They have been living separately since 22/6/22. They have hardly lived for 15 to 20 days together. The applicant filed a divorce proceeding on 21/8/23, my lords. And before that, a DV proceeding was filed by the applicant on 24/7. Which proceedings were filed? DV. Domestic DV? violence, yes. When that was filed? 24/7/23. And because we had told the applicant that we want a divorce because she was asking for an amount of 5 lakhs to settle the dispute between each other. So we filed a divorce on 21/8/23. Now, my lords, I would like to. The applicant is staying separately since 22/6/22, and there are just only omnibus allegations, my lords. There is. Madam, you are the husband. Yes, my lords. There are no specific allegations as regards the dowry, my lords. Madam, आपने खुद ही कहा they resided only for 1.5 months. Yes. Where is the question of specific or non-specific? Everything happened within this 1.5 months. They have not resided even for 1.5 months, my lords. Fine, whatever it is. So even assuming they resided together for 1 month only, so all the allegations which have been leveled, they took place within a period of 30 days only. My lords, actually. Then where is the question of specific allegations? My lords, as regards the dowry demands, I would like to. Quote the celebrated judgment of Preeti Gupta and others. Madam, can you say that there is any harassment on the ground of demand of dowry? Is it the allegation? My lords, there is no specific demand for dowry. Right. Please come to section 498A. Yes, ma'am. Yes, my lords. That's what I'm saying. Section 498A, Part B. Harassment of the women, where such harassment is in the view to coerce her or any person related to her. Don't jump to B on directly. First of all, madam, read out A also. I'll come to that also. No, first of all, start from A. Any willful conduct which is of such nature as is likely to drive the women to commit suicide or cause any grave injury or danger to life. Right. So, whether there is any demand of dowry or not, if the act of an accused is covered by A, clause A of this definition of cruelty,
then again an offence under section 498A would also be made out. So demand of dowry is not a sine qua non for registering an offence under 498A. My lords, there is no specifics regarding to any injury. Madam, Previous hurt. likely to drive, it hardly matters whether. Drive. My lords, Then I would like to quote few judgments. Preeti Gupta, my judgment. No, my lord, Swapnil and others versus state of MP. The allegations are almost the same. I have, Whether this clause A was taken note of. Yes, my lords, and in fact, there was threat to life also in that judgment. And there were specifics related to the dowry also, that 10 lakhs amount and gold chains were asked. So whether that judgment is in relation to the husband or Yes, to. yes, my lords, it's to the husband. I have Just give me that judgment. I have given that. You have already supplied to me. Okay. Yeah. In that judgment. First is Preeti Gupta, another is my judgment. Yes, my lords. Third is Swapnil and others versus state of MP. Swapnil and others. And at this judgment. Just a minute, madam, मुझे स्वप्निल वाला देख लेने दीजिए, मुझे देख नहीं रहा actually. Then there is a judgment by Madras High Court. It must be after that. Yes. Swapnil, yes. In that judgment, my lords, it's almost the same facts. Almost the same. No. Let us come to the allegations. Yes. Para 5, my lords, in that judgment. On 30/4/2012, they said, if you do not fulfill our demands, then we will kill you. Thus, my husband, father-in-law, mother-in-law, and sister-in-law gave threat for life on the issue of demand of 10 tola gold, Maruti car, and 1 lakh rupees in case of dowry. Yeah, there are specific demands, my lords, and there's a threat to kill the complainant. And there, in this case also, there is a domestic violence case which has been registered. And upon ascertaining the facts and delving on most judgments of the Honorable Supreme Court, the Supreme Court has finally quashed the FIR for husband, mother-in-law, and father. And my lords, the Ji, madam. My lords, the judgment I have submitted, the Madras High Court judgment, that is between the husband and wife only on the same set of grounds, and that has also been relied on Swapnil and others, Supreme Court judgment, whereby the court has quashed the FIR. My lords, I would like to refer to your judgment, Sandeep Singh Bias and others. In that page, para 13, the RP Kapoor and versus State of Punjab, where you have referred to this judgment, where the third part, where the allegations in the first information report of the complaint taken to the face value accepted in the entirety do not constitute the offence alleged, and where the allegations constitute an offence alleged, but there is either no legal evidence adduced or evidence adduced clearly or manifestly fails to prove the charges. I like to rely on this because in the charge sheet also there is. Madam, please come to paragraph 3 of this Swapnil's judgment. Whether that fact is available in the present case? Yes, my lord. Paragraph 3. Para 3. Annexure P5, that. Yeah.
whether there is any allegation of demand of dowry or harassment by the husband in paragraph 3. Demand by the husband. Yeah. He does not do any work or business. That was the only allegation against the husband. No, but Milords, Madam, please. Let us not move so quickly. Right? Now, please come to paragraph 8. If the intervening developments referred to above and the two complaints are analyzed carefully, then a conclusion was drawn. What is there for me to compare? Whether any reconciliation proceedings had taken place, or whether any statement was made by the respondent that no, he never misbehaves with her. Milords, a representation was submitted before this FIR was. By whom? By the applicant. Maybe what are the rights of an accused to participate in the investigation or to direct the to seek a direction for the investigating officer to investigate in a particular manner? Milords, all I would want to submit is there are no specific allegations regard to dowry demands. And Madam, there is no question of any demand of dowry in order to make out an offence under 498A. Demand of dowry is one of the aspects. But misbehavior which may lead a woman to commit suicide or which may result in causing danger to her life, limbs or health, they are also sufficient. Milords, my submission is that it is a malified proceeding and Madam, please come to judgment passed by the Supreme Court in the case of Renu Kumari, in which the Supreme Court has also considered the judgment passed in the case of Bhajan Lal, and it has been held that if the allegations make out a prima facie cognizable offence, then the malafide of the informant becomes secondary in nature. One 09992/2024. This application does. Sanjay Kumar. And in that case, Bhajan Lal's judgment was also considered. 10992/2024. Madam, would you like to have an order on merits? Milords, I would like to withdraw. This application under section 482 of CRPC has been filed seeking the following relief. After arguing the matter at length, the counsel for the applicant seeks permission of this court to withdraw this application. It is accordingly dismissed as withdrawn. वापस कर. Item number 18, Shri Naeem Khan. जी सर. पेन ड्राइव पेश करना टाइम दे. अरे वो करते रहना, पहले आप ये तो बताओ क्या है. इसमें FIR एक टीम विजय राघवगढ़ डिस्क्वालीफाई सभी सदस्यों के अलावा जुनैद अख्तर, अर्श राजा, ग्राउंड पर पहुंच गए. पहली पारी पहले ओवर से रोक दिया मैच का. मैच के दौरान जस्ट मिनट. ये पुलिस के साथ 353 लाख. जी सर. दोनों टीमों के खिलाफ विवाद हुआ तो कोई बात नहीं सर. दोनों खिलाफ ठीक है, कोई बात नहीं.
353 वगैरह लगा तो मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सरकारी काम करने से रोका गया है ना। Yes. ये तो पुलिस या एफआईआर किसने कराई है? ये तो इंचार्ज एसएचओ ने कराई है। पुलिस के साथ आप धक्का मुक्की। इसमें जो हम पेन ड्राइव जो हमारा पेश करेंगे उसमें जो हमारा पूरा वीडियो बना है कि हमारे द्वारा जो है पुलिस तो ये पेन ड्राइव आप ट्रायल कोर्ट में पेश कीजिएगा ना, डिफेंस है ना आपका, मना कौन कर रहा है? मैं 482 में आपका डिफेंस कैसे कंसिडर कर सकता हूँ? सबसे पहले तो आप उसके ऊपर बहस कीजिए। विड्रा कर 11351/2024, this petition under section 482 of CRPC has been filed seeking the following relief. After hearing the matter at 10, the counsel for the applicant seeks permission of this court to withdraw this application. It is accordingly dismissed as withdrawn. Number 19 with connected case, Shri Manish Kumar Tiwari with Siddharth Dutt. Praying for 1 week time. Praying for 1 week time. List after 8 weeks without any liberty to mention. कब से पेंडिंग है? 2017 से। कोई स्टे है क्या? स्टे है नहीं भाई, 7 साल हो गए हैं, स्टे है नहीं। अभी भी बढ़वाना है, बढ़वा लीजिए सर, हमें क्या है? इसका आपको लास्ट टाइम बोला था कि इसका स्टेटस बताएंगे। क्या स्टेटस है सर? तो आप पिछले 12 तारीख को बोला था ना, आज 19 तारीख है ना, 7 दिन में तो आपने क्यों नहीं पता कराया? आपको पक्षकार तक को तो फोन नहीं लगाया है? क्यों नहीं कराया ये बताइए। मैं क्यों मुकदमे बढ़ाता रहूं? क्योंकि आपको घर में होमवर्क नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हमने आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी थी। इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, क्यों नहीं पता किया? For question of complaint, same person has filed these two 482. एक और 482 भी है? वाली भी तो पहले 2017 में फाइल हुई और फिर सेम प्रोसीडिंग को क्वैश करने के लिए 21 में फाइल हो गई। वाह। और फाइल्ड अगेंस्ट पिटीशन बिफोर द कोर्ट ऑफ। और पहली वाली क्या है? इसमें भी प्रोसीडिंग को चैलेंज करने के लिए ये कैसे मेंटेनेबल है सर? सेकंड वाली, सेकंड में कौन अपीयर हो रहा है? 2021 वाले में कौन अपीयर हो रहा है सर? ऐसा दत्त साहब से पूछो सर, ये दूसरी वाली कैसे मेंटेनेबल है? ठीक है। और ये कौन सी एफआईआर को, कौन सी कंप्लेंट पे इसको क्वैश करा रहे थे? दूसरे वाले में 4398। और पहला वाला कौन सा है? एक बार चेक कर लेने दीजिए ना, हो सकता है आपके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स हो। 4398 सेम है। और द सेकंड कंप्लेंट, सेकंड एप्लीकेशन इज मेंटेनेबल। और पहले में कौन अपीयर हो रहा है? आप नहीं है। आपकी कंप्लेंट, आपकी तो 482 गई ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन मेंटेनेबिलिटी। पहली वाली डिसमिस इन डिफॉल्ट, हो गया, काम खत्म। आप पूछ के आइएगा कि आपकी वाली 482 कैसे मेंटेनेबल है ना? तो 1:30 बजे से पहले बता दीजिएगा। ठीक, उनसे बता दीजिएगा कि 13026/17 इसी व्यक्ति के द्वारा उसी कंप्लेंट को क्वैश कराने की एक 482 पहले से पेंडिंग है, जो कि आज ही लगी हुई है 7 में। हाँ, तो कैसे मेंटेनेबल है ये बता दीजिएगा। ठीक, 1:30 बजे तक बता दीजिएगा, नहीं तो 1:30 बजे नॉट मेंटेनेबल करके निपटा देंगे। चलो, Item number 20, Shri R.B. Tiwari. There is an application for withdrawal of petition as he has been accused. 6887/2019. Madam, good name please. प्रार्थी गेलानी। MS प्राची? प्रार्थी गेलानी। प्रार्थी
Counsel for the applicant, Shri Dilip Parihar for the state, this heard on IA number 4861/2024 and application seeking permission to withdraw this application on the ground that the applicant has already been acquitted. Accordingly, this application is dismissed as withdrawn. (22) Shri Virendra Kumar Upadhyay. This is an application under section 482 of CRPC. 354 किस ग्राउंड के ऊपर पेश है? 22, sorry. Number 1 is mother-in-law, number 2 is father-in-law, number 3 is Father-in-law, and 4 is the applicant husband. 4th is husband. Husband. Sir. FIR is annexure. FIR is at annexure A1. It's start from page number 25. हर एलिगेशन में तो हर एक का नाम है. General allegations are being made. अच्छा, वो कार मांगना जनरल एलिगेशन है, गाली गलौज करना है जनरल एलिगेशन है, घर से निकाल के धमकी देना जनरल एलिगेशन है, इलाज ना कराना जनरल एलिगेशन है. This FIR has been lodged with a delay of 4 years, and on the counter blast of the section 9, I have filed with at Allahabad. That is at annexure. सेक्शन 9 से क्या होगा प्रतिभा वाली लाइट के जजमेंट के लाइट में? Lord has cleared that in a case of Pratibha. That is merits पे सर. I will withdraw. 49299/2022 Shri Aishwarya Sahu, counsel for applicant, Shri Baghel, counsel for the state. This application under section 482 of CRPC has been filed seeking the following relief. After arguing the matter at length, the counsel for the applicant seeks permission of this court to withdraw this application with liberty to raise all possible defenses which may be available to them in the trial. With the forced liberty, the application is dismissed as withdrawn. (23) Shri CS Pandit. 294, 323, 506. So in fact, I requested the complainant, they removed the bricks which were there, sir. They removed the Bricks, my lord, which bricks were there for construction of the house. On this, my lord, they have falsely lodged a complaint against the present applicant. Whether I can give a finding that the allegations are false? सर अगर नोटिस कर दें तो शायद कॉम्प्रोमाइज. अरे आप अभी होली आ रही है सर, एक हर्बल कलर खरीदना अच्छे वाले और पहुंच जाना. सर अगर आप जो एलिगेशंस हैं. अच्छा मुझे ये बताइए सर, होली का हम लोग को ये बताया था कि पुराने गिले शिकवे भी मिटाने का एक बहुत अच्छा त्योहार है, और एक आध किसी गाने में भी हमने सुना है.
FIR में है सर, इन रियलिटी नहीं है वहाँ के जो सर मैं cameras और आपकी हर बात को मानने को तैयार हूँ, पर मैं क्या फाइंडिंग दे सकता हूँ, बस ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मतलब 5 इन्वॉल्व हैं जिसके कारण कंप्लेंट कि हमारा घर बन रहा था। तो आपने कहा अपनी जमीन के ऊपर नहीं, घर के सामने रखे हुए थे सर। सरकारी जमीन थी, आपकी जमीन थी? ठीक घर के सामने वाले। आपकी जमीन तो नहीं थी, नहीं, हमारी जमीन पब्लिक प्लेस पे रखा था कि उनके घर पे रखा हुआ, उनकी जमीन पे रखा? उनकी जमीन पे नहीं, पब्लिक प्लेस पे रखा हुआ था। पब्लिक प्लेस पे रखने के लिए कॉर्पोरेशन से परमिशन की जरूरत होती है सर। आपको रोड के ऊपर या पब्लिक प्लेस के ऊपर अगर आपको बिल्डिंग मटेरियल डालना है, यू हैव टू पे सम फी एंड देन यू कैन बी ग्रांटेड परमिशन। 323/294 के लिए जब क्रैश पूरी नहीं हो रही है तो ठीक है, क्या है क्या सर, मैं 323 है, थप्पड़ ऊपर भी मारा है तो बन जाएगा भाई। सर ने तो एप्लीकेशन में यही कहा सर, FIR मैंने क्या है FIR में? मैं साईधाम कॉलोनी मनेगांव रांची पेज 13 पे है। मैं साईधाम कॉलोनी मनेगांव रांची में रहती हूँ। आज दिनांक 13/6/2022 के रात करीबन 10:30 बजे की बात है। मैं घर पे खाना खा रही थी तो उसी समय रहने दो, मत पढ़ो, क्योंकि ये बहुत आखिरी के 4-5 लाइनें तो बहुत ज्यादा सर्टिफिकेट दिए गए हैं एक कम्युनिटी को, एक फ्रेटर्निटी को। सर वो एक्चुअली वो है नहीं, बिकॉज द लॉयर I don't know. Let us not indulge in that. The law is I have to take the uncontroverted allegations as they are and then to come to a conclusion that offense is made. Yes. अब 323 is the most toughest to defend. Yes. 302 में भी आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकाल लोगे, पर वो कहता है कि थप्पड़ मारा, और 319 की जो हर्ट की डेफिनेशन है, अब यू कांट आस्क मी देयर इज नो कॉरोबोरेशन बाय द मेडिकल एविडेंस, कुछ नहीं है। कॉजिंग पेन इज आल्सो हर्ट। पर केस अदरवाइज मैं कह रहा हूं कि विदाउट रेजिंग एनी डाउट विद रिगार्ड टू द करेक्टनेस ऑफ योर सबमिशंस, कैन आई गिव अ फाइंडिंग व्हिच यू आर इंटेंडिंग और इनवाइटिंग फ्रॉम द कोर्ट? और इसीलिए उन्होंने वही ऑफेंस लगाया सर, जिसको बहुत आसानी से लगाया जा सकता है, जिसको ये भी हो सकता है कि उसने वही उतना ही एलिगेशन लगाया है कि जितना सही था। सर देखिए, मैं आपसे ऐसा हुआ ही नहीं सर। पंडित साहब पंडित साहब प्लीज, आपसे इतनी रिक्वेस्ट है that I am not raising any doubt on the correctness of the submissions which you are making. So just don't misunderstand that. My question is whether I can give that finding at this stage or not. Please enlighten me on that. The FIR is speaking of offense then. So I can't now. Then what I can do? Then I will withdraw it with the liberty to raise all these grounds. 5123/2022, Shri has funded counsel for petitioner Shri Baghel for the respondent. This application under section 482 of CRPC has been filed seeking the following relief. After arguing the matter at length, the counsel for the applicant seeks permission of this court to withdraw this application with the liberty to raise all possible defenses which may be available to the applicant in the trial with the force of liberty. The application is dismissed as withdrawn. 323 सबसे टफ ऑफेंस है टू डिफेंड इन IPC। थप्पड़ खाने वाला कहता है कि मुझे थप्पड़ पड़ा। अब आप उस बात को कहीं से भी कोरिलेट नहीं कर सकते क्योंकि मेडिकल एविडेंस उसका होगा नहीं, और 319 की जो डेफिनेशन है कॉजिंग अ पेन, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। वो एक अलग बात है, मैं जनरल बात कह रहा हूं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफेंड अ केस अंडर 323। वो तो एक अलग केस के फैक्ट्स की अलग बात हो सकती है। जी सर। 24 श्री सत्यम अग्रवाल। This is an application under section 407 of CRPC for transfer of case from Satna to Bhopal.
Orally, I'm submitting to any other place. Any other court? Here to any other. Jhabua? If it is convenient to respond for it. I don't know. What my request is, What are the grounds? In fact, what happened, matter was fixed for conciliation, we appeared. Physical assault is being made, in that circumstances, I have submitted my written submissions to the to the counselor there, in Mayer. क्या हुआ? Made representation also with regard to that. बताइए वो कहाँ है सर represent? But kindly see annexure A1 is a written, A2 is a written submission, which I have required to make to the counselor in Satna. Page number. Did you ever make any complaint to the judge concerned कि सर देखिए मेरे साथ आज हुआ है? Reconciliation तो कोर्ट के ऑर्डर से हुआ होगा? Yes, sir. Did you approach the concerning judge कि सर लिखिए आपके ऑर्डर से मैं आज यहाँ पे आया and I was misbehaved? But in fact, on that day we are required to rush from the court. In fact, we subsequently made a representation to police department, that is find on page number 22. अच्छा सर, ये काउंसलर का एक्नॉलेजमेंट कहाँ है सर? एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट आपकी मारपीट के बारे में। और ये जो पुलिस ऑफिसर्स को आपने दिया है उसकी पावती कहाँ है? अच्छा, एक पावती है। काउंसलर की कहाँ है सर फाइंडिंग्स? अच्छा, ये जो काउंसलर को आपकी एप्लीकेशन है इसमें मारपीट का एलिगेशन कहाँ है? कोई बात नहीं, बताओ राइटिंग में कहाँ है? That is why we have submitted our written submissions to the counselor. This is a. I don't know, sir. आपने ये कहाँ लिखा है कि चूंकि मेरे साथ मारपीट हुई थी मैं सुरक्षित नहीं हूँ इसलिए मैं लिखित सबमिशंस दे रहा हूँ? सर आप बताओगे तो सही ना कि क्यों आपने राइटिंग में दे रहे हो, क्यों पर्सनली अपीयर नहीं हो रहे हो? आपने आज 16/4 को बुलाया, मैं लिखित कथन दे रहा हूँ। आपकी मारपीट कब हुई? When the matter was fixed for conciliation. on 16/4 को? 16/4. अच्छी बात है, तो मतलब 16/4 को आप गए, वहाँ आपकी मारपीट हुई, फिर आपने जाके वहाँ पे रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स बनाए? रिटर्न आर्ग्यूमेंट तो बाद में मैंने उनको भेजे हैं। That's what my submission is. भाई साहब आप पढ़ो, आप ओपनिंग वर्ड्स पढ़िए ना। आज दिनांक 16/4 को बुलाया है, अतएव मैं लिखित कथन कोई दस्तावेज के साथ प्रस्तुत। क्या मतलब हुआ इसका कि आज बुलाया है तो मैं आपका रिटर्न सबमिशन दे रहा हूँ? आपने उस दिन बुलाया था परंतु मेरे साथ मारपीट हुई, मैं आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया, तब मैं आज आपको भी दे रहा हूँ। ऐसा लिखा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। What is there for me to draw an inference that you were manhandled by the opposite party on 16th? In fact, fact remains that matrimonial dispute is there and there is a fair marriage to be there in before. There is a fair marriage. Fair has to be a reasonable one. Reasonable fair marriage. Yes. What is there to for me to draw an inference that your fear is not a product of fear psychosis, but it is a reasonable and real fear? Since one incident has been taken place. कहाँ है वो incident? But that incident is by way of a representation that is. कहाँ लिखा representation? नहीं, वो जो उसमें तो we have submitted a लिखित कथन मारे। आप बताइए ना सर, वहाँ पे लिखित कथन में आप लिखोगे नहीं सर कि भाई मैं क्यों नहीं आया हूँ, मैं आपके पास आया था, मेरे साथ बदतमीजी हुई, मेरे साथ मारपीट हुई, मैं भाग के गया, फिर भी मैं अपना डिफेंस आपको बता रहा हूँ। That is not. It is not there in the. Which is. Is there anything to indicate कि साहब क्यों उस दिन मैन हैंडलिंग हुई है? What confirmation is married? In fact, what? मैं आप ही के फायदे की बात ढूंढ रहा हूँ। If you can point out anything from your application or written submissions that which may help me out to draw an inference that you are manhandled, मैं आप ही के लिए पूछ रहा हूँ। In fact, जो last word है वो यही है कि which are effectively we have already preferred an application suit under section 12
before Bhopal court that is pending there. हाँ तो वो क्या करेगा सर? Pardon, sir? काउंसलर क्या करेगा सेक्शन 12 का? नहीं, we have submitted our. हाँ, नो डिफिकल्टी सर. यहाँ पे 407 की एप्लीकेशन है सर. लेट अस कन्फाइन अवरसेल्फ टू दैट ओनली. अब आप ये बताइए कि जो आपने पुलिस को रिपोर्ट दी है जी, उसमें कहाँ लिखा है कि 16/4 को साथ आपके साथ मारपीट हुई? पैरा नंबर 18 पे आ जाइए. आप कह रहे थे मारपीट हुई, आप तो वहां से खिसक लिए थे, ऐसा उसने लिखा है. लड़का 2 वकीलों को साथ लेकर मैहर गया. तभी दोपहर 2 बजे लड़की का भाई 30-40 कांग्रेसी गुंडे बदमाशों, 3-4 स्थानीय नेताओं और 3 वकीलों को लेकर आया. विपिन सिंह इनका नेतृत्व कर रहा था. लड़की उसी कार में थाने में आई थी. अच्छा, एक कार में 40 गुंडे, 3-4 स्थानीय नेता और 3 वकील और एक लड़की, तो 40 + 4 44 और 3 47 और एक 48. ऐसी कौन सी कार है जिसमें 48 लोग आ गए? उन्हें देखकर चुपके से वहां से निकल गया क्योंकि लड़की का भाई मेरे को चांस है. सेल्फ कंसीव्ड नोशंस हैं. But this is a situation which. I don't know, sir. You said that you were manhandled. Even to the police, you have not made an allegation that you were manhandled. Because of this only we could not. अरे छोड़ो, कुछ नहीं, nothing. 52319/2022. This application under section 407 of CRPC has been filed for transfer of criminal case of क्या नंबर क्या है सर? This is 125 matter, that is annexure A1 is the document. Annexure A1 is the document. For transfer of application filed by the respondent under section 125 of CRPC pending in the court of GMFC Mayor District Satna to any other court in the state of Madhya Pradesh. It is submitted by counsel for the applicant that on 16/4/2023, the case was fixed for reconciliation purposes. When the applicant appeared before went there to mark his appearance before the counselor, then he was manhandled. And accordingly, he has an apprehension, 2022, he has an apprehension that his life is in danger. And accordingly, it is prayed that the application filed by the respondent under section 125 of CRPC may be transferred to any other court situated within the state of Madhya Pradesh. Had the learned counsel for the petitioner. The primary ground for seeking transfer from the court of JMC Maihar is that on 16/4/2022, the applicant was manhandled. Accordingly, the counsel for the applicant was directed to point out from the documents to show that he was actually manhandled. The applicant has filed a written submission to the counselor, and in the said written submission, it is nowhere mentioned that he was manhandled and therefore he is unable to appear before him personally. Even the factum of manhandling on 16/4/2022 is not mentioned at all in his written submissions to the counselor. Furthermore, the mother of the applicant has made an application of the complaint to CM, Home Minister, Chairman, National Women Commission, Human Rights Commission, ACS Home Minister, DGP PHQ Bhopal, alleging that on 16th of April 2022, her son, bracket mein applicant, went to Maihar
where the respondent went to Maihar along with his two advocates. At about 2 p.m., the brother of the respondent, along with 30 to 40 Congressy goons and 3 to 4 local leaders and 3 lawyers came. The girl had also come in the same car, had also come to the police station in the car. After looking at them, the applicant quietly went away because the brother of the respondent wanted to kill her son. However, the counselor returned the documents as well as the letters and instructed that the next date of appearance is 7th of May. Thus, the contention made by counsel for the petitioner applicant that he was manhandled on 16/4/2022 at Maihar is perceived false. Furthermore, the reconciliation proceedings were organized inside the police station, as it is evident from paragraph 18 of the complaint made to the different authorities. If there was if the applicant was manhandled, then he could have immediately lodged a report to the police. Nothing of that sort was done. Even in paragraph 18 of the application, it is merely mentioned that since the girl had come along with various persons, therefore, the applicant quietly went away. Thus, the apprehension expressed by the mother of the applicant that the brother of the girl wanted to kill the applicant is misconceived and self-conceived notion having no legs to stand. A case cannot be transferred only at the whims and wishes of the parties, unless and until there is some reasonable apprehension in the mind of the contesting litigant so that they may not get justice. Only then the case should be transferred. In the present case, no case is made out. However, if the facts and circumstances of the case are considered, then it is clear that no case is made out warranting transfer of the application filed under section 125 of CRPC. Furthermore, the reconciliation proceedings were to take place on account of the complaint made by the respondent before the Parivar Paramarsh Kendra Police Station, Maihar District, Satna. And there is no allegation that during the pendency of the proceedings under section 125 of CRPC, the applicant was ever manhandled. Even there is no averment that the applicant has marred his appearance in the proceedings under section 125 of CRPC. Considering the totality of the facts and circumstances of the case, this court is of considered opinion that no case is made out warranting interference. The application fails and is hereby dismissed. 25, Sri Ghanshyam Pandey. Yes, sir. I'm requesting for passable also. Pass. 26, Yes, sir. This is a 42 petition against the order of dismissal of section 91 application manual. So, what is it a complaint case or police case, sir? It is a complaint case, my lord. When the section 91 application was filed? 138, there is a case of 138 NIA. NIA, right? In this case, my lord, applicant and respondent both are the real brother, and they have run a partnership firm. And the said documents is a family settlement. So, what are the reasons for rejection? Kindly see the next A2.
Page number 13. परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध रुपए 40 लाख रुपए की राशि के चेक क्रमांक सो एंड सो के अनादरण के संबंध में परिवाद प्रस्तुत किया गया, जो बचाव साक्ष्य प्रक्रम पर लंबित है। न्याय दृष्टांत सो एंड सो में प्रतिपादित सिद्धांतों अनुसार धारा 91 की शक्ति न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर है, जिसके संबंध में आदेश तभी प्रदान किया जाना चाहिए जब आवेदक द्वारा दस्तावेजों के संबंध में आवश्यकता एवं वांछनीयता दर्शित की जाए। सर, दो चीजों पे खारिज हुआ है। Number one, your previous application, first application was already rejected. Number two, it has nothing to do with the controversy in the question. That application was 65 of Indian Evidence Act. उसको I don't know. सेकेंडरी एविडेंस के लिए हमने कराने के लिए आवेदन दिया हुआ था। वो आवेदन वर्णित दस्तावेज के संबंध में पूर्व आवेदन अस्वीकार हो चुका है। जी। This is what it has been mentioned. Whatever it is, whatever it is. ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये पोजीशन में है रिस्पोंडेंट हमारे। वो डॉक्यूमेंट कौन सा है सर आपके पास जो फोटो कॉपी है? वो डॉक्यूमेंट माय लॉर्ड इन एडिशनल डॉक्यूमेंट काइंडली सी। एडिशनल डॉक्यूमेंट इज 4810 पेज नंबर 22। दैट इज द फैमिली सेटलमेंट डॉक्यूमेंट। सर इसका तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। This is the partition in present time. It is not an acknowledgement of partition. अगर इसको मान भी लें, suppose, how it can be admitted? But my submission is made कि both are they are partner in the registered firm. हाँ। ये कंप्लेंट जो इन्होंने फाइल की उसमें भी इन्होंने इस बात को बिल्कुल ठीक है सर जी। और इसमें दोनों एक साथ ही बिजनेस करते थे। सर जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जिस डॉक्यूमेंट को आप रिलाई करना चाहते हैं, इज इट नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ पार्टीशन इन प्रेजेंट टाइम रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन? I want to show these documents only on the basis of whether it can be looked into in absence of registration. ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ पार्टीशन नहीं है, आज ऐसा कर दिया गया है। इट इज अ पार्टीशन इन प्रेजेंट टाइम व्हिच रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। फिर क्या करेंगे? I-841/2024. This application under section 482 of CRPC has been filed against the order dated 3/10/2023 passed by GMFC Damo in SCNIA number 199/2017, by which the application filed by the applicant under section 91 of CRPC was dismissed, as well as against the order dated 22nd of January 2024 passed by First Additional Session Judge Damo in Criminal Revision number 59/2023, by which the revision filed by the applicant has been dismissed. Applicant against the order dated 3/10/2023 passed by the trial court has been dismissed. ये 310 है कि 2310 है? ये रिवीजन कौन सी है सर? 5/23 रिवीजन में 310 लिखा है, इम्प्यून ऑर्डर का और डेट, और ऑर्डर पे इम्प्यून ऑर्डर पे 23/10 लिखा है। सही डेट क्या है? 23/10 ही होनी चाहिए। 2 जनवरी 2024। इसका फर्स्ट पैराग्राफ देखो, has been filed against the order dated 3/10/23 और A2 जो है उसमें 23/10/23 लिखा है। तो 3/10/23 ब्रैकेट में it appears that the date 23/10/23 has been wrongly mentioned as 3/10/23 bracket close, has also been dismissed. It is submitted by counsel for the applicant that the applicant is facing trial for offence under section 138 of Negotiable Instruments Act. A family settlement had taken place, and original copy of the said family settlement is in possession of the respondent, whereas the applicant is in possession of only photocopy of the said document. Earlier, he had filed an application for leading secondary evidence
However, the said application was rejected. Now he has filed an application under section 91 of CRPC for production of the original copy of settlement. However, by the impugned order, it has been rejected. It is submitted that it is incorrect to say that the family settlement has nothing to do with the check in question. Consider the submissions made by counsel for the applicant. The applicant has filed a copy of the family settlement, which is a partition in present time, and it is not an acknowledgement of partition. Sister. ये कितने का चेक है सर? 40 लाख। 40 लाख। ये कब हुआ था सेटलमेंट? इसकी तारीख क्या है? 5/2016। चेक की तारीख क्या है? दस 17। 1/5/16 का जो चेक जो 50 लाख देने थे आपको वापस नहीं करने पड़ेंगे, ये चेक तो बहुत बात का है। साहब मेरे फिर आपने फिर 1.5 साल के बाद चेक क्यों इशू किया? ये तो आपका डिफेंस है। और कहाँ लिखा है कि इसमें पार्टीशन में कि उनके पास आपके साइंड चेक रखे हुए हैं? नोटिस का जो रिप्लाई दिया हमने उसके भी वो तो यही जवाब आता है, हर एक में यही आता है, मेरा साइन वाला चोरी हो गया था, सड़क पे गिर गया था, मैंने आपको दे रखा था। आप में से कोई भी इंक्लूडिंग माई सेल्फ ये बता दे कि हम लोग ब्लैंक चेक साइन करके रखते हैं। हम तो नहीं रखते कभी भी। बिजनेस पर्पस में तो आप झेलो फिर बिजनेस पर्पस में। डिफेंस Furthermore, it is submitted by counsel for the applicant that family settlement took place on 1 तारीख क्या है सर? 1/5/2016। 1/5/2016. Whereas, according to the complainant, the check in dispute was issued on 6/7/2017. That is after 1 year and 2 months. Therefore, the trial court did not commit any mistake to hold that even otherwise this family settlement has nothing to do with the controversy involved in proceedings under section 138 of Negotiable Instruments Act. Since the documents sought by the applicant was not relevant, it is also not a registered partition deed. No jurisdiction error was committed by the trial court by rejecting the application. Accordingly, the orders dated so and so are hereby affirmed. The application fails and is hereby dismissed. बस साहब आपकी जो एक 482 लगी है उसी आदमी ने दोनों फाइलें दे दो, कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है हमसे गलती हो गई हो। अरे क्रॉस चेक करने में कोई बुराई नहीं है। मैंने भी देखा उसको, है ना? तो आपकी that your 482 is subsequent in time. Mine So that will go. That would go. The earlier one would continue. Earlier one would survive. और उसमें कोई आ नहीं रहा है। आ जाएगा सर। कौन आ जाएगा? चलो सेकंड वाले को तो कर दो, 10 वाले को कर दो। श्री मनीष द सीनियर एडवोकेट विद श्री शुभम मिश्रा काउंसिल फॉर पिटिशनर, श्री दिलीप परिहार काउंसिल फॉर द स्टेट. This application under section 482 of CRPC has been filed for quashment of a complaint case number so and so. It appears that the applicant has already
filed a similar application under 482 for quashment of the criminal complaint which has been registered as MCRC number so and so जो उसके साथ है. Since the second application for the similar relief is not maintainable, therefore this application is dismissed as not maintainable. उस वाले को पास ओवर कर दो, देख लेते हैं उसमें क्या पहले वाले. कर देते हैं. I would intimate the conflict of interest that matter. Yes, some person. उसमें ऐसा करना, दूसरे वाले पहले वाले में लिखो श्री शुभम मिश्रा काउंसिल फॉर एप्लीकेंट इट इज सबमिटेड टुडे बाय अ सेपरेट ऑर्डर पास्ड इन. दूसरी वाले में दिस कोर्ट हैज dismiss MCRC number so and so on the ground of maintainability because during the pendency of this application MCRC number so and so has been filed for the similar reliefs. Since the counsel who has filed the present application is not present, therefore Shri Shubham Mishra prays for a day's time to intimate the applicant and to seek instructions. Full stop. Accordingly, the case is adjourned. List day after tomorrow. जी सर. 7 नंबर कौन से नंबर में? 27 पे. हमने क्या ऑर्डर कर दिया था? करने के लिए तो लिंक नहीं हुए थे. नहीं कोई लिंक नहीं. कौन से वाले केस में है? 27 नंबर. हाँ 8088. इसमें कोई लिंक का ऑर्डर ही नहीं है. इसमें नहीं है, दूसरे केसेस है, 5 केसेस फाइल. अच्छी दफा है. आप यू आर अपेयरिंग फॉर द एप्लीकेंट. हाँ आज से फाइल फाइल करो. नोटिस भी इशू हो चुके हैं इस केस. तो ये कौन सा केस है सर जिसको आपने लिंक करवाया था दूसरे केसेस के साथ? ये 4 लोगों ने फाइल की अलग-अलग पिटीशन. 8088/2024, Shri Sanjay Sarvate, counsel for the applicant. It is submitted by Shri Sarvate that today he will be filing his wakalatnama on behalf of the applicant and submitted that this court by order dated 6/3/2024 has directed to and submitted that this case may be taken up for an analogous hearing along with the connected applications filed by the co-accused persons. Accordingly, at the request of counsel for applicant, list this case on परसों की होली के बाद. अरे फिर शुक्रवार को फिर आप लोग काम करोगे immediately after holy vacation of 2025. 24. ठीक है. Immediately after holy vacation, along with the MCRC number 9632/24 and 1688 of 2022. हम बस इतना ही देख रहे थे कि बढ़ने के बाद भी आप अटेंटिव हो कि नहीं. आपके यहाँ तो ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ जाता. क्यों? पता नहीं कब 2 साल के लिए बढ़ जाए केस, ऐसा है क्या? नहीं. Item number 130, Sri Rajesh Pancholi, MS Sanjana Sahani. But only typographical error. क्या हो गया सर? कौन सा हो गया टाइपोग्राफी? सर तहसीलदार की जगह एसडीओ लिखा गया. फर्स्ट कहाँ किस पैराग्राफ में सर? पैरा 6 में सर. इंटरनल पेज 12. पैरा 6 पेज 12. मैं चेक कर लूंगा सर. क्योंकि सर इसमें एसडीओ का ऑर्डर चैलेंज ही नहीं हुआ था और तहसीलदार का ऑर्डर आपने क्वैश कर दिया था. मैं कर लूंगा. वो डिमार्केशन रिपोर्ट भी तहसीलदार ने अप्रूव करी थी. ओके. अच्छा.
131. Three Manu V. John. So we need advance copy supply की. ओके, तो आप Reply short time within 6691/20. This matter, I'm not seeking any particular challenge to any, but I'm just only seeking that my appeal may be decided on that has already been filed. कब फाइल की है सर? And I should P3 basically. That is at page number 1. 12 फरवरी 24 को तो फाइल हुई है. Yes, ma'am. फिर अभी कौन सा डिले हो गया सर? तो सर देखिए, देयर आर टू जजमेंट्स by the Supreme Court. One is Gopala Krishna, where in which it has been held that the Superior Court should not pass the order for expediting the cases in a casual manner. और अभी recently आया है वो that High Court Bar Association Allahabad, in which it has been held that the Superior Court should not give directions to the subordinate to the district judiciary. वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी वर्ड आया है, वो जो एशियन रिसर्फेसिंग वाला जो था ना, ऑटोमेटिक वेकेशन, उसमें भी ऑर्डर आया है कि भाई शुड नॉट बी पास. हमें कोई डेट ही नहीं. मेरे भाई वो तो ठीक है, अभी 12 फरवरी की तो फाइलिंग है. एक्चुअली क्या हमारा पूरा बैंक अकाउंट सीज, हम 6 महीने पे डायरेक्शन दे देते, 6 महीने के अंदर हो जाए. हमें स्टे पे सुनने, क्योंकि क्या इन्होंने हमें वो कर दिया है, पूरा बैंक अकाउंट सीज कर दिया. अभी एक भी हियरिंग नहीं हुई है. बस स्टे पे तो सुन लो भाई, इंस्ट्रक्शन दे देते हैं. क्या करना, हम तो कह देते हैं कि अगर स्टे पे नहीं सुनना है तो सुन लो, अगर सुन लिया है तो ऑर्डर पास कर दो. अगर ऑर्डर भी पास हो गया है तो इस ऑर्डर को कुछ मत करो, इस ऑर्डर को, है ना. 6691/2024. This petition under Article 226 of Constitution. आपकी क्या कंडोनेशन और डिले वगैरह भी है क्या? तो जब तक डिले कंडोन नहीं होगा, स्टे कहाँ से हो जाएगा? साथ में लगाई उसी के साथ. तो भाई साहब, सबसे पहले तो कंडोनेशन ऑफ डिले के ऊपर ऑर्डर होगा. स्टे का मैं डायरेक्शन कैसे दे दूं? स्टे एप्लीकेशन और दोनों सुनने वाले साथ. कैसे दोनों सुनने का? अनलेस एंड अनटिल द डिले इज कंट्रोल. सपोज आपकी कंडोनेशन और डिले की एप्लीकेशन ही खारिज हो गई, फिर whether we can say that in absence of condonation of delay there is an appeal in the eye of law. 6691/2024. This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. At the outset, the counsel for petitioner confined his arguments to the appeal filed by him before. Annexure कौन सी थी सर? Employee state insurance. नहीं, annexure P3. Before before appellate authority, Employee State Insurance Corporation Indore. It appears that the petitioner has filed an appeal on 12th of February 2024 against the orders dated 22/9/2019 and 5/5/2017, passed under Section 45A of Employee State Insurance Act 1948, along with an application for condonation of delay. The only grievance of the petitioner is that even the case has not been taken up for preliminary hearing. Accordingly, without disturbing the calendar of the board of the appellate authority, it is directed that the appellate authority shall take up the matter for preliminary hearing as early as possible without any unnecessary delay. With the aforesaid observation, the petition is finally disposed of. 132. Three Pankaj Dubey. जी है सर. Bring for adjournment. क्यों सर? Petitioner senior counsel में engage करना चाहता हूँ. हाँ तो फिर बिल्कुल कर लेना था सर. पेश क्यों की सर? फिर बढ़वाने के लिए सीनियर काउंसिल का नाम बदनाम मत करो भाई. मुकदमा क्या है, सीधी बात बताओ. तो जब तक हम इनको पुराना, अभी आपने देखा ना, अभी तो आपने देखा ना कि सर एक बार भी सुनवाई नहीं हो रही है. अभी सुना ना आपने,
और यहाँ कहते सर एक बार सुनवाई कर क्यों रहे हो? ये जबलपुर में ये कौन सा टेंडेंसी है कि सब पहली बार लगा है तो इसलिए मत सुनो? तो प्लीज आर्ग्यू इट। आप तो तैयार है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप, मैं देख रहा था आप पूरा पढ़ रहे थे, पूरा ध्यान आपका फाइल के ऊपर था। बता दो ना। फिर आप फाइल को किया आपने, फाइल कर दी और फिर कह रहे हो कि आर्ग्यू नहीं कर सकते। इनका कहना है कि दे वांट टू एंगेज सीनियर। तो फिर तो ठीक है भाई, आई एम नॉट सपोज टू गिव अ डेट ऑन द सर, you could not get a date from a senior advocate of your choice, right? This is what you have said. Of course you could not get a date of availability from a senior counsel of your choice, so you want that I should adjourn the matter. Wait, no sir, sorry, एडवोकेट्स की कन्वीनियंस के लिए हम मुकदमों को पेंडिंग रखें, क्योंकि पक्षकार डे 1 पे भी बहस करने को तैयार नहीं। फिर नहीं सर, आई एम नॉट गोइंग टू एडजर्न इट। नहीं, 2:15 पास हो नहीं, 2:15 से। इफ यू आर रेडी टू आर्ग्यू आफ्टर 2:15, ठीक है, नहीं तो जो करना अभी कर दो। आई विल नॉट एडजर्न।
Item number 132, Sri Pankaj Dubey. Issue is pertaining to allotment of land by the Krishi Upaj Mandi, that is the contesting party. But Krishi Upaj Mandi allots small or big pieces of land for the purpose of construction of godowns or shops, as the case may be, as per the requirement of the bidders. I participated in that I was H1. Thereafter, in 2021, this happened. 2021, before this tender could take place, a complaint came by one of the persons saying that there are certain infirmities that was inquired into. Post inquiry, the matter proceeded. After I was granted, H1, thereafter another inquiry took place, a 3-member inquiry committee inquired into the matter. That report also came in the favor of the authorities that the tender process is correct. Now, in 2024, this year, after almost more than 3 years, the influent order at 2/1/2024, 2nd of January. Now, the highest authority, which is the MD, he passes an order mentioning about some inquiry. There is no inquiry date, there is no name of the authority, that which authority did conduct the inquiry, and ignoring the 2 inquiry reports, which I have filed, I received through the RTI. Yes, sir. They say, my lord, that the advertisement was not done in the required manner. If now, my lord, may kindly appreciate the rule, my lord. I'll supply the rule, though I have it reproduced it, but I'll supply. If rule 9(1), my lord, will kindly be appreciated. Under what circumstances, my lord, the bid can be or the tender can be cancelled. 9(1), my lord, would find at running page number 272, my lord. It's an extract of a book, my lord. If I am clear on that, my lord. Rule 9(1), 9(2). Am I clear? It says, my lord, acceptance of bid and offer. A meeting of the market committee shall be called within 10 days of the conclusion of the auction, scrutiny of offers, for taking a decision in the matter. The market committee shall give sanction for the highest bid offer only if the same is below the upset price. Otherwise, it shall be rejected. So, my humble prayer here at this stage is that, my lord, it is only one condition under the rules, that if the bid is below the upset price, it should be cancelled. Now, my bid is there, my lord, before my lord, which I filed. That is above the upset price. My lord, would find, my lord, these are the proceedings dated 10/8/2021. My lord would find it at page number 38, my lord, if I am not wrong. Yes, sir. My lord, annexure से बताता हूँ P6, my lord. आपको उससे देखिए. P6 का, my lord, तीसरा पेज. जी, sir. Once I am clear on जी, जी, जी. इसमें देखेंगे, my lord, जो पहला वाला है, पहला वाला जो प्रॉपर्टी है, दिस इज G129/1, गोदाम निर्माण हेतु. इसमें जो सेकंड नंबर पे मैं हूँ, my lord, फर्म विधान एंटरप्राइजेस. दिस इज above the upset price, my lord. Upset price is there, my lord, 4,03,20. I am 4,05,000. So here, my lord, what I am humbly submitting, my lord, it is only the upset price. Now, my lord, I take, my lord, to the 2 inquiry reports, my lord, which are there. The first inquiry report is, my lord, before the tender could take place, my lord, and at the time when the complaint was made, and the complainant was also satisfied with that, yes. Now, the first inquiry report has page, it's at annexure P8, my lord, page number 42. If now, my lord, may kindly appreciate para number 5, my lord. Yes, sir. शिकायत का
हमें करेक्ट हम्म। शिकायतकर्ता उस्मानी का यह आरोप है कि निविदा विज्ञप्ति का कोई भी प्रचार प्रसार नहीं किया गया, न ही मंडी कार्यालय में इस निविदा का कोई प्रदर्शन भी किया गया। निराधार एवं भ्रामक है क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायती पत्र मंडी कार्यालय में दिनांक 28/7/21 को प्रस्तुत किया गया। शिकायती पत्र के साथ निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित भारत समाचार इतने 13/7/21 की छायाप्रति संलग्न कर प्रस्तुत की गई है, जबकि भूखंडों की निविदा प्रदाय करने की तिथि की दिनांक 30/7/2021 तक पर्याप्त समय था। इससे यह पूर्णतः प्रमाणित होता है कि शिकायतकर्ता को निविदा प्रपत्र की पूर्व से सूचना थी तथा निविदा की कार्यवाही की सूचना समस्त व्यापारी एवं व्यक्तियों के संज्ञान में थी। यदि शिकायतकर्ता लक्षित भूखंडों एवं संरचना के आवंटन की प्रतिपूर्ति करता तो शिकायत न कर मंडी समिति में आवेदन जमा कर निविदा प्रपत्र क्रियाकर्ता एवं निविदा प्रक्रिया में भाग लेता, किंतु शिकायतकर्ता निविदा प्रक्रिया को बाधित करने हेतु मंडी समिति के कार्य को अवरुद्ध करने का प्रयास समझिएगा। एंड देन my lord, the entire thing is done and then the report is there. Now this another report is there, my lord. This is a 3-member committee report, which my lord may kindly find it at page number. It is annexure P17 at page number 66. Yes. Page number 67, my lord. The unnumbered last paragraph. मंडी समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के आधार पर 24 नग भूखंड आवंटन हेतु 54 निविदाएं प्राप्त हुई, जो गठित निविदा उप समिति जो कि भार साधक अधिकारी मंडी समिति जबलपुर अध्यक्ष तथा मंडी सचिव एवं कार्यपालन यंत्रित तकनीकी संभाग के प्रतिनिधि की सदस्यता में खोली गई। भू आवंटन नियम 2009 में दिए गए शर्त अनुसार 4 समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया गया, जो प्रचार प्रसार समिति की स्थिति को स्पष्ट करता है। भूखंड मंडी समिति के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को ही प्रदाय किए जाने का प्रावधान था। निविदाएं 4 समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई तथा 54 निविदाएं प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता पूर्व में भी जांच अधिकारियों के समक्ष अपने कथनों में टेंडर प्रक्रिया का सही ढंग से संचालन करने से संतुष्ट होते हुए एवं प्रशासनिक अधिकारी भार साधक श्री मनेन्द्र सिंह फलाफला, श्री नमा शिवास फलाफला, कलेक्टर प्रतिनिधि एवं श्री यादव सहायक यंत्री तथा श्री संयाम सेक्रेटरी की उपस्थिति में टेंडर प्रक्रिया पूर्ण की, जिससे मेरी शंका का समाधान होने संबंधी कथन प्रस्तुत किया गया। समाधान हो गया था उसकी शिकायत में प्रस्तुत किया गया, जिससे अभिकथन एवं की गई कार्यवाही संबंधी अभिलेखों की छायाप्रतियां पूर्व मुख्यालय की ओर प्रेषित की जा चुकी हैं। प्रकरण के संबंध में तत्समय कार्यपालन यंत्री तकनीकी संभाग जबलपुर का भी अभिमत लिया गया, जिसमें उनके द्वारा भूखंड नीलामी कार्यवाही संबंधी कोई तकनीकी वैज्ञानिक अनियमितता परिलक्षित नहीं की टिप दी गई है तथा आंचलिक कार्यालय जबलपुर के दिनांक 15/7/2022 के द्वारा तत्कालीन उप संचालक मंडी बोर्ड एवं कार्यपालन यंत्री तकनीकी संभाग जबलपुर द्वारा प्रतिवेदन में स्पष्ट अंकित किया गया है कि मंडी समिति जबलपुर में भूमि संरचना आवंटन नियम 2009 के भूखंड आवंटन की कार्यवाही को की गई वो उचित है का निष्कर्ष किया गया है। उपरोक्त अभिलेखीय आधार पर मंडी समिति जबलपुर द्वारा भूखंड आवंटन संबंध की कार्यवाही उचित प्रतीत होती है। Yes. If now, my lord, may kindly see annexure P1 just for one moment, my lord. No inquiry report has been mentioned. They say the MD says that some inquiry has been done, whereas, my lord, these are the 2 inquiry reports which I could obtain, my lord, and file it in the records of the case, my lord, which are in my favor, my lord. In my favor or in favor of the agency who had conducted the tender. I am one part of it, being a bidder of it, my lord. I could with all the dues, my lord, arrange for all the establishments for my further program of construction, my lord. And thereafter, my lord, after 3 years, this order comes, my lord, before us that it is cancelled. Some Agnihotri was there, my lord. He was also participating, and because his role, that Mr. Agnihotri's role in some other matter has been found to be not correct or not as per the laws, because he was involved in some part of this tender
मतलब it is stated that he has. Sir, Agnihotri is not before us, sir. So let us not consider that whether he was rightly kept away or not. जी, इन्होंने लिखा है अपने order. Ah, forget about that, sir. He's not before us. जी, so that was my case, my lord, and I have also filed the document showing the circulation, my lord, that is not in question. It was published in 4 newspapers. Sir, आपके यहाँ कौन-कौन से पेपर आते हैं? Honest answers. I want an honest answer, sir. मेरे घर में मतलब I take दैनिक भास्कर, इतवार, पत्रिका. ये चारों में से एक भी नहीं आता. इधर नहीं आते. भिंड नाइट तो मैंने जबलपुर में कभी सुना ही नहीं. होगा. P16 में kindly be just. अरे होगा, पर सुना ही नहीं है. देखने की तो बातें छोड़ दीजिए. उसमें 5-2. मैंने तो पंकज दुबे जी से पूछा and I am happy that Dubey ji had accepted my request and he honestly answered. सर आप P16 एक बार. तो मैंने देखा मैंने. सरकारी दस्तावेज है मालूम, ये भी सेक्रेटरी का भेजा हुआ जेडी को है जिस पर उनको कुछ देखा मैंने सर. तो ना तो हितवाद में, ना ही दैनिक भास्कर में, ना ही पत्रिका में. But he got satisfied. He. अरे सेटिस्फेक्शन तो ठीक है. अब नाम असल में हमने डिस्क्लोज कर दिया ना, नहीं तो हम और 2-3 एडवोकेट से भी पूछते कि भैया आपके यहाँ कौन सा आता है. एडवोकेट्स क्या आते हैं, ये अपनी जगह ठीक है मालूम, बट जो अपनी जगह ठीक नहीं है. यही दिस इज द बेसिक ग्राउंड फॉर कैंसलेशन ऑफ द एंटायर प्रोसीडिंग्स. कोई इंक्वायरी रिपोर्ट का हवाला दे देते मालूम, तो हम पढ़ लेते उसको कि उसमें क्या कहते. अरे तो हम तो आपसे हमने तो पूछा था आपसे, आपने ऑनेस्ट आंसर दिया, इसलिए हम आपके उस आंसर को आई विल नॉट मेक इट अ पार्ट ऑफ द ऑर्डर. बट हाउ, मतलब क्वेश्चन टू माय सेल्फ, हाउ कुड द एमडी ट्रांसपायर विदाउट रेफरिंग. ऑफ कोर्स सर, एमडी को नहीं पता है कि दैनिक यहाँ पे कौन से पेपर बढ़ते हैं. तो एमडी भोपाल में जो है वो ये कह देते कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट में अमुक व्यक्ति ने इतनी तारीख को इंक्वायरी रिपोर्ट दी है. अब आप मुझे ये बताइए सर, एक सब सीधा सा क्वेश्चन है. इन अ कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर, if the authorities are of the view that the bid which has been the H1 bid is not sufficient, whether they can't cancel the proceedings. Unless it is below the upset rule. They can't. मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, तो 1 रुपया ऊपर बढ़ा दीजिए. 1 रुपया नहीं बढ़ा, इसमें उनका ये कहना भी नहीं कि हमें. अरे मैं आपसे उतना ही पूछा कि whether they can't. They have the authorities, They have the authority. but subjected to the provisions in the rules. Yes. And Rule 9 says, my lord, you will cancel definitely, Mhm. but if it's below the upset. Right, sir. So, my lord, when I am above the upset price, and there is no question to that, and Mhm. it doesn't say that you are below the upset price. Mhm. It says that some inquiry report has come, there is no compliance of this provision. Mhm. So what I am praying, my lord, that let them tell this honorable court that what is that inquiry report which goes against the agencies who have conducted the tender, my lord, my respectful submission, the order should be speaking in nature. जो ये ऑर्डर करते हैं एमडी है, कोई नीचे का कोई ऑफिसर तो नहीं है. The MD has applied his mind, depending on a report, and had there been a situation that there was no report in favor of the authorities conducting the tender, तो मैं ये आर्ग्यू करने की स्थिति में नहीं रहूँ, और मैं करता भी नहीं. But I find 2 reports, my lord, which goes in my favor. One of it, my lord, is a 3-member committee report. So therefore, on that footing, my lord, I came before this honorable court, before your सर इसका ये पूरा रूल कहाँ है सर? ये तो आपने मुझे रूल लाइन नहीं चाहिए, मुझे पूरा रूल चाहिए. नहीं दिया ना सर. Very good. तो आज ही दे देना ना, लंच अपना शाम 4:30 तक. रूल है, इट मस्ट बी इन द बुक्स. नहीं, मैं प्रिंट आउट. पूरा प्रिंट आउट लेके आता हूँ.
4:30 तक दे दीजिएगा ना, मुझे बस वो एक दो चीजें देखनी है बस, और कुछ नहीं। हाँ, अभी अभी मैं रूल देखने के बाद ही डिसाइड करूंगा कि वेदर मुझे इस बात के लिए क्षमा कर दीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Item number 149. Dr. Anwar Srivastava. First lady issues title to beauty. That's the extension of time. एक्सटेंशन ऑफ टाइम का है। (8181/2023). None for the petition. POD has been received from the Court of First Additional Session Judge Scheduled. Date POD dated 16/2/2024. Seeking the extension of time to conclude the trial. It appears that coordinate bench of this court by order dated 10th of July 2023 had directed the trial court to conclude the trial within a period of 6 months from today. In the POD, it is mentioned that 13 witnesses are yet to be examined. The Supreme Court, in the case of High Court Bar Association Allahabad versus so and so, decided on so and so, has held as under. उसका प्रिंट आउट मुझे दे दीजिएगा. Therefore, instead of fixing any further period, trial court is directed to expedite the hearing, and the superintendent of police schedule is directed to ensure the execution of summons, bailable warrants, warrants without any further delay. If the concerning police station fails to execute the summons, bailable warrants, warrants issued against the witnesses, then it shall be the personal duty of the superintendent of police schedule to submit his explanation before the trial court. The trial court is directed to inform this court in case if the personal explanation with regard to non-service of summons, bailable warrants, or warrants is not submitted by the superintendent of police schedule. With the aforesaid observation, the petition is final. The POD is finally disposed of. Let a copy of this order be also sent to SP schedule for necessary information and compliance. (150). Shri Arpit Agarwal. जी मैडम. 151. Shri Sankalp Kochar. पासों वाला आप लोग का धंधा नहीं बंद होगा. आप लोग का धंधा कभी नहीं बंद होगा पासों वाला. ऐसा भी इस रोस्टर में लीस्ट प्रिफर्ड केसेस लगते हैं, है ना. तो जो केसेस की आप लोगों को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है तो पक्षकारों से लेते क्यों? प्लीज आर्ग्यू द मैटर सर. आई विल नॉट एडजेंट दिस. आप लोग का हमेशा ही पास. नो सर, सॉरी. एक बार, दो बार, तीन बार समझ में आता है. एवरी टाइम इट इज बीइंग डन. जी. So the offense is under sections? The offense is under section 420, may have the FIR. 420, 120B. You are Harvansh Singh. This is on behalf of Harvansh, Manik Chaurasia,
राजेंद्र नाथ पटेरिया, रघुराज सिंह, रश्मि झावर, मुदित शर्मा, Lakshmi Pateria, Rishi Pateria. Right, sir. 8 people. What are the allegations? Malad, may kindly have Malad page 23. Mm-hmm. I'm reading Malad the fourth line from bottom. Mm-hmm. This says ऋषि श्रीमती लक्ष्मी और तारा पटेरिया व उनके पुत्र ऋषि पटेरिया ने कथित लोगों के साथ षड्यंत्र कर छल कपट व बेईमानी पूर्वक प्रार्थी को भूमि को अपनी भूमि ना होना जानते हुए भी अपनी भूमि बताकर 28,14,240 रुपए में विक्रय करना दर्शाकर फर्जी विक्रय पत्र पंजीबद्ध कराकर लाभ लेने व प्रार्थी को नाजायज हानि पहुंचाने तथा प्रार्थी द्वारा अपना कब्जा न छोड़ने पर जान से मारने की धमकी देने कार्रवाई है। दिस सेज मतलब निवेदन है कि ऋषिराम गंगेले निवासी ढाडरी तहसील व जिला छतरपुर में ग्राम भगवता तहसील व जिला छतरपुर में भूमि खसरा नंबर इतना में से अपना रकबा 2.023 हेक्टेयर में से आदि भूमि सतीश पटेरिया राजेंद्र नाथ पटेरिया निवासी छतरपुर को तथा शेष आदि भूमि राम परियार टिकरिया वगैरह के नाम विक्रय पत्र 1/12/1994 में संलग्न नक्शे में दर्शाए गए चौहद्दी में 30 फुट चौड़े रास्ते से दक्षिण जिला दिशा में लगी हुई पूर्व से पश्चिम 840 फुट एवं उत्तर से दक्षिण 265 फुट रेखांकित कर भूमि पर विक्रय कर मालिकाना हक व कब्जा दे दिया था। तदुपरांत राजेंद्र नाथ पटेरिया ने उक्त अपने हिस्से की संपूर्ण भूमि रकबा 0.505 प्रार्थी की बहन रजनी रश्मि नीतू प्रीति पटेरिया को विक्रय पत्र दिनांक 28/5/1997 को विक्रय कर कब्जा व मालिकाना हक दे दिया था। क्रय दिनांक से प्रार्थी व प्रार्थी की बहनों का भूमि पर कब्जा व मालिकाना हक है। विक्रय पत्र के आधार पर उप भूमि का नामांतरण भी हम लोगों के नाम हो चुका है। यह कि प्रार्थी में सरहदी काश्तकार मानिक चौरसिया अजीत राजेंद्र नाथ पटेरिया ने प्रार्थी व प्रार्थी की बहनों की अंश भूमि जो 30 फुट चौड़ी रास्ते से दक्षिण दिशा में लगी है और नैतिक रूप से नक्शे में तरमीम करवाकर हम लोग को नाजायज हानि पहुंचाई थी। तब प्रार्थी की बहन डॉक्टर रश्मि पटेरिया की आपत्ति पर न्यायालय तहसीलदार छतरपुर के प्रकरण क्रमांक इतना की जांच के दौरान नरेंद्र कुमार पटेरिया ने मानिक चौरसिया अजीत जैन राजेंद्र नाथ पटेरिया के पक्ष में तरमीम संबंधी प्रपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए थे, जिससे स्पष्ट है कि तरमीम शुदा भूमि के अंतर्गत नरेंद्र कुमार पटेरिया की कोई भूमि नहीं है तथा उक्त प्रकरण में आदेश 18/11/11 में तरमीम निरस्त की जाकर नक्शे में विलोपित की जा चुकी है, जिससे स्पष्ट हो चुका है कि 30 फुट चौड़े रास्ते के दक्षिण में लगी भूमि प्रार्थी सतीश पटेरिया बहन रजना रश्मि नीतू प्रीति पटेरिया की है। मानिक चौरसिया अजीत जैन राजेंद्र नाथ पटेरिया के भाई नरेंद्र कुमार पटेरिया की कतई नहीं है। यह कि प्रार्थी ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ग्वालियर से बाकायदा अपनी व अपनी बहनों की भूमि से प्रबंधक अनुभागीय अधिकारी विलोपित कर विक्रय की स्वीकृति प्राप्त करी। तदुपरांत प्रार्थी ने अपनी बहन को भूमि सहित अस्थायी से स्थायी बाउंड्री वॉल बनवाई और तब 30 फुट चौड़े रास्ते से दक्षिण में लगी अपनी भूमि पर बाउंड्री का काम करा रहा था। तब हरवंश सिंह मानिकलाल चौरसिया राजेंद्र पटेरिया ने आकर जबरन काम for the case diary or issue notice. Now the investigation is not. डायरी आ गई है? ओके जी जी बताएं। चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, राइट जी। Well, I was not in the middle of the paragraph, I'm sorry, page 24. तदुपरांत प्रार्थी ने अपनी बहनों को भूमि सहित अस्थायी से स्थायी बाउंड्री वॉल बनाई और जब 30 फुट चौड़े रास्ते में दक्षिण में लगी भूमि पर बाउंड्री का काम करा रहा था, तब हरवंश सिंह मानिकलाल चौरसिया राजेंद्र पटेरिया ने आकर जबरन काम रुकवा दिया। हरवंश ने कहा कि ये 120 × 120 फुट जमीन जिस पर मेरे मटेरियल डला हुआ है उसे कृपाराम उर्फ दादू भटेरिया के साथ मिलकर स्वर्गीय अजीत जैन की पत्नी से खरीदी है। तब मैंने वो मेरी पिताजी ने कहा कि रजिस्ट्री दिखाओ और इशू नोटिस टू द रिस्पोंडेंट। अभी डायरी वापस कर दीजिए। Three D.K. Tripathi, M.S. Sunanda Kathar. Lords, we have filed an application for seeking recall of the order dated 4/9/2023. My lords, our right of filing reply has been enclosed, so kindly praying for time to file the reply. And for respondent number 4. तो पूरा तो हम नहीं आपको रिकॉल करेंगे, देयर इज आल्सो अ स्टे
To the extent of giving you an opportunity to file reply, वो हम रिकॉल कर सकते हैं वहाँ पर। छोटा सा मेरा निवेदन है, अलॉट में अप्रिशिएट। छोटा सा निवेदन मतलब विड्रॉ कर रहे हो? इससे छोटा निवेदन जो इनके रिप्लाई की डिटेल कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इनसे पता नहीं, ये तो याद। कोर्ट वाज आस्क्ड मालूम टू शो द प्रोविजन under which they have given tender for flower garland to a particular agency because for creating monopoly at Chitrakoot. Tripathi ji, sir, she is asking for time to file reply. और इन लोगों के जवाब की आवश्यकता नहीं है, तो सबसे पहले इनको डिलीट कर दीजिए सर। देन वी विल कंसीडर कि क्या इफेक्ट है, और अगर पार्टी बना के रखना है तो जवाब लेने में क्या हर्ज है? उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सर इसके बाद भी कई बार अपीयर होते रहे, एंड तो लास्ट अपॉर्चुनिटी दे देते हैं। एक डेट दे दें, अगर उस पे नहीं करते देन आई हैव नहीं, आप जवाब कब फाइल करोगे ये बताओ मेरे को। छुट्टी है 3 वीक्स नहीं सर, मैं फ्राइडे लगा रहा हूँ अप्रैल की 5 अप्रैल को, तो उससे क्या होगा कि आपको ये 3 दिन मिल जाएंगे, होली का पूरा हफ्ता मिल जाएगा, फिर अप्रैल के पूरा वीक मिल जाएगा। जी जी। 4556/2023 श्री D.K. त्रिपाठी, काउंसिल फॉर पिटिशनर, श्रीमती स्वाति असीम जॉर्ज, काउंसिल फॉर द स्टेट, Shri so and so for respondent number 4, na? So both Kathal for respondent number 4. By order dated 4/9/2023, the right of the respondent number 4 to file return was closed, as nobody had entered appearance in spite of service of notice. It is submitted by counsel for respondent number 4 that a last opportunity may be granted to the to file return, and it was assured that in case if the return is not filed on or before 4th of April 2024, then the right of the respondent number 4 to file its return may be closed. Consider the submissions made by counsel for the respondent number 4. This court, by order dated 4/9/2023, had closed the right of the respondent number 4 to file return because nobody had entered, because the respondent number 4 and 5 were treated as deemed served. Since a last opportunity has been sought by the respondent number 4 to file the return, and in order to resolve the controversy for once and all, this court is of considered opinion that order dated 4/9/2023 so far as relates to closing the right of the respondent number 4 to file return is hereby recalled. Last opportunity is granted to the respondent number 4 to file its return. It is made, the return shall be positively filed on or before 4th of April 2024. It is made clear that in case if return is not filed on by 4th of April 2024, then the liberty granted to the petitioner shall automatically stand recalled, and order dated 4/9/2023 shall automatically stand revived. List on 5th of April 2024. With the aforesaid observation, IA number 17260/23 is hereby allowed. पाँच तारीख को है सर। I'm making request Malot Malot with liberty to Malot challenge the Malot. Some order has been passed by the trial court by rejecting my application 197. और assailing that order Malot. पहले बताते आधा ऑर्डर डिक्टेट कर दिया हमने कहा सुबह से आपने कुछ बताया नहीं, दैट मींस यू मस्ट बी इनवाइटिंग ऑर्डर। थोड़ी समय लेट हो गया तो मैंने कहा इस केस में मैंने आज आना है, इसलिए सर उसको
So you want to withdraw that with liberty to assail the order passed by the magistrate on the question of sanction ना. वो तो हम वैसे हम तो कल ही डिसाइड कर रहे थे. उस लेवल पे अच्छा चलो ठीक है. अच्छा ठीक है इट इज सबमिट. Letter from- अरे चलो ठीक है कोई बात नहीं. श्री DK त्रिपाठी कल किस नंबर पे था? 94 पे था क्या? I had already started dictating. सर माफी चाहूंगा, सुबह बता देना तो. That was 6, my lord. Item number 6. 57360/2022. This application under section 482 of CRPC has been filed seeking the following relief. It is submitted by counsel for the applicants that applicants had filed an application under section 197 of CRPC before the magistrate, before the court below, which has been dismissed. Accordingly, it is prayed that the applicants may be permitted to withdraw this application with liberty to assail the order by which their objection with regard to sanction under section 197 of CRPC has been rejected. With the aforesaid liberty, the application is dismissed as withdrawn. Lord, I'm sorry to not inform. हमको जब सुबह नहीं मिला तो मैं समझ गया था कि that you want an order on merits. क्योंकि यही था कि अगर तो then during the lunch session I started dictating the order. ठीक है जो भी है जितना भी हो गया होगा. ठीक है वो 15-20 मिनट कुछ और काम हो जाता वो इसमें चला गया. Anyhow. Regular cases item number 28. Three Siddharth Dutt. Not sure I'm praying for one big time. For one big time. For what purposes, sir? Two 323-506 part 2. Sir. So this is a case which has started against the present petitioner by this gentleman, by and against whom the present petitioner recorded a first information report. Sir. Now he was, when all this was going on and proceedings of other things were also done, other criminal cases also got registered against him. He filed a complaint. And the complaint has been filed for offences under section 294-323, 506 part 2 of the IPC. Now this complaint is pending over there. And sir, which is that complaint, sir? So the documents whereof have not been supplied to us. Just a minute, sir. Sir, whether this cognizance has been taken or not? Cognizance has not been taken, but what? But then how can you? How come it's coming? They have a right to make an allegation against me. But at the same time, that allegation, to prove the allegation, it has to be borne out from the witnesses or the documents submitted with it. What is happening in this case is that in the name of getting the complaint registered, they are calling documents like the educational record of the children of the applicant are being called. Which is that order? So which is that order, sir? Sir, we applied over the, none of the documents have been supplied to us. Either lordship may we filed it over the application, nothing has been supplied to us. ये देखिए मैंने इसमें लिखा सर. I filed an application over there before the additional session judge also. उक्त आवेदन के अनुसार एक परिवाद मैजिस्ट्रेट के यहाँ पे लगा संज्ञान लिया जिसके पक्षकार प्रस्तावित आरोपी उक्त प्रकरण में संलग्न 10 सत्यप्रति उनके प्रतिलिपि
अनुभाग बुढ़ार में लगाई, जहां से 8 दिनांक तक उनके आवेदन का निराकरण नहीं किया गया। उक्त नकल आवेदन का निराकरण नहीं होने से परिवेदित होकर अधिवक्ता श्री कैफी द्वारा आवेदन पर प्रस्तुत किया गया है। सर अब नीचे भी हमने पॉइंट रेज किया। काइंडली कम डाउन टू ऑर्डर शीट डेटेड 18/10/22। उक्त प्रकरण में प्रस्तावित अभियोग अर्थात याचिकाकर्ता महेंद्र सिंह चौहान एवं परिवार की व्यक्तिगत जानकारी न्यायालय के माध्यम से मंगाई जा रही है। उपरोक्त प्रकरण संदर्भित नहीं है। Sir, you are aggrieved by the non-supply of certified copy of the orders. Aggrieved by the manner in which the complaint is being dealt with and documents which have no relevance are being called, like the school in which the children of the applicant are studying, how much fees they are depositing, the service record of the applicant is being called upon. Sir, where have you mentioned in the application? Kindly come down to ground number 1, Malus. Sir. Kindly come down to ground number, paragraph number 4. Has been filed and documents whereof which have no relevance are like the school record of the children of the petitioner, the service record of the petitioner. Sir. देखता हूँ सर इसको। इसके लिए आए, बाकी तो हमको, बाकी आप वहाँ कंप्लेंट रजिस्टर होगी, जब रजिस्टर होगी उसको पकड़ के लाए थे कि उसके खिलाफ एफआईआर हुई थी, उसके खिलाफ Oh, that I have read कि भाई वो आपने you had taken action against him and order of externment was also passed against him. तो उन्होंने हमारे खिलाफ में 300 तारीख थाने लाके उनको पिटाई हुई, तो उन्होंने 300 तारीख हमारे, अब उस कंप्लेंट तो कर नहीं रहे, कंप्लेंट में हमारे बच्चों का हमारा सर्विस रिकॉर्ड बुला के तंग कर रहे। और नीचे वहां से वो भी आदेश हुए पड़ा, तो नीचे वो आदेश भी किए पड़े हैं। Call for the record of the court below, list thereafter. देखे तो सही, क्योंकि अगर ये चीज आपकी सही है, 323/294 की कंप्लेंट है, he can summon the documents pertaining to the allegations. है ना, इसके बाद आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चलो वो रेलेवेंस देखते हैं। The magistrate is directed to send the record in a sealed cover and office is directed not to open the sealed cover and the record be placed before the court in a sealed cover only. हम ही देखेंगे सर बस उसको। Obviously, अभी देखेंगे। नहीं मतलब एटलीस्ट क्या है कि that because the suspect has no right to participate. हाँ, तो वो इसीलिए हम 203 हो। just for the satisfaction that whether the grounds which you have raised are really correct or not, or whether the proceedings are going on in a correct or wrong direction, तो मैंने रिकॉर्ड बुलाया है, and then we will proceed. 29(3) Samir said the Krishnapal Singh क्या है
6169/2015 done for the applicant. On 12/3/24, it was submitted by Shri Arvind Pathak that his name is not reflected in the cause list, therefore he could not be for the case. Today, the name of Shri Arvind Pathak is also reflected in the cause list still. None appears for the applicant. Under these circumstances, this court is of the considered opinion that the applicant must have lost his interest in prosecuting this application. It is accordingly dismissed for want of prosecution. The interim order dated 30/4/2015 is hereby vacated. Item number 30 with connected case. Shri Ghanshyam Sharma. And wait for Basavar. Sure. Your Lordship, on the challenge is an order passed by Your Lordship, the Labour Court, Your Lordship, which is at page number 10. Sir, who is for the respondent? DP गोलंदाज. चलिए अभी नहीं है, एक लास्ट अपॉर्चुनिटी देते हैं. 15356/2015 Shri Mohan Sasalkar, none for the respondent. By way of last indulgence, the case is adjourned. List on 1st of April 2024. It is made clear that if none appears for the respondent even on the next day, then this court shall proceed ex parte against him. 32. So grateful. Shri Mukesh Kumar Agarwal. Shri Pranay Chaube. Matter taken day after. क्यों सर? Senior हैं? This matter has to be finally argued. तो आज लगा क्यों है? आप बोले हम इसको एडमिट करके डाल देते हैं 20 साल के बाद के लिए. फिर everybody knows that once the matter is listed, then it has to be argued finally. तो मुझे क्या है सर, हम एडमिट कर लेते हैं इसको. And then it will come in its own turn. Then once it is listed, then everybody knows that it has to be argued finally, sir. बताइए सर क्या है? सीनियर दूसरी कोर्ट में बहस करेंगे. तो पासवर्ड कर लेते हैं ना. दूसरी कोर्ट में, कौन सी कोर्ट में व्यस्त है वैसे सर? हैं? सर? किनको आर्ग्यू किनको करना है? मिस्टर मुकेश कुमार अग्रवाल. अग्रवाल साहब किस कोर्ट में है सर, जरा बताएं ना प्लीज सर. हैं? नहीं पता है सर. पास हो चले इसको. ठीक है, पास हो. Interim relief granted on relocation shall continue till next date of listing. जी सर. 33. Shri Naveen Pandey. Shri H.K. Upadhyay. जी सर. Lordship, praying for a short time to address the matter. हाँ तो Maybe ठीक taken है. after. Lordship, maybe taken 2 मिनट बाद चालू कर दो, उसमें क्या है? Maybe taken after. Sir, we are not listing the cases just for the fun. The cases are being listed for arguments. This case is from NOC and No problem, sir. You accepted the brief. It is not a case that you have been engaged through legal aid. आपने NOC दी ना, ली ना. Lordship, it has to be addressed by my senior. Whosoever has to address it, it is none of my business. Once it is listed, you have accepted the brief, you have to argue the case. Lordship, after vacation. On 1st of April, No, sir, sorry. आपने वकालतनामा कब फाइल कर दिया था? 1/12/2023. 12/12/2023.
3 महीने में आप पढ़ाई नहीं कर पाए, वकालतनामा फाइल करने के लिए यू हैप्पीली एक्सेप्टेड द ब्रीफ। पता जी नोटिस तो है नहीं, एडमिट करके इसको लगा देते हैं, रेगुलर लिस्ट में जाएगा। 11,480/11,140/2000 है। केस इसलिए खारिज हुआ कि 2000 में इनको निकाला गया था, हाँ। ये 2005 में लेबर कोर्ट गए, आईडी एक्ट और दोनों एमपीआईआर एक्ट दोनों पे करने के बाद कोर्ट इस नतीजे पहुंची कि 5 साल का इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, क्यों 5 साल बाद आए, इस कारण से इनका केस खारिज हो गया। ये कैसे खारिज हो सकता है? लिमिटेशन है क्या? Whether any limitation is provided? उपाध्याय जी, whether any limitation is provided? उतना बता दीजिए हमको सर। इतना शॉर्ट पॉइंट। हाँ तो इतना से इतना सा तो पॉइंट है सर आपके हिसाब से, तो बता दीजिए ना सर। Rando heard on the question of admission, petition being arguable is admitted for final list for final hearing in its own turn. Sorry, sir. Sorry. Sorry, sir. If you are interested to argue just now, please avail that opportunity. If you are interested in adjournment, please allow this case to go out of the list of motion hearing cases. Your Lordship, I'll address. Yes, please. Your Lordship, I was employed. Which is that impugn order? Annexure? Annexure P1, Your Lordship. I was सर मुझे नौकरी पर रखा गया 10/8/1990 को on a temporary basis for 89 days. And it was extended and I worked till 30/4/2000. I was terminated by order dated 1/5/2000 without any opportunity of hearing. समझ गया, सेक्शन 25 पे जाओगे यार। Explanation क्या हमें वहां से निकाल दिया गया। And later we filed a case before the labor court. And it was rejected by order dated 7/9/2018, Your Lordship. Your Lordship, इसमें हमारा सिर्फ इसी ग्राउंड पे खारिज कर दिया गया कि 5 साल का जी डिले है इसमें। जी सर। और कोई एक्सप्लेनेशन वो क्यों गलत है सर? वो रीजन? Your Lordship, इसमें ना कंडोनेशन पे सुना गया था, हमें सिर्फ इस ग्राउंड पे ना तो हमारे ऊपर कोई इंक्वायरी हुई थी, ना तो हमें अपॉर्चुनिटी। सर प्लीज जितना पूछो उतना बताइए। आपको बिना किसी सूचना के, बिना किसी कारण से निकाल दिया गया 1 मई 2000 को, समझ लिया ना। अब आप चाहे उसमें कहें कि डी भी नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है कि दैट यू हैव फाइल्ड आफ्टर 5 years, इट इज बार्ड अंडर एमपीआईआर एक्ट एंड योर केस इज नॉट मेड आउट अंडर आईडी एक्ट। इस रीजंस को अब आप इतना सा बता दीजिए कि क्या गलत है और क्या सही है। जब ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट दो, पीछे मत देखो भैया, ये आपने स्टार्ट किया है कि बहस करना है। हाँ बताओ। सर नहीं पता है तो बढ़ जाने दीजिए। अब हम एडमिट कर रहे हैं, डोंट वेस्ट द टाइम। Heard on the question of admission, the petition being arguable is admitted for final hearing. List for final hearing in its own turn. श्री प्रदीप कुमार नवेरिया, श्री गोपी चौरसिया,
In this matter, I'm having a very limited time, Lords. That this matter, if could be accommodated tomorrow to off the list, Lords. I'm not in possession of the relevant judgments. Apologize for that, Lords, but due to some miscommunication, I'm not in. नवेरिया जी, आप लोगों से हमने एक निवेदन किया था, उसका कोई जवाब मुझे आज तक दिया नहीं गया। ये कॉज लिस्ट में अपने उन्हीं केसेस को दोहरा के आप लोगों को क्या मानसिक संतुष्टि मिलती है, नंबर 1। नंबर 2, जब यही केस दोहराए जाएंगे और अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, तो आपके अनडेटेड केसेस कब लगेंगे और कहाँ लगेंगे? जब वो 10 साल के बाद नंबर आता है, सर 10 साल तक तो लगता ही नहीं है हाई कोर्ट में केस, फिर आप लोग इस तरीके से टॉन्ट मारते हो। जब हम आपसे कहते हैं कि साहब अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालना है तो ये अननेसेसरी एडजमेंट्स बंद कीजिएगा, या तो आप लंबे लंबे एडजमेंट लीजिए ताकि जब अब ये आया है तो फिर अब पेंडेंसी के भीड़ में खो जाए ये भी, और या फिर इसको आर्ग्यू कर दीजिए। आप लोग जब यही केसेस को बार बार लिस्ट कराएंगे, आपके अनडेटेड केसेस कैसे बाहर आएंगे? वैकेंसी जब नहीं आप दोगे तो कैसे लगेंगे? और या फिर हमने कहा था कोई इससे और कोई बेटर सॉल्यूशन हो तो बता दीजिए, आज तक किसी ने नहीं बताया। हम क्या करें सर? फिर आप लोग टॉन्ट क्यों मारते हो कि सर वो केसेस लगते नहीं हैं? जब आपकी परेशानी के सॉल्यूशन के लिए हमने एक रास्ता निकाला विच वर्कड वेरी इफेक्टिवली एट ग्वालियर, आप लोग सुनने को तैयार नहीं है। क्या करें हम, बताइए? मेरा तो सीधा सा कहना है, या तो आप 8 हफ्ते का एडजमेंट ले लीजिए या फिर आर्ग्यू कर दीजिए, चॉइस इज योर्स। इससे अलावा कोई तीसरा काम नहीं करूंगा। यही केसेस होंगे तो कल अगर ये वैकेंसी आज होती है तो कल एक अनडेटेड केस लगेगा इसकी जगह, और वो आप ही के केसेस हैं जिनके बारे में आप लोगों को परेशानियां हो रही हैं। हमें क्या है, हमें तो जो केसेस लगेंगे डिसाइड करने हैं, चाहे पुराने लगें चाहे नए। तो आप ही लोगों की तकलीफ को ही तो हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं और आप लोग सपोर्ट कर नहीं रहे हो। जब नहीं कर रहे हो तो फिर टॉन्ट मारना बंद कर दो। टॉन्ट भी सबसे बढ़ के मारेंगे, और आपके टॉन्ट से हमें तकलीफ नहीं है, तकलीफ उस पक्षकार से है जो बेचारा इंतजार में बैठा है कि मेरे मुकदमा पेश हुआ है, उसकी सुनवाई हो। आप टॉन्ट मारे ना मारे, वो इट इज अ मैटर बिटवीन यू एंड अस। उस आदमी का क्या सर जिसके केसेस नहीं लग पा रहे? आप टॉन्ट मारेंगे, हम आपसे लॉ लेंगे, हो गया, काम खत्म हो गया, कोई इश्यू नहीं है। इट इज एन इंटरनल अफेयर्स। तो 8 हफ्ते ले लो ना, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। At the request of counsel for petitioner, list after 8 weeks without any liberty to mention. श्री अहदुल्ला उस्मानी, श्री सुमित रघुवंशी, जी सर। Petition has been filed, been agreed by the impunged order and HFC 5. Matter may kindly see to be filed. The whole case revolves around the central provinces and Parar Mandir Act 1939. My lord will find on change number 14 and HFP 2. One person after a period of night जिसका संचालन व गठन प्रख्यात वकील, पूर्व विधायक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार द्वारा किया गया है। मौजा कूड़ा मैली, तहसील नारायणगंज, विद्या मंदिर योजना दी गई थी, उसकी आय से विद्या सर। जी सर। what had happened, sir, this respondent number 7 Vidya Kumari and respondent number 8 Arun Yadav have come with a plea that as the aims of the Vidya Mandir has been closed and the purpose for which the owner of the property Jagirdar Vyavhar, State Raghuveer Singh Sinha of Jabalpur has given or donated the property for charitable purposes. The
same should be returned to the donor, when in fact nothing finds place in this act by which the properties are being governed, sir. 1939 का जो एक्ट है उसमें कहीं नहीं है कि वापस कर दिया जाए। और जो ये रिस्पोंडेंट नंबर, मुझे बस वही बताइए सर, वो प्रोविजन कौन सा है जिसके ऊपर आप रिलाई कर रहे हो? उन्होंने रिस्पोंडेंट नंबर 7 ने आवेदन लगाया कि हम मुख्तारनामा आम है आरपी भार्गव ट्रस्ट के, जिनका ये इम्पोर्ट ऑर्डर देता हूँ सर, पेज नंबर। अरे कोई भी, आप दोनों में से कोई भी वो दिखाइए ना कि अगर वो सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार विद्या मंदिर एक्ट के हिसाब से अगर योजना 16 में देखें annexure, this is established पेज नंबर 16 रनिंग पेज, उसमें सेक्शन 9 है, डिसएस्टेब्लिशमेंट ऑफ विद्या मंदिर। The state government may disestablish a Vidya Mandir, and on such disestablishment, the property and fund belonging to such Vidya Mandir shall be disposed of in such manner as may be prescribed. लेकिन डोनर वापस ले सकता है। डोनर की तरफ से कोई मुख्तार आम नाम लेके इतने साल बाद आ जाए कि हमें हक है प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए, क्योंकि हम उनके ट्रस्टीज के मुख्तार आम है, that is illegal, sir, at that threshold. And this is the sole ground, and the learned additional assistant commissioner strongly passed the order and accept P5. Their application may kindly be seen by Lord, sir, how they have put before the SDO. Page number 21. आवेदन पत्र वास्ते विद्या मंदिर अधिनियम में के पालन में भूमि स्वामी के पक्ष में भूमि का नाम दर्ज करने हेतु। तो वो तो ठीक है, जो जिसने भी ये डिफेंस लिया था कि जब ये विद्या मंदिर बंद हो जाएगा तो वो डोनर के पास वापस चले जाएगी। कहीं सर है? कहीं नहीं है ऐसा। ये कहाँ पे? ये कहीं नहीं है, एक आवेदन में प्ली ले लिया गया। जैन साहब, ये पेज नंबर 21 पे एप्लीकेशन है। The provision has been just read over. ये पढ़ देता हूँ। Under that provision, एप्लीकेशन पढ़ देता हूँ। on this मुझे प्रोविजन देखने दीजिए। establishment of the Vidya Mandir, जी, the property shall revert back. कहाँ है सर? What happened? The Vidya Mandir were constituted. सर रिवर्जन ऑफ लैंड का प्रोविजन पहले बताओ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। The first that provision of section 9, the state government may establish a Vidya Mandir, and on such the property and the fund belonging to the Vidya Mandir shall be disposed of in the manner as provided and may prescribed. बताइए सर। What happened? The सर society were constituted. But I don't know, sir. मुझे just tell me the provision which requires that after the disestablishment of the Vidya Mandir, the land will automatically go back to the original. बस उतना बता दीजिए सर। I have filed the society was constituted. In that society, the donor and the state government were the parties, and I have filed that memorandum of association of the that society. That is annexure. Annexure R72 at page. Yes, sir. That the clause 11. The entire immovable property shall be restored to the donor on or their heir, successors, or legal representative in the case of dissolution of the society on failure of the Vidya Mandir for which the society was given, for which the property was given. कहाँ से पढ़ रहे हैं सर?
that is memorandum of association, that is R72. R72, that page 28. Of 28. 28. जी. That is 21. That is for registration and the property of the Sabiti. हाँ पे. Internal page is 8. ये अच्छा इधर पे. जी. Okay, the entire involved property shall be restored to the donors or their heirs on the failure of the Vidya Mandir for which the property was given. और ये विद्या मंदिर स्टार्ट कैसे होगा सर? That is from by Act 1938. Which annexure? Act was Annexure? Annexure is P2. इसमें कहाँ है सर रिवर्जन का? It is stated that should be as per the As such, in such manner as may be prescribed. Prescribed means prescribed under the Act. Where is that? Between the society was constituted on. Sir, once the property has been donated or gifted, Yes. and the gift has also been accepted, how there can be an automatic reversion in absence of the statutory provision? Section 128 provides that. Section 128 of 126 of transfer property and provides. आज दिखाइए. A gift can be a conditional gift also. But this honorable court. Just सर अपन धीरे धीरे चलते हैं, बहुत जल्दी नहीं है. A recent decision relating to Vidya Mandir itself. In that case, the Section 126, madam. When a gift may be suspended or revoked, the donor and the donee may agree that on the happening of any specified event, which does not depend on the will of the donor, a gift shall be suspended or revoked. But a gift which the parties agree shall be revoked only or on part, and at the mere will of the donor is void. So अब आप आ जाइए सर, आप अपना इस पे दिखा दीजिए हमको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में whether the state government was a party. Yes, madam. ये आपका पर्सनल मेमोरेंडम ऑफ अफेयर. The donors were the trust. Sir, President was. Sir, let us not forget the provisions of the Act, which says that you have to gift the property, donate the property. Right? Donation in favor of, gift in favor of whom? On favor of the Vidya Mandir school. To the managing committee of any Vidya Mandir established or deemed to be established under this Act. Right? Memorandum of association says the aims and object of the association that is to establish and maintain the Vidya Mandir in the village of the central province and Gujarat. Who are the office bearers? The office bearers is the president is president, vice president. And the donor is also a member of that association. जी. Yes. This clause 7 relates to membership. The life member who donates a sum of rupees 1,000 or more in cash or less than 5,000
ये कौन सी सोसाइटी थी सर जिसने ये विद्या मंदिर को लैंड गिफ्ट की थी? Private persons, we were the donors. Sir, you are governed by the Act. Yes. Now, Section 9 says gifts of land by cooperative society. This the state government made instances shall be disposed of in such manner as may be prescribed. Okay. No rules have been prescribed. So, by virtue of that act, the societies were constituted, and the term of the society provides for the on lapse of the scheme or closure of the bank or closure of the school, they shall revert back. See. So, by virtue of that, the society, the scheme lapsed, and that land reverted back to the donor. That's me. And who was the donor in the present case? Yes, madam. I sort of the Raghuveer Singh, who was the owner, who donated the property. From where it would be clear, sir? From where it can be gathered? Rajendra Singh, son of Sir, please show from the documents, sir. At page 20 of that memorandum of association. Uh-huh. For Jabalpur Circle, Bihar Rajendra Singh was a donor and member of association. एक मिनट कहाँ से पता चलेगा for जबलपुर ये क्या है सर? That the same ये memorandum. तो members हैं. Members who donated the property because for the Jabalpur. कैसे पता चलेगा कि donate किया है इन्होंने? But I filed the document that he was owner of that suit land. Where is the document to show that he had donated the property to the? I filed the document that he was the owner. That annexure P1 may kindly see, annexure R1, R71. The property were initially parcel number 435, 436, and 437. Subsequently, they were renumbered in the year renumbered in the year 1964. That might not be find in the second document. That is renumbering. एक सेकंड सर आपकी जस्ट अ मिनट सर ये किस जमीन का झगड़ा है? In the present cluster numbers are 507 and 655. 507 and 655. Okay. ये किस पेज नंबर है? 507. 507 ये किस पेज पे है सर? In the impugned order. अरे आप खसरा में बताओ ना. That initial it were 435, 436 and 437 oblique 1. 435, 436. That were in the name of Bihar Raghuveer Singh. 435, 436, 437. ये रीनंबरिंग का रीनंबरिंग बाद में लगा हुआ है, 2 बार रीनंबरिंग हुई है. फिर उसके बाद रीनंबरिंग में 1964, 65 में मानव में फाइंड सेकंड पेज that रीनंबरिंग पर्चा. that was renumbered. annexure पेज नंबर बताइए सर. पेज नंबर पेज उसमें 6 लिखा हुआ है ऊपर. इसमें थर्ड कॉलम में सब पुराना नंबर तो बताओ. 435, 436, 437 कहाँ है? सेकंड कॉलम में बीच में आ रहा है. अरे बिल्कुल बीच में नहीं, पहला कॉलम है पुराना. थर्ड कॉलम है. हाँ वो बताइए. 436, 435, 436, 437 and 438. They were renumbered as 392. 436, 438, 435, 436, 437 ये. They were renumbered as 392. फिर क्या हुआ? Then again it were renumbered in 1988-89.
392 my lord will find in तो 398 क्या हो गया? 50507 पेज नंबर next page last but one column Savik number 392 है राम 392 उसके बाद में कुछ और हाफ वगैरह कुछ लिखा है वो 507 हो गया तो पेज नंबर क्या है सर पहले वो तो बताइए। पेज नंबर 23 लिखा हुआ है ऊपर आपकी पिटीशन पेज नहीं चला सॉरी फॉर दैट 392 आप कहाँ पे देख रहे हो सर? लास्ट but one column राइट लास्ट बट वन कॉलम 3 कहाँ मुझे आप इसमें मार्क कर दीजिए। पेंसिल से कर दीजिए। थ्री 92 का टुकड़ा जी ये 655 हो गया। ये 655 हो गया और एक 507 हो गया 507 वाला मार्क कहाँ किया आप? दो अलग अलग पेज पे दोनों अच्छा दोनों मार्क कर दिए ठीक है सर। they are the disputed lands which were the original owner was donor was original owner and what is they have challenged the order of the commissioner and in that the applicant was the Radhakrishna Mandir but unfortunately Radhakrishna Mandir not has been included in their petition. There's one Kothari and respondent number 7 is Kothari and number 8 is Arun Yadav. जी उस्मानी जी Relying upon the decision of this honorable court also by देखो भाई जी बताइए। आज की वो उसके पर्पस सॉल्व नहीं हो रहे उसके लिए द एक्ट इटसेल्फ इज देयर सर। हाँ बताइए। नंबर 15 में सेक्शन 5 में काइंडली से पेज नंबर 15 हमारे पिटीशन का जो एक्ट है 1939 का प्रोविजन फॉर इनकम्पिटेंस और डिफॉल्ट ऑफ कमिटी इफ इन द ओपिनियन पहली चीज तो डिफॉल्ट कुछ नहीं सब चल रहा है कमेटी है वो ऑर्गेनाइज करते हैं स्कूल चला रहा है और जो लैंड है उससे पैसा अर्न करके स्कूल में लगा
लगा रहे हैं. If in the opinion of the state government, the managing committee of any Vidya Mandir is incompetent to perform its duty or has failed to perform that satisfactorily, it may remove the members elected and co-opted under clauses E and 1 of subsection 1 of section 3, and order that a fresh election and co-option shall be take place within such time as may be prescribed in such order. Subclause 2. Until members are elected or co-opted in accordance with any rule made under subsection 1, the members referred to in clauses A, B, C, and D of subsection 1 of section 4 shall exercise all the powers and perform all the duties of the committee. 5A. The power to take over the management of land. If the state government is of an opinion that any land gifted to the managing committee of Vidya Mandir should, for the purpose of efficient cultivation, be managed by it and not by the managing committee, it may, by an order in writing, exclude the managing committee from the control of the land for a period to be specified in the order and take over its management. Where the subclause 2, sir, where the state government takes over the management of the land under section 1, it shall pay to the managing committee the net income from the land to be calculated in such manner as may be prescribed. Therefore, the whole everything is given in this act, sir. सर ये विद्या मंदिर बंद क्यों हुआ? नहीं चालू है सर, आगे भी चालू है. That may be examined. ये एक्ट खत्म हो गया कि नहीं हो गया? एक्ट अभी भी है कि खत्म हो गया? एक्ट अभी भी है? एक्ट है कि खत्म हो गया? All the societies have been there is no from this act everything is to be governed by the state government. Central जो है. आप कौन है पहले ये बताओ? हम वो उस कमेटी के मेंबर्स हैं. कौन सी कमेटी के मेंबर है? कहाँ लिखा है सर? registered हुई है ये. President of Vidya Mandir Samiti. They have played a fraud. President of Vidya Mandir Samiti. They got registered a society, and that is of year 2000. And the society is on page number 13 may kindly be seen, sir. Has been renewed later on. तिलगांव विद्या मंदिर समिति. आपको ये सोसाइटी बनती है 5/2/2000 को, और ये कब से काम कर रही है सर? और ये स्कूल कब से चल रहा विद्या मंदिर? चल रहा 54-55 उस समय कौन सी सोसाइटी थी? उस समय भी विद्या मंदिर स्कूल की. फिर ये नई सोसाइटी क्यों बनी? इसमें तो 5/2/2000 का बता रहा है सर. हाँ, तो क्यों बनाई गई सर? But in the government's instructed side has been mentioned that from 1954-55 it has been run. कौन रन कर रहा है? ये सोसाइटी रन कर रही थी. यही वाली सोसाइटी? अनरजिस्टर्ड सोसाइटी. MOU वगैरह क्यों बने हुए हैं उनके साथ? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये सब कैसे बने हुए हैं? और आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ सर? उनका कॉन्स्टिट्यूशन और इसमें जो ग्राउंड लिया वो तो नहीं मिला सर, लेकिन जो ग्राउंड आप तो पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिफाई कीजिए सर. तो एनेक्चर P2 से आए हम तो ऑपरेशन में सर, और गवर्नमेंट्स में है कि द कमेटी P2 से आ गए. तो ये प्रेजेंट डॉक्यूमेंट इज ऑफ एनेक्चर P1 सर. आप तो पहले अपने सारे एप्लीकेशंस लेके आइए सर, कि जिससे आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है. 1145/2020 Shri Usmani Press for India is granted 3 weeks time to file the documents on the basis of which the Tilgaon Vidya Mandir Samiti Tilgaon got registered on 5/2/2000. Well assistant. अच्छा सर, ये पिटीशन किसने फाइल की है? ये प्रेसिडेंट को कौन होता है सर? विद्या मंदिर समिति. यस, प्रेसिडेंट का क्या स्टेटस है, क्या इंटरेस्ट है? Whether he has filed on behalf of society or he has filed in his personal capacity? It is on behalf of society. Why the society has not filed this petition? That all. Then how this petition is maintainable, sir?
That I will also see, sir. नहीं, पहले अभी आप इतना तो आर्ग्यू कर ही जाओ. Capacity of president, sir. How it is maintainable in the capacity of president if the petition has not been filed by the society? It should be through president. Then It should be. it is not maintainable, sir. I will make necessary amendment. Why should I allow that amendment, sir? Humble submission, sir. By substituting the petitioner? My humble submission, sir. क्या आपकी कमेटी का, आपकी सोसाइटी का रेजोल्यूशन कहाँ है, सर, टू फाइल द रिट पिटीशन? ये पेज नंबर 27 पे देखे सर, बैठक की गई थी. क्या? बैठक दिनांक 11/2/2019 की. इन्होंने अध्यक्ष और सचिव को अधिकृत किया जाता है कि जाकर नकल वगैरह प्राप्त करने का ये सब चल रहा था इनका. They have resolved to obtain the documents. President and secretary were authorized. Just a minute. और इस प्रकरण में कार्रवाई की जावे ताकि समिति कोई. जी सर, पिटीशन फाइल करने के लिए कहाँ है सर? इसमें लिखा है इस प्रकार के कराई जावे समिति कोई भी पत्र आज इतना ये सर जिला शिक्षा अधिकारी तहसील नारायणगंज को जावे और इस प्रकार के कार्रवाई की जावे. कहाँ है सर? रिट पिटीशन फाइल करने का रेजोल्यूशन कहाँ है? कार्रवाई डॉक्यूमेंट निकालेंगे करेंगे ऐसा है. हाँ बस उतना ही है. इसमें आया कि यह पढ़ देता हूँ. समिति तिलगांव बशार एक्ट स्थापित है. संस्था से ही राज्य ग्राम कोड़ामैली में नारायणगंज जिला मंडला कचरा भूमि है जो शिक्षा के प्रचार प्रसार राजेंद्र प्रसाद जो सिन्हा द्वारा शाला दी गई है. संस्था द्वारा वर्ष दिनांक तक एक प्राथमिक सहायक विद्या मंदिर निरंतर संचालन किया जा रहा. अभी भी संचालन है सर उसका. तिलगांव का उपरोक्त भूमि पर दिनांक तक संपूर्ण भाग पर जन चर्चाओं के माध्यम से ये उपरोक्त खतरों की जमीन श्री राधा कृष्ण धर्मास प्राइवेट रजनीश भार्गव पिता आरपी भार्गव का नाम अंकित हो गया है. पुष्टि के लिए अध्यक्ष सचिव को अधिकृत किया जाना है कि जाकर फॉर्म डी की नकल जारी प्राप्त करें. जो बात बता रही है वह सत्य है या जानकारी सत्य पाई जाती है. श्रीमान जिलाध्यक्ष जिला मंडला निवास जिला शिक्षा अधिकारी तहसीलदार नारायणगंज को जावे और लिखित रूप में दी जावे. इस पर प्रकरण निराकृत हेतु जांच कराई जावे. जो समिति द्वारा इस आशय का कोई भी पत्र आज पर्याप्त प्राप्त नहीं हुआ है. यह कार्रवाई चोरी कैसे संभव हो गई, वास्तव में इतना. उन्होंने कोई कार्रवाई हमारे बैंक में कोई पिटीशन फाइल करने का कहाँ है? नहीं पूछे मत सर. दूसरा किसका नाम चढ़ गया सर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पे? इसमें नाम चढ़ गया ये श्री राधा कृष्ण धर्मास. उसको रेस्पोंडेंट क्यों नहीं बनाया? पिता उसको रेस्पोंडेंट क्यों नहीं बनाया? ये विनय कोठारी सन ऑफ लेट. ये कौन है? ये श्री राधा कृष्ण धर्म मुख्तारे आम ऑफ ट्रस्टी आरपी भार्गव और राधा कृष्ण धर्मास प्राइवेट ट्रस्ट बिजनेस. उस्मानी साहब, हमको तो शायद आपको नहीं समझाना पड़ेगा कि ये तरीके नहीं है किसी को पार्टी बनाने के. अब आप अपनी ही बात को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो लाइव टेलीकास्ट के ऊपर जस्टिफाई कीजिए कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट के अगेंस्ट के फेवर में ऑर्डर है और आपने उसको पार्टी नहीं बनाया, उसके ऑफिस बेरर्स को पार्टी बना लिया, तो उसकी क्या वैल्यू है सर? ना तो आपकी पिटीशन ढंग की पिटीशनर का डिस्क्रिप्शन सही है, ना आपके रिस्पोंडेंट्स का पिटीशनर का डिस्क्रिप्शन सही है. वो तो बाद में देखते हैं. मे बी सर, नॉट पब्लिक इशू, इट इज अ पर्सनल इशू as it is apparent from the details of the petitioner. Petitioner has filed this petition in his personal capacity.
How he can file a petition in his personal capacity? by the Vidya Mandir Samiti. Then, where is the resolution thereby authorizing him to file the writ petition on behalf of the society or Vidya Mandir? Nothing. Merely to obtain the documents regarding. Yes. एक भी पार्टी प्रॉपर नहीं है इसमें. I will make good the shortcomings of the report, sir. नहीं, हम तो अमेंडमेंट तो नहीं करने देंगे सर. आप पार्टी चेंज कर रहे हैं, सारी पार्टीज चेंज कर रहे हो. विद्या मंदिर का कोई रेजोल्यूशन नहीं है. आप बिना रेजोल्यूशन के आप अमेंडमेंट कैसे कर दोगे? और आज अगर आप रेजोल्यूशन लाओगे तो बैक डेट से अमेंडमेंट को हम कैसे अलाउ कर देंगे? There must be some resolution. मस्ट छोड़ दीजिए सर. ये तो अगर आप कहें सर ये तो रजिस्टर मेरे पास पड़े ही है, मैं तो बना लूंगा. उस्मानी साहब आप अच्छा कोविड में तो अच्छा मतलब आपका क्या कहना, फुर्सत में बैठे थे तो इसलिए खुराफात चल रही थी. हाँ, अब मंडला कहाँ के हैं ये? मतलब ड्राफ्ट किसने की? ड्राफ्ट किसने की सर? कोविड में तो आदमी और फुर्सत में था. मंदिर विद्या मंदिर की तरफ से कोई रिजोल्यूशन है नहीं. हमने अगर आपको परमिट भी किया कॉस्ट टाइटल ठीक करने के लिए, तो हाउ कैन आई परमिट द मंदिर Vidya Mandir to file a petition in the year 2020? I will seek instruction on instruction seek करना. documents which were there in their record. There must be. सर देखिए सर, अगर आप कहें कि सर ये तो रजिस्टर है मेरे हाथ में, मैं कभी भी कुछ भी बना लूंगा तो बात अलग है. Maintaining the register. अरे छोड़िए सर, कॉस्ट टाइटल तो आपकी ड्राफ्टिंग है, रेस्पोंडेंस ब्रीफ आपकी ड्राफ्टिंग है. अगर आप मात्र कॉस्ट टाइटल जो देख लेते हैं एमपी ऑर्डर का, उसी को देख के बना देते तो देन यू वुड हैव इम्प्लीटेड द करेक्ट पार्टी. आपने वहां पर भी गड़बड़ी की. पिटिशनर का डिस्क्रिप्शन भी गलत है, रेजोल्यूशन है नहीं. मैं पिटिशन को कैसे 1 मिनट के लिए भी सर्वाइव करने दूं? I may be given time to make. नो सर, सॉरी, उसका रीजन है ना. जब रेजोल्यूशन ही नहीं तो मैं उसको बैक डेट से पिटिशन को Sought for those resolutions, sir. They are maintaining the record. I'm not interested in that, sir. They are maintaining the record and looking after the welfare. 114 no sir, 11455/2020. This petition has been filed by Suresh Kumar Singarore, son of Ajab Singarore, by claiming himself to be the president of Vidya Mandir Samiti Tilgaon against the various authorities of the state the government as well as Vinay Kothari, son of late Ramesh Chandra Kothari, and Arun Yadav, son of Paramanand Yadav. It is submitted by a counsel for petitioner that the present petition has been filed on behalf of Vidya Mandir Samiti, but the description of the petition clearly indicates that it is not on behalf of Vidya Mandir Samiti, but it has been filed by Suresh Kumar Singarore in his personal capacity by claiming himself to be the president of Vidya Mandir Samiti. Petition filed by the petitioner in his name cannot be treated as a petition on behalf of Vidya Mandir Samiti. Furthermore, this description is not a mere typographical error. This description of the petitioner is not a mere typographical error. The petitioner has also filed a copy of the resolution passed by the Vidya Mandir Samiti Tilgaon, which had authorized the petitioner to collect information with regard to the fact as to whether property has been registered in the name of Shri Radhakrishna Dharmarth Private Trust or not. There is no resolution by the Vidya Mandir Samiti
Belgaum to file a petition challenging the order passed by the revenue authorities by which the name of Sri Radhakrishna Dharmarth Private Trust was recorded in the revenue records. By this petition, the petitioner has also challenged the order dated 13/11/2018 passed by Additional Commissioner Jabalpur Division, Jabalpur, in appeal number 1773/appeal/17-18, which was passed in the appeal filed by Sri Radhakrishna Dharmarth Private Trust. However, for the reasons best known to the petitioner, Sri Radhakrishna Dharmarth Private Trust has not been included as a party. Thus, it is clear that not only the petition has been filed by the petitioner unauthorizedly without any authorization by the Samiti, but even it has been filed against, it has not been filed against the private trust whose name has been recorded in the revenue record. Considering the totality, the aforesaid lapses in the petition, this court is of considered opinion that the petition in its present form is not maintainable. It is accordingly dismissed. Yes, I may be granted liberty to file a fresh petition. अब मैं तो आपको बार बार पूछ रहा था, आप तो हमेशा अमेंडमेंट पे जा रहे थे, अब मैं क्या करूं? इसलिए भी मैंने मेंटेनेबिलिटी पे निपटाया है सर इसको. I have not uttered a single word on the merits. Deliberately I did it. क्योंकि जब सर मैंने मेंटेनेबिलिटी के ऊपर किया है बस. और आप तो सोसाइटी की तरफ से लिबर्टी में कैसे मांग सकते हो सर? यू हैव बीन ऑथराइज्ड बाय मिस्टर सिंगरौर and not by the society. Whatever wrong has been committed or whatever it is, sir. Rectified, sir. If the person who is competent to file the petition asks for liberty, I can give it. But you have not been authorized by the. Proper name. But you have not been authorized by the society. Yes, sir. Where is your wakalatnama? Something wrong has been committed that can be. I don't know, sir. I don't know. इसलिए मैंने उसको deliberately maintainability पे लाके छोड़ दिया. Sir, once the society is not before me, how can you make a request on its behalf? सीधी सी बात बताइए सर. एक अननोन एजेंसी के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं. For the interest of the. Whatever the interest of the society may be, where that interest had gone when the petition was being drafted. At least you must be knowing that the respondent should have been made properly. आपने तो respondent तक को गायब कर दिया. Where the interest had gone at that time. It is not for us to ensure the interest of the parties. It is for you to ensure the interest of the parties that they are properly represented. हम आपकी गलतियों को पार्टी के इंटरेस्ट के लिए कुछ नहीं करेंगे सर. और वो पार्टी जो है ही नहीं समारे हमारे सामने. सर वकालतनामा से ही आप, जैसे हमें रोस्टर से अथॉरिटी मिलती है वैसे आपको वकालतनामा से अथॉरिटी मिलती है to represent the others. When you are not holding the wakalatnama on behalf of the Samiti, then how can you make a request on behalf of the Samiti, sir? Please clarify. Then, फिर भी मैंने इंटरेस्ट के लिए उसे मेंटेनेबल पे छोड़ दिया है कि भाई it is not maintainable in its present form. I will make it. मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है. उसके बाद भी हमें ताना मारा जाएगा तो फिर then I will react. Then I am bound to react, sir. चलो. Item number 36, Sri Manish Kolia, Sri Jitendra Tiwari. This petition reply has not been filed by respondent number 5, which is the contesting party. क्या petition क्या है सर? I'm a Gram Panchayat and being empowered under section 77A of Gram Panchayat Act, we have imposed tax on property tax on. Then for the respondent number 5, Shri Kholia, Sri Zubin for the respondent number 1, 2 and 3, none for respondent number 4 and 5.
5. Even the respondents number 4 and 5 have not filed their return. Accordingly, by way of last indulgence, the case is adjourned. List in the third week of April 2024. It is made clear that if none appears for the respondent number 4 and 5, or if they don't file the return, then even then the matter shall be heard finally. 37. Sri Brahmendra Prasad Pathak. Reply of the respondent number 1 is awaited. क्या है क्या सर ये? Pertains to not providing the benefit of Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana to the Gram Panchayat Block. The respondent number 2 to 5 have 2 to 6 have filed their reply block, and the Honorable Court has directed to the respondent number 1 to file his reply on. Who is for number 1, sir? Union of India. सर आप किसके लिए हैं? Respondent number 5, sir. My lord. 15234/2020. None for the respondent number 1. Those served. A coordinate bench of this court by order dated 25/2/2021 had directed the respondent number 1 to file its return. The return has not been filed by the respondent number 1 so far. Accordingly, by way of last indulgence, the case is adjourned. List in the third week of April 2024. It is made clear that if return is not filed by respondent number 1, this court, even then this court shall hear the matter finally. Obligement. 38. Sri Ajay Kumar Vedic. Sri Sanjeev Kumar Mishra. Change of answer sheet. क्या बेसिस है सर आपका ये क्लेम करने के लिए? मतलब इन्होंने हमको क्लास 12 में सब्जेक्ट फिजिक्स की, फिजिक्स से सब्जेक्ट की आपने कहा आपकी आंसर शीट चेंज कर दी गई है। जी जी। आपका ये बेसिस क्या है सर ये क्लेम करने के लिए? इनेक्जर P3 मैडम, पेज नंबर 13, इनेक्जर P3 पेज नंबर 13, जिसमें इनका जहाँ रोल नंबर लिखा हुआ है, इसको पहले लिखा था 2, फिर काट के बनाए हैं 5। जी मैडम, इसी से हमारे कम मार्क आए थे। फिर इन्होंने बाद में चेंज भी कर दिया। जब ये केस फाइल हुआ नोटिस गई तो इन्होंने अपने रिप्लाई में एडमिट भी किया है 6 नंबर, 12 नंबर 6। क्या जवाब? That the respondent board immediately after receiving the aforesaid complaint cognizance of the complainant even before the petitioner approached with her grievance before this honorable court, and thereafter the respondent board initiated inquiry in furtherance of the grievances raised by the petitioner in her complaint during the. So you are reading which paragraph? Para number 6 है मैडम इनकी reply। जी। Inquiry the respondent, the answering respondent after reconsidering the correctness of the answer sheet had issued fresh mark sheet violated dated 2/1/2021 मैडम। उन्होंने स्वयं एडमिट कर लिया। During the preliminary, the answering respondent, after reconsidering the correctness of the answer sheets, had issued fresh mark sheet while letter dated to the aforementioned. इन्होंने एडमिट कहाँ किया है कि नंबर चेंज किए गए हैं? इन्होंने तो बाद में अंक सूची जारी कर दी है। जारी कर दी है? जी जी। तो अब कुछ बचा? नहीं माय लॉर्ड, बचा तो नहीं है, पर ये जो रिलीफ नंबर 4 है। अब जब नहीं बचा तो फिर नहीं बचा सर। कंपनसेशन का डिमांड इनके द्वारा। कंपनसेशन के लिए सिविल सूट फाइल कर दीजिए सर। ह्यूज कंपनसेशन मांगा है ना आपने। आपने कहा होता 1 रुपया तो हम अभी दिला देते, क्योंकि कंपनसेशन तो कंपनसेशन है। जो भी और आपने कहा ह्यूज कंपनसेशन, तो अब आपका कितना नुकसान हुआ वो फिर आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। 15276/2020 it is this petition under article 226 of Constitution of India has been in fact seeking the following relief.
It is submitted by counsel for petitioner that as per the return filed by the respondents, a new mark sheet has been issued. However, it is submitted that the relief clause number 74 is yet to be adjudicated. Heard the learned counsel for the parties. And as per relief clause number 7 bracket में 4, the petitioner has prayed for a direction to the respondents to pay huge compensation. The amount of compensation is to be adjudicated on the basis of various factors, and various factors which cannot be taken note of by this court while deciding petition under Article 226 of Constitution of India. Accordingly, with liberty to the petitioner that if so desires, then she can file a civil suit for recovery of compensation. Accordingly, the prayer for grant of compensation is denied with liberty to the petitioner that if so desires, she can file a suit for compensation. So far as the other reliefs are concerned, it is submitted that the petition has rendered infructuous. It is according with aforesaid observation, the petition is disposed of. $39. श्री अनूप कुमार सक्सेना, श्री भाविल पांडे. I'm praying for Passover. चलो ठीक है. हाँ पास हो 10-15 मिनट में आ जाएगा फिर से. Actually, he's asking on court number. अरे हम कुछ नहीं कह रहे ना. मैंने कहा 10-15. सक्सेना जी मेरी तरफ देख रहे थे. मैंने कहा 10-15 मिनट में आ जाएगा, मत परेशान हो. Because I will not be sitting after 4:30. Item number 40, the A.S. Hussain, the Krishna Jain. Item number 40, I have a request to make see the order dated 11th of March that was filed by the The collector was required to file an affidavit. The question was by filing an application for an extension of time will be considered this because on the 11th the order was passed, but thereafter on the 14th he is being transferred. The new incumbent is to take charge. So whether new incumbent has joined or not? Affidavit was shown yesterday. He's not joined. Both of them are to be transferred. He is to join as deputy director of NBD and a new person has to be brought in. This is let us providing this application for extension. कितना टाइम चाहिए? 2 weeks. 2 weeks, ठीक है सर. दे देते हैं. I-5423/2021. IA number 3901/2024 has been filed for extension of time to comply the order dated 11/3/24. It is submitted by counsel for petitioner that the collector Singrauli has been transferred, but his successor has not joined. Accordingly, it is prayed that 2 weeks time maybe further time of 2 weeks may be granted to comply the order dated 11/3/2024. Considering the submissions made by counsel for the respondents, IA number so and so is allowed. A further period of 2 weeks is granted to comply the order dated 11/3/2024. List on 8th of April 2024. चलो पासवर्ड स्टार्ट करो. Password cases item number 4, श्री अनिरुद्ध प्रसाद साहब. जी सर. इसके स्वामी हैं लेकिन हमको विदाउट अर्जन किए हुए नंबर 2 जो है इसको डंप कर दिया हुआ. कंटिन्यू आज तक स्वामी है. P1 पर 8 करोड़ मांगे आपने. इसका जो है वैल्यूएशन जमीन ज्यादा है जमीन ज्यादा होगी. मैं 8 करोड़ कैसे दिला दूं? ये तो अगर एक्विजिशन होना तो एक्विजिशन गाइडलाइन पेश किया. मेरे भाई तो क्या मैं एक्विजिशन ऑफिसर बन जाऊं?
आपसे इतना सा पूछा है कि अगर सिर्फ somebody if the government agency has encroached upon your land without acquiring, at the most we can direct by initiate the acquisition proceedings. इसमें यानी कि P3 हमने फाइल किया है, क्या आवेदन है मतलब कलेक्टर को क्या कि ये जो है हमारी एक्वायर किए हैं, विदाउट एक्वायर किए वो कर दिए हैं, डंप कर दिए हैं, इसका कंपनसेशन हमको दिलाया जाएगा। तो आपकी जमीन तो एक्वायर नहीं हुई ना? नहीं हुआ, उसमें क्या कर दिया इन्होंने? डंप कर दिया है, पूरा मिट्टी से फिलिंग कर दिया है। मिट्टी डाल दी है? जी किसने डाली सर? 100 नंबर 2। आप उनको कॉपी दे पाएंगे क्या आज? ये तो नोटिस जो है 4443/2024. It is the case of the petitioner that the respondent number 2. ये तो प्राइवेट पार्टी है ना? How the writ petition is maintainable? ये एक्वायर लैंड से How a writ petition is maintainable against a private agency or private party? वहाँ की लैंड एक्विजिशन एरिया के अंदर की यही काम कर रहे हैं वो लोग। ये इनका अरे प्राइवेट पार्टी के खिलाफ पिटीशन कैसे मेंटेनेबल है? ये कर रहे होंगे, मैंने कब मना किया है? इनके खिलाफ रिट पिटीशन कैसे मेंटेनेबल है, इतना बताओ। लैंड एक्वायर किया है उस गांव के। मेरे भाई, आप मेरे प्रश्न को उत्तर नहीं देंगे तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा नहीं। आई विल स्टार्ट डिक्टेटिंग द ऑर्डर। हाउ a writ petition against a private person is maintainable, sir? Triple 43/2024. This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following. If it is submitted by counsel for petitioner that the respondent number 2 has dumped the dust on the land belonging to the petitioner, and therefore the respondent number 2 may be directed to pay the compensation. Next, admittedly, respondent number 2 is a private party which is not amenable to writ jurisdiction. If the petitioner has any grievance against the respondent number 2, then he can file a civil suit for recovery of damages. With the force of liberty, the petition is dismissed as not maintainable. भाई साहब, लैंड एक्विजिशन डस्ट किसने डाली? प्राइवेट आदमी ने। इसलिए आप कह रहे हैं कि ये हमारी जमीन एक्वायर करे, यही कह रहे हो ना? टोटल एरिया एक्वायर कर लिया है, हमारे ही डंप में किया है। तो आपकी जमीन एक्वायर नहीं हुई और उसके ऊपर उन्होंने अपना डस्ट डाल दिया है, तो लैंड एक्विजिशन के तहत माननीय न्यायालय को ही अधिकार है, जनरल पॉलिसी में। माननीय अधिकार को क्या, माननीय न्यायालय को क्या अधिकार है? जो भी वहाँ एक्वायर से संबंधित डिस्प्यूटेड है माननीय। तो मुझे तो जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपने उसका जवाब अभी तक दिया नहीं है। प्लीज आपको मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, whether number 2 is a private party or not, whether you are agreed by the conduct of number private party or not. नहीं, काहे को पास ओवर कर दें सर? ये ऑलरेडी पास ओवर केस है। तो सुबह आप नहीं आए थे तो मैं क्या करूं? You are agreed by the conduct of a private party. How the private party is amenable to writ jurisdiction? इतना छोटा सा प्रश्न पूछा मैंने आपसे। भाई साहब, उन्होंने अपनी एक्वायर्ड जमीन से हट के एंक्रोच कर लिया आपकी जमीन के ऊपर, अपना पूरा कचरा डाल दिया उसके ऊपर। इसको आप चाहे हिंदी में बताएं, चाहे अंग्रेजी में बताएं, चाहे संस्कृत में बताएं, हम ये समझ चुके हैं, राइट? अब इनका आपकी जमीन के ऊपर एंक्रोचमेंट करने का कृत्य जो है वो आपको तकलीफ दे रहा है, जो कि इस पिटीशन का कॉज ऑफ एक्शन है। आपसे इतना पूछा है कि एक प्राइवेट पार्टी के द्वारा किए गए कृत्यों के खिलाफ ये याचिका 226 में कैसे पोषणीय है? लैंड एक्वायर से संबंधित मामला है। चलिए नेक्स्ट। Item number 6, the Ansuman Singh
Had to leave due to a personal The request of counsel for petitioner list after 8 weeks without any liberty to mention. Number 7, Sri Ankit Saxena. It's serious connected through video. And I'm sorry for not appearing in the first round, my lord. आप हो कहाँ ये बताओ पहले. मैं ऑफिस में हूँ सर. ऑफिस में. वो स्टेयर्स चढ़ने में. संस्कृत में कौन सा श्लोक लिखा है जरा हटके दिखाना जरा. धर्मो रक्षते रक्षते रक्षता. जी सर. my lord. आप टांग तोड़वा बैठे ऐसा पता चला है. Yes my lord. हैं? मल्टीपल लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया सर. लिगामेंट फ्रैक्चर. ऐसे काम क्यों करते हो? आई एम सॉरी my lord. सॉरी. आई एम सॉरी पर लेकिन वो चोटें लग जाती हैं. सर वो लॉयर्स का टूर्नामेंट चल रहा था उसमें गिर गया मैं. Anyhow, sir. सैटरडे सर. आप लोग हैं ह्यूमर को ह्यूमर की तरह लेते हो तो आप लोगों के साथ कर लेते हैं. जी सर. My lord, I directly came to my lord annexure P6 my lord to show that what is the case my lord. This is a public. Subject matter in brief पे आइए सर. my lord. The petitioner is principal. Principal क्या होता है सर? सर वो PAL होता है सर. और ये क्या लिखा है सर? I am sorry my lord. I will correct it my lord. PLE और शारदा. चलो कोई बात नहीं. Which is run by now Sarjan Shiksha Samiti. There is only one way to enter the school, which is small, which has been illegally encroached by private respondent 5 and 6 on daily basis. The private respondent creating nuisance by putting the due to which the students are daily facing problem and there is a possibility the petitioner has made complaint. आपने कौन-कौन सी कंप्लेंट्स की हैं सर? सर मैं P6 ऑनवर्ड्स में. P7 सर 2023 से 24 पे 3 रिप्रेजेंटेशन दी हैं कि बच्चे छोटे छोटे स्कूल में आते हैं, कांटों के झाड़ जानवर कर देते हैं, टेक एप्रोप्रिएट एक्शंस मतलब. और इनको ऑलरेडी इंक्रोचर डिक्लेयर कर दिया. एसडीओ इनके खिलाफ ऑलरेडी पास कर चुका है ऑर्डर. बट डिस्पाइट दैट. कौन सा ऑर्डर है सर? मतलब दैट इज मतलब P5 मतलब. वो बेसिकली दो मदर एंड सन है, तो बेटे ने लगाई थी कि हमें लीज दे दी जाए और दे दी जाए. वो डिसमिस हो गई है P5 के द्वारा. कि आप पेज 22 पे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आई ड्रॉ लॉर्डशिप अटेंशन मतलब. पेज 22 पे ऑब्जर्वेशन दी है एसडीओ ने कि भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा होने से मंशा रूप शासकीय योजना के लाभ के बहाने अपीलार्थी विवादित नोटिस करते हैं सर. वैसे आप जरा देख लीजिए पिटीशन का जो पिटीशनर का डिस्क्रिप्शन है प्रॉपर है क्या? सर वो नव सेक्रेटरी भी है और वो बेसिकली इंचार्ज प्रिंसिपल भी है, तो इसलिए मैंने टाइटल में उसको सेक्रेटरी बताया सोसाइटी को, और अंदर पैरा 5.2 में मैंने फिर डिस्क्रिप्शन दिया. सर मैं कर देता हूँ. पिटीशन किसके बिहाफ के ऊपर है? सर बेसिकली सोसाइटी रन करती है स्कूल, तो मैंने वो प्रिंसिपल ने पिटीशन फाइल की क्या? सर ऑथराइजेशन हमने मेंशन किया कि ही इज ऑथराइज्ड टू फाइल. सर हमने मेंशन किया ही हैज बीन ऑथराइज्ड टू फाइल द प्रेजेंट पिटीशन इन द पैरा 5. Whether the society has filed the writ petition? I'm not talking about the authorizations. नहीं सर, सोसाइटी बाय नेम ऑफ सोसाइटी, बाय इंडिविजुअल नेम, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन filed this petition, whether the society or the person in his personal capacity. क्योंकि रिप्रेजेंटेशन पर्सनल कैपेसिटी प्रचार मैं कर देता हूं. How is he agreed by that sir? सर स्कूल रन तो इंचार्ज प्रिंसिपल तो है ही सर. है सर. प्रिंसिपल ने रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी के नाम से नहीं, उन्होंने वो स्कूल के नाम से रिप्रेजेंटेशन. सक्सेना साहब आप जरा डिस्क्रिप्शन ढंग से तो पढ़िए. I will do the needful my lord. Can it be said to be a petition by the society? नहीं इंडिविजुअल कैपेसिटी में सर. है इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं I know my lord that it is not on behalf of society. I will, if my lord may permit, I will file a fresh. आप फ्रेश फाइल कर लो ना, ये प्रिंसिपल को भी ठीक ठाक कर लो. सर मैं फाइल फ्रेश की लिबर्टी लेता हूं. 6192/2024 श्री अंकित सक्सेना advocate through video conferencing Shri Zubin Prasad. It is submitted by counsel for petitioner that by mistake, instead of filing this petition on behalf of the society, this petition has been filed
by Shri Lakshmikant Pathak, who is the secretary of the society, and accordingly he seeks permission of this court to withdraw this petition with liberty to file a properly constituted writ petition on behalf of society. With the aforesaid liberty, the petition is dismissed as withdrawn. I am obliged, Malik. Item number 25, Sri Ghanshyam Pandey. This petition under section 482 is directed against the order passed by 4th ASJ District Rima, order dated on 29/4/2022. Mainly my revision petition dismissed to delay, my lord. Kindly come down page number 7 of para number 5. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा जिस पुस्तक आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण प्रस्तुत की गई है वह दिनांक 2/1/2017 को पारित किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता ने यह पुनरीक्षण ये दिनांक 16/3/2018 को प्रस्तुत की है। धारा 5 और सीमा अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किए जाने आवेदन पर पुनरीक्षणकर्ता विलंब का कारण यह उल्लेख किया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता को दांडिक प्रकरण की जानकारी नहीं हो पाई थी और न ही पुलिस द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को सूचना दी गई। दांडिक प्रकरण की जानकारी दिनांक 24/1/2018 को पुनरीक्षणकर्ता ने नकल का आवेदन पेश किया, जिसकी नकल दिनांक 16/3/2018 को प्राप्त हुई। तदुपरांत पुनरीक्षणकर्ता ने पुनरीक्षण प्रस्तुत की गई। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा धारा 5 पर सीमा अधिनियम के अधीन लिया गया आधार इसलिए मान्य किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि विचारण न्यायालय के अभिलेख से संलग्न फराजी पंचनामा 20/10/2016 के अनुसार पुलिस अधिकारी द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के निवास स्थान एवं संभावित स्थानों पर तलाश किया जाना दर्शित है। फरारी पंचनामे पर साक्षीगण के हस्ताक्षर हुए हैं। पुनरीक्षणकर्ता की तलाश नहीं होने पर पुलिस द्वारा पुनरीक्षणकर्ता की चल संपत्ति का विवरण भी सक्षम अधिकारी से प्राप्त किया। ऐसा दिनांक 10/11/2016 के पत्र से स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में पुनरीक्षणकर्ता का प्रकट किया जाना कि उसे दांडिक प्रकरण की जानकारी नहीं उचित प्रतीत नहीं होता। इसलिए पुनरीक्षणकर्ता द्वारा धारा 5 पर अधिनियम पे दस्तावेज संतोष नहीं होता। पुनरीक्षण सर आपका ओरिजिनल ऑर्डर क्या है जिसका पेश किया है? क्या है? डायरेक्टेड मी लिस्ट डॉक्यूमेंट टेकिंग ऑन रिकॉर्ड मैंने मैंने वो देख लिया। मैंने ऑर्डर बताओ ना क्या है। ये सर ये है 2/1/2017 का ऑर्डर। क्या ऑर्डर क्या है? आरक्षी केंद्र रामपुर कलचुरिया जिला रीवा के आरक्षक राजेश कुमार क्रमांक 336 द्वारा थाना के अपराध क्रमांक 245/16 धारा 3/4 दहेज अधिनियम के तहत यह अभियोग पत्र अभियुक्त अनूप मिश्रा की अनुपस्थिति में प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय पत्नी में दर्ज हो मुद्दे माल पंजी पेश नहीं राज्य द्वारा IDPO अभियुक्त अनुपस्थित। सर आप जाइए 70(2) में दरखास्त लगाइए, सरेंडर कीजिए, बेल लीजिए, आगे बढ़ जाइए। नहीं वो तो ठीक है, ये रिवीजन कैसे मेंटेनेबल है? इवन एंटीसिपेटरी बेल भी आपकी मेंटेनेबल नहीं होगी। अभी लेटेस्ट जजमेंट है। हाँ। जब आपके खिलाफ, आपको तो वारंट के खिलाफ आपकी ग्रीवेंस है ना। आप नहीं थे तो वारंट इश्यू हो गया, वारंट इश्यू हो गया, 70(2) में दरखास्त लगाई, हो गया। कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी सर? वो कह रहे हैं आप फरार हो। अब आप 70(2) में दरखास्त लगाएंगे, अपने आप बताएंगे कि सर ये प्रॉब्लम थी, हमें नहीं, आज मैं आ गया हूँ, मेरी जमानत ले लो, हो गया, कहानी खत्म। डबल 5622/2022 श्री घनश्याम पांडे श्री so and so. This petition under section 482 of CRPC has been filed against the order dated 29/4/2022 passed by 4th Additional Session Judge Riva in Criminal Division number 90/2022 arising out of order dated 2/1/2017 passed by JMFC Riva, by which warrant of arrest was issued against the applicant. It appears that the police filed a charge sheet for offence under section 3/4 of Dowry Prohibition Act. Since the applicant was absent, therefore warrant was issued. Of this court to withdraw this application with liberty to file an application to surrender and file an application under section 70(2) of CRPC before the
trial court. With the force or liberty, the application is dismissed as withdrawn. सेम डे का कर दीजिए, my lord, बूढ़ा आदमी है। हाँ तो कल दहेज तो हमने मांगा नहीं, दहेज का एलिगेशन लगा दिया, हमको शादी करने के लिए तैयार थे। बुढ़ापे में भी शादी करने को तैयार थे। ससुर के ऊपर एलिगेशन लगाया। अच्छा, ससुर के रूप में शादी करने। ससुर के ऊपर एलिगेशन लगाया, उन्होंने दहेज मांगा, पति को एक्सोनरेट कर दिया, मतलब चलो ठीक है। बूढ़ा आदमी, इसलिए निवेदन था सेम डे का कर देना। सरेंडर एंड फाइल एप्लीकेशन। सर अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद में कि सुपीरियर कोर्ट्स को ट्रायल कोर्ट्स को एक्सपीडाइट हियरिंग करने का कोई डायरेक्शन नहीं देना चाहिए। आप देखिएगा सर जरा उसको। और उससे पहले गोपाला कृष्णन वाले केस में भी ऐसा ही डायरेक्शन है। 150, the Arpit Agarwal. My lord, after filing of the petition, today what the development has taken place. But this petition was filed against the cancellation of an NOC. This is the condition precedent for grant of. So what subsequent event has taken? The exclusive license has been cancelled on account of the cancellation of an NOC. So I have to challenge that also. I'll file an amendment application. 7135/2024, Shri Sanjay Agarwal, Senior Advocate with Shri so and so. It is submitted that during the pendency of this writ petition, the explosive license has been cancelled. Therefore, he may be granted some time to file an application for amendment. Without time granted. Time granted as per list on 1st of April 2024. Item number 30 with connected case. Shri Ghanshyam Sharma, Shri Anand Singh. जी सर। इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स पेश किया था, डिस्कस हुआ, उन्होंने अपील पेश की। अपील इनके अलावा अपील में ये बोलते हैं कि 1/10 की एप्लीकेशन 6/17 की एप्लीकेशन पे दोनों पक्ष को सुनने के बाद लगता है कि एविडेंस नेसेसरी, दोनों पक्ष को सुनने के बाद आदेश पारित हुआ। उसके बाद फिर जो डिपेंडेंट एप्लीकेशन पेश करी 8/1 ने ऑब्जेक्शन लिया, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने अपडेट कोर्ट इस बात का रिमांड नहीं किया था आपको कि आप उसमें ऑर्डर अलग से दस्तावेज पेश करें। उस एप्लीकेशन को जो उन्होंने जो एप्लीकेशन पेश करी थी डिपेंडेंट, उस एप्लीकेशन को अलाउ कर लिया और उनके जो दस्तावेज थे तो उसको P6 है। पहले आप रिमांड ऑर्डर दिखाएं सर। ये पेज नंबर सर 32 पे देखेंगे सर। 32 पेज नंबर 32 पे पैरा 44 जो है इसका। Make sure. It's like E3 launch. E3. Relevant portion क्या है सर? पैरा 44 portion. सर ये तो लिमिटेड था कि वो जो उनकी लड़कियां हैं whether they are the necessary parties or not. इसमें फिर सर एक कनेक्टेड मामला है एमए सर, आपकी अपील उसमें तो सर एमए हमारे जुरिडिक्शन में नहीं है रोस्टर के हिसाब से। वो आपकी रिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट में होगा। है तो एमए ना, एमए है तो रिमांड ऑर्डर ही होगा ना।
But that MA is not within my jurisdiction. देखना जरा रोस्टर में क्या है क्या? मेरे ख्याल से नहीं है. नहीं, इसको तो हम अभी सुन सकते हैं एमपी को. तो अब आप ये बताइए कि लिमिटेड ग्राउंड के ऊपर वो अमेंडमेंट मतलब लगाने के लिए था कि वेदर दे आर नेसेसरी पार्टीज और नॉट. तो 8(1) के लिए आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फाइल करने के लिए तो लिबर्टी थी नहीं. नहीं है ना. Impugn order is the next year. This one is the operative part of the parliament. What the trial court has stated that these documents are necessary to decide the application under one day. What he is saying that trial appellate court was not remanded and not allowed the trial court to adduce any evidence or to take any documentary evidence. My submission is what the appellate trial court on remand has stated that these document is necessary for the adjudicating the application under 110. And this he has not controverted before this honorable court in the petition that these documents are not necessary for deciding the application under order. On this sole ground, the trial court has allowed them. And not even a single averment he has made that these documents are not necessary. कहाँ लिखा है सर? Last paragraph. प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज वाद के पक्षकार तथा इस प्रकरण में वाद संपत्ति से संबंधित है अथवा प्रकरण के न्याय सर क्या लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ. How these documents are necessary to find out as to whether the daughters are necessary party or not. वो लिखते हैं. अरे भाई साहब, मैं रिमांड कर देता हूँ इसको कि आपको पास है फ्रेश ऑर्डर 13400/2015. This petition under Article 227 of Constitution of India has been filed against the order dated 6/5/2015 passed by First Civil Judge Class 2 Dindori, District Dindori in civil suit number 10A/2014 by which the application filed by the respondent under Order 8 Rule 1 CPC has been allowed. It is submitted by counsel for the petitioner that the suit, आपका सूट खारिज हुआ था. सूट किसका था? The suit filed by the respondents was decreed by judgment and decree dated 28/4/2011 passed by Civil Judge Class 2 Dindori in civil suit number 21A/2010. The petitioners preferred an appeal which was registered as civil appeal number 27A/2011, which was allowed by order dated 6th of October 2012 passed by District Judge Dindori, and this matter was remanded back to verify as to whether the daughters of Ramdayal and Bhagwan Das were necessary party or not. And the trial court was directed to decide the application filed under Order 1 Rule 10 read with Section 6 of read with Order 6 Rule 17 CPC. And in case if they are found to be necessary party, then an opportunity of hearing of leading evidence will be granted to the concerned litigants. It appears that after the remand, the respondents filed an application under Order 8 Rule 1 CPC. By the impugn order, the said application has been allowed. It is submitted by counsel for the petitioner that after the matter was remanded back on a limited issue, the respondents cannot enlarge the scope by filing additional documents on record.
and the trial court was only required to verify as to whether the daughters of Ramdayal and so were necessary party or not, and only after coming to a conclusion whether they are only after coming to that conclusion, the trial court was required to proceed further as per the direction given by the appellate court. Per contra, the petition is vehemently opposed by the counsel for the respondents. It is submitted that the trial court has given a finding that the documents filed along with Order 8, Rule 1 CPC are necessary to adjudicate the application filed under Order 1, Rule 10, read with Order 6, Rule 17 CPC. And the documents which have been filed along with application under Order 8, Rule 1 CPC have nothing to do with the merits of the case. Consider the submissions made by the counsel for the parties. The trial court by the impugned order has held that the documents which have been filed by the petitioner are related to the parties, to the litigation as well as to the subject matter, and therefore they are necessary for the just decision of the case. No reasons has been assigned as to why they are necessary for the just decision of the case. No reason has been assigned as to why they are necessary to adjudicate as to whether the daughters of Ramdayal and so are necessary. Once the matter was remanded back on a limited issue, then the trial court is not expected to travel beyond the said issue. Since the reasons which have been assigned by the trial court indicates that that the application was allowed without any due application of mine, therefore the order dated 6/5/2015 passed by civil judge so and so is hereby set aside. The matter is remanded back to the trial court to decide the application filed under Order 8, Rule 1 CPC, strictly in accordance with the limited scope of remand order passed by the appellate court. With aforesaid observation, the petition is finally dismissed. MA का लिखा दीजिएगा, miscellaneous appeal number so and so as per the roster. This court has no jurisdiction to hear the miscellaneous appeals. Accordingly, the case is adjourned with a direction to the office to list before appropriate bench. सर अब मेरे पास jurisdiction ही नहीं ना, प्रॉब्लम ये है. Jurisdiction होता तो हम तो बढ़ाते नहीं, खुद ही सुन लेते सर. सर जल्दी करो यार. 32. Item number 32. Sri Mukesh Kumar Agarwal, Sri Pranay Chaube. The government of MP introduced. Sir, if it is likely to take time because I have to rise at 4:30 sharp. कल कर दीजिए सर, वो प्रेजेंस लगा के. It shall be taken up at 10:15 a.m. irrespective of the serial number at which it might be listed. And it is made clear that the case shall not be passed over on account of not. आज हुआ था पास हो. It was a very unfortunate part of that time. नहीं. Could not avail the opportunity to argue the matter. मैं क्या कह रहा हूँ, कल अगर आपका कहीं और क्लैश देखे, क्योंकि कल कहीं और न किया. मुकेश जी, आप लोगों की जो प्रैक्टिस है, आप लोग का केसेस कभी भी क्लैश हो सकते हैं. इसीलिए बोलना. नंबर 1. नंबर 2, यू आर द बेस्ट जज टू डिसाइड कि किस केस को आपको आर्ग्यू करना है. लुकिंग टू द नहीं, लुकिंग टू द स्टेक्स इन्वॉल्वड इन दैट केस, राइट. उसको नॉर्मल कल के लिए रखते हैं. चलो कल चले नॉर्मल. At the request of the Council for the Parties, list in the first week of April 2024. Okay, I have to rise at 4:30 sharp, sir. 39. So same question to you, sir. If it is likely to take time, sir, then I will not be in a position to hear. कल लगा दें टॉप पे 10:15 बजे, है ना? कल लगा दीजिए. It shall be taken up at 10:15 a.m. परसों कर दीजिए. It shall be taken up at the top of the at 10:15 a.m. irrespective of the serial number at which it might be listed in the cause list. सर किसी का इंटरिम ऑर्डर एक्सटेंड करना हो वो बता दें.
interim delay shall continue till next date of listing. सर किसी का interim order आज expire हो रहा हो, उसको extend करना हो तो please point out the case number. If anybody wants a fixed date, वो प्लीज इन्फॉर्म माई रीडर सर, वो आपको कागज दे देंगे, आप उनमें उनका नंबर लिख के, नंबर और डेट लिख के दे दीजिए, वो उस डेट के ऊपर हम फिक्स कर देंगे. अच्छा 42 में लिख दीजिएगा, द स्टेट काउंसिल प्रेस फॉर एंड इज ग्रांटेड 3 weeks टाइम टू फाइल रिटर्न लिस्ट आफ्टर 3 weeks. आप कागज पे लिख के दे दीजिए. जब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आई हैव टू राइज, तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी वेयर आई कांट सिट. Number 43 in which state have taken twice time to file the additional return. 23/8/2023. सर आज क्या, चूंकि इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं, नाउ द ऑफिसर्स मस्ट बी बिजी एंड दैट वर्क इज ऑफ अ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. आई कैन नॉट पनिश द स्टेट गवर्नमेंट कि आपने ऑफिसर्स को स्पेयर नहीं किया फॉर द फाइलिंग. ये थोड़ा सा यू हैव टू बियर विद द स्टेट ऑल्सो. 23/8 से मान लो टाइम. सर आपकी बात है, मैं आज अगर इसमें एक्सपर्ट, वो प्रॉब्लम है सर. नंबर 43 Shri Zubin Prasad, Shri Suman Mukherjee, counsel for petitioner, Shri Zubin Prasad, counsel for the state. Shri Prasad prays for and is granted last opportunity of 4 weeks to file additional reply. List immediately thereafter. Sir, please instruct your junior. My reader will provide the. अरे सर, the designated senior should not make such a request. सर छोटी छोटी चीजों पे जब जूनियर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है. एंड सेकेंडली सर, इट इज अगेंस्ट दी, है ना उसको. सर आई एम सॉरी दैट आई कांट सिट आफ्टर 4:30 सर.